हेलो वेलकम बैक टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. और हाँ, इट्स अ स्पेशल नाइट फॉर श्योर. चैंपियंस लीग नाइट्स आर ऑलवेज स्पेशल नाइट्स, ट्रस्ट मी नॉट. लेकिन सेमीफाइनल नाइट है यार. सेमीफाइनल, वो भी एक सेमीफाइनल जहां पर वी आर गोइंग टू वॉच मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी. दैट्स एग्जैक्टली लास्ट ईयर डेजा वू. लेकिन इज जस्ट नॉट दैट. एक, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी टीम नहीं है सेमीफाइनल में. डजंट फील गुड, but at the same time Champions League as a neutral to watch as well is something sensational. तो भाई सब लोग जो भी यहाँ पर आए, firstly thanks a lot for coming on. Yes, lineups are out, we are going to be discussing उसके बारे में. और हाँ, थोड़ा सा disclaimer भाई, मेरा क्रिकेट टीम, if some of you know, has lost yet again. तो भाई अभी फोकस शिफ्ट टू द फुटबॉल और न्यूट्रल वॉच अलॉन्ग भाई इज फन, बिकॉज वहां पर थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होकर आराम से हम बातें कर सकते हैं. सिंपल एज दैट. यस, लेकिन सबसे पहले सब लोग, कम ऑन, लेट्स हिट दैट लाइक बटन, सर्टेनली हेल्प्स. एंड यस, इट्स ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. वी आर एक्सपेक्टिंग अ पैनल टू जॉइन अस एज वेल. हमने डिस्कस करना है लाइन अप्स, टैक्टिक्स आज रात के, पोटेंशियली कल रात के भी. बट साथ साथ में डेफिनेटली हम वॉच अलोंग करेंगे. तो सब लोग जितना ज्यादा आप लाइक बटन दबाएंगे, एक बार दबाइए हर एक जन, दैट आई मीन. एंड इफ यू हिट ऑल्सो द कम्युनिटी पोस्ट, बाकी जनता को मालूम पड़ेगा हम भी लाइव है, हम भी बातें करते हैं फुटबॉल के, एंड अ लॉट मोर. एमशे इन द हाउस, नाइस टू सी यू. आरसीबी मास्टर क्लास, आई नो केएफसी, आपका मैसेज देखा मैंने. शंकर, हाय, क्या हाल है भाई? डेरेन, यस, जैसे डेरेन वापस से रिमाइंड कर रहे, लेट्स हिट दैट लाइक बटन ऑन द स्ट्रीम एज वेल एज द कम्युनिटी पोस्ट जो मैंने अभी अभी शेयर किया. तो इफ एवरीवन, आई मीन ईच एंड एवरीवन कैन लाइक द स्ट्रीम एज वेल एज लाइक द कम्युनिटी पोस्ट, इट विल बी ब्रिलियंट. लेकिन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, एंड शाउट आउट टू एवरीवन, यहाँ पर आएंगे, कमेंट्स पर भी आएंगे, एब्सोल्युटली वी आर गोइंग टू डू दैट. लेकिन दिस इज द लाइन ऑफ पीपल. सरप्राइजेस, नो सरप्राइजेस, पॉसिबली हाँ. मतलब अगेन यू वुड से दैट, क्योंकि काइल वॉकर इतना ज्यादा खेला नहीं है सीजन, स्पेशली द बिग मैचेस. मे बी यू वुड हैव एक्सपेक्टेड लपोर्ट, जो फिर भी थोड़े बहुत मैचेस खेला है, टू प्ले इन दैट बैक थ्री. लेकिन फॉर्मेशन लुक्स वेरी सिमिलर. रॉड्री, स्टोन्स इन फ्रंट ऑफ द थ्री, और ऑफ कोर्स सिल्वा, डिब्रोइना, गुंडोगन, ग्रिलिश डूइंग दैट इन बिहाइंड अर्लिंग हालैंड. टॉक अबाउट अर्लिंग हालैंड. ऑपोजिट में है बेंजेमा, मतलब ऑब्वियसली फ्लैंक्ड बाय विनीशियस और रोड्रिगो, जो होते आ रहा है एटलीस्ट द बर्नाब्यू इन द बिग मैचेस आजकल. मॉडरिच, क्रूज दोनों शुरू कर रहे, सो दे आर टेकिंग अ चांस. और मे बी नॉट, मॉडरिच 100% फिट है, देखना पड़ेगा यहाँ पे. लेकिन वैल्वर्डे ही इज द लेग्स इन मिडफील्ड, वी ऑल नो दैट. कामाविंगा समन जो मिडफील्ड में स्टेप इन कर सकता है, वहीं पर क्रूज माइट ड्रॉप इन एज एन ऑक्सिलरी लेफ्ट बैक, क्योंकि उनका पेस नहीं है, तो ही स्टे डीप एंड पास एट टाइम्स. लेकिन अगेन अलाबा, a left center back who can move leftish be if need be. So Rudiger coming in for Militao, who is suspended, and Carvajal, Courtois pick themselves. So people, what are we saying? Real Madrid fans, anyone? Man City fans in the house? क्या बोल रहे हो आप लोग? मतलब are we convinced with that lineup? हम बात करेंगे क्या होंगे बैटल्स बढ़ गए. अगेन बेंचेस, मतलब यहाँ पर आई डोंट थिंक हम बात भी कर सकते, बिकॉज फॉर मी प्रिटी श्योर with an Alvarez there, a Phil Foden there, a Riyad Mahrez there, Calvin Phillips, Laporte. By far, I think the Man City bench is stronger one. Although on paper, why I know Hazard है, लेकिन Hazard कर नहीं रहे. You all know that. Chouamani has not been in form. We all know that. लेकिन it will be interesting whether they'll use Chouamani, क्योंकि Modric may not be 100% fit. क्या बात है भाई सब लोग? क्या बात है? लाइक बटन नहीं दबाए सब लोग ने, क्या बात है भाई? Let's do a Madrid or a City, and that means by hitting more like buttons. Come on, let's hit a goal. Madrid and City always hit their goal. So tonight we are Madrid or City or just UCL semi-final fans. तो भाई UCL semi-final level का like button भी दबा दीजिए भाई. That is what we need. Yes, Lokendra, I know that. Parth, yes, as well. Yes, हाला Madrid बोल रहे हो. Okay, interesting. शंकर, हाय, कैसे हो भैया? ऑल गुड. दुख तो नहीं है? यस, दुख है, इसलिए कहीं ना कहीं इट इज अ गुड वे ऑफ फॉरगेटिंग द सैडनेस. इफ वी आर वाचिंग यूसीएल सेमीफाइनल्स, वो भी रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी, द वे दैट दीस टू क्लब्स हैव बीन डूइंग इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स, तो भाई आई थिंक इट्स एनीथिंग बेटर देन दैट हो नहीं सकता. भाई एक सेकंड, बारसा एस्पेनियोल आज है क्या? आई होप नॉट. आई थिंक परसों है ना? परसों है आई थिंक. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग चैट, लेकिन आई थिंक शायद परसों है. क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर दे वोंट कीप इट ऑन द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल नाइट. यार कम ऑन, दे गोना विन द लीग एंड not in that night, but anyway. अरे थैंक्स मैन डेरेन, थैंक्स अ लॉट भाई. शाउट आउट टू डेरेन, स्पेशल शाउट आउट टू डेरेन, NS Sports TV as well. भाई ऑलमाइटी गॉड इन द हाउस, एंड निपुन, हाउ आर यू? बाय द वे, पीपल who check out NS Sports TV as well.
Prabin in the house. Yes. Abhishek. I know Abhishek by laughing, but anyway, koi nahi. The Reds is in the house. Yes. Ruturaj. Yes, I know that. Sajan. Timo Warner. Yes, absolutely. Bhai, it is a UCL stream. Let's remind us that. Let me not remind me of my sadness. Shankar. Yes, I hear that. So Shreyas Bole, today I feel a citizen. Okay. In a sports TV is no neutral. He needs Man City to win. Seeing Madrid win the Champions League over and over again is boring. Okay, that's a viewpoint. Fair enough. Being a neutral, you can always have a very strong viewpoint on that. मैं भी agree करता हूँ. लेकिन वही है निपुण कहीं ना कहीं between the devil and deep blue sea. I know दोनों साइड खाई है. As a neutral, yes, I like to watch Champions League final. I love it. मैं react भी करूंगा. लेकिन साथ साथ में ये भी बोलूंगा that यहाँ पर Man City जिस पॉइंट पर चैंपियंस लीग जीत गई ना, I'm telling you, they are going to the next level as a club. But of course, Real Madrid have already been there and done that. अरे श्रेय in the house, क्या हाल है भाई? भाई श्रेय, again, आप welcome हो यार. Do let me know if you're free. Again, I wasn't sure if you'd be available today, but if you are available, definitely come on यार. No problem. Okay, no problem. I think Chirag will join midway. It seems his laptop is corrupted. No problem, Chirag. टेंशन नहीं लेने का. बट हाँ श्रेय, आप मुझे मैसेज कर सकते हो यार, अगर आप अवेलेबल हो तो ब्रिलियंट रहेगा टू सी यू फॉर अ फ्यू मिनट्स फॉर श्योर. Hello everyone. Yes, everyone, remind me of cricket. What's happening? Which you support, sir? I support football. I need a 4-all draw. Bring it on. 4-all draw. मैं ये prediction नहीं है for people who are thinking that मैं 4-all draw बोल रहा हूँ, prediction बोल रहा हूँ. But I want a 4-all draw is what I want. Anyway, prediction आएंगे भाई. Prediction आएंगे. We did do in the preview, but looking at the lineup, I will come to the prediction as always. Rivas, हर एक watch along में I do my predictions just when 5 to 10 minutes are left for the stream in terms of the pre-match. Madrid 3-1 बोल रहे पार्थ. आर्सेनल गेम में ही बोला था वॉकर स्टार्टिंग वाज गेम प्रैक्टिस फॉर टुडे कि पेप वाज वेटिंग फॉर टुडे. फेयर इनफ. आई नो यू डिड मेंशन इट पर्टिकुलरली टीमो ओनर. लेकिन अगेन हाँ, मार्टिनेली हैज बीन अ वेरी गुड प्लेयर, बट इज ही विनीशियस जूनियर? विनीशियस जूनियर नेक्स्ट लेवल है, वी ऑल नो दैट. बट अगेन फॉर पीपल जॉइनिंग लेट, अगेन डू नॉट फॉरगेट दैट लाइक बटन. कम ऑन. और सब लोग ये बोलिए विच इज द बैटल अपार्ट फ्रॉम विनीशियस जूनियर एंड वॉकर जो आप लोग को लगता है माइट बी द डिसीजन मेकर ऑफ दिस टाई. आपको क्या लग रहा है, मतलब आज के रात में व्हाट विल बी द डिसीजन मेकर आफ्टर विनीशियस जूनियर एंड वॉकर? दिस वर्सेस दिस आप बोलिए विच यू आर लुकिंग फॉर टू मोस्ट और विच यू फील कि सबसे ज्यादा महत्व रखेगा आज रात को. अगेन देयर माइट बी अ केस यू कैन से कि स्टोन्स और रॉड्री जो रखते हैं द डबल पिवट in that front of Walker, Diaz and Akanji might be against a Modric, Kroos and Valverde. वो हो सकता है. might be एक particularly De Bruyne को कैसे रोकेंगे, that passing range. maybe Alaba थोड़ा आगे आ सकते हैं और De Bruyne को basically रोक सकते हैं. that might be one of the things that they do because remember यहाँ पर Kroos drop off हो सकते हैं. तो that is another thing. but again काफी सारे battles we'll be looking forward to. Okay, fair enough. Ancelotti going for the kill. By Siddhant, I don't think it's about that. I don't think lineup से हम बता सकते हैं. It can be, it may not be as well. So देखिए, for me, see, if you play Rodrigo doesn't mean that you're going all attack. Rodrigo आपका सेंट्रल भी स्टे कर सकता है. Rodrigo आपका फोकस कर सकता है क्योंकि मैन सिटी बहुत ही सेंट्रल है. मतलब क्यों? क्योंकि दे आर प्लेइंग विद 3-2-4-1. तो आप देखो, अगर आप इफ आई शो द लाइनअप अगेन टैक्टिकली स्पीकिंग, सो यू हैव क्या बोलते हैं, डियास, रॉड्री, स्टोन्स, डिब्रोइना, गुंडोगन. आप उनका कोर ना बहुत स्ट्रांग है. डिब्रोइना, गुंडोगन, स्टोन्स, रॉड्री, डियास, 5 लोग उसमें. वहीं पर आप यहाँ भी बोल सकते हो सकता है 5 हो जाए अगर वो नैरो खेले मॉडरिच और वैल्वर्डे. लेकिन एक्चुअली मुझे मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका अगर आप कोर बोलो तो अलाबा, रूडिगर, मॉडरिच और बेंजेमा 4 ही लग रहे हैं मुझे. क्रूज मेरे ख्याल से लेफ्टिश रहेंगे मेरे ख्याल से. दैट इज व्हाट आई पर्सनली फील. और ही माइट जस्ट बी सिटिंग एट द बॉटम ऑफ दिस मिडफील्ड. वो भी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल. लेकिन हाँ, वो हो सकता है टू काइंड ऑफ काउंटर दैट मिडफील्ड ऑफ मैन सिटी. बट आई स्टिल फील गोइंग बाय द कमेंट, इट्स नॉट अबाउट गोइंग फॉर द किल. हाँ, डेफिनेटली काउंटर अटैक विल बी पार्ट ऑफ इट. इसके मतलब बावजूद कि रियल मैड्रिड घर पे है, आई वुड से दैट यू हैव Vinicius Junior, Rodrigo, Kamavinga. I think I can see flanks definitely attacking. But again, do not forget to hit that like button and stick around, people. Come on. 1-all or 2-all draw. Abhishek ke prediction aa gaya already. Yes. Let's get to 100 likes quickly, people. Let's get to 100 likes very quickly. 4-0 to City, 3-2 to Real Madrid win. In my opinion, work rate of, okay?
वर्क रेट ऑफ CIR क्या है? RCB फैंस, अरे भाई अनिकेत, कम ऑन ब्रो, कम ऑन, इट्स UCL। मेरे मुझे अच्छा बहाना मिल गया उसके बारे में बात नहीं करने का। Buddy, what's up, Ryan? All good, all good. This city is different, but Madrid is no different. By the way, people who are new to the channel, consider subscribing to the channel as well. Definitely helps. Or more importantly, hit that bell notification icon. Kumar Yashasvi, a City fan in the house. Yes, good to see you as always. Grealish and Bernardo work rate is really underrated this season. Yeah, absolutely. एक second दीजिए मुझे, क्या हुआ भाई? फतेह आ जाइए, वेट कर रहे हैं आप लोग का। आई थिंक चिराग ने तो बोल दिया कि भाई ही इज नॉट अवेलेबल एटलीस्ट अंटिल हाफ एन आवर, बट आई थिंक माइकल एंड फतेह विल बी जॉइनिंग इन सम टाइम। चलो कोई नहीं, लेट मी मैसेज फतेह क्विकली, लेट मी चेक वेयर इज ही। आ जाओ फतेह भाई, कहाँ हो? चलो, let me just I've just messaged him. Grealish and Bernardo work rate is really underrated this season. Well, Grealish, to be honest, हम जो लास्ट सीजन के एंड में, इस सीजन के शुरुआत में भी बोल रहे थे दैट बेसिकली इट्स अ फ्लॉप, ये 100 मिलियन। मुझे आज भी कमेंट आए थे 100 मिलियन बाबी डॉल और व्हाट नॉट आए थे, बट आई डिसएग्री। मैं सिटी फैन नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल से बोल रहा हूँ, और मैं एज अ ऑपोजिशन यू कैन से दैट आई वुड लाइक टू कंट्रोल, बट आई कैन नॉट। Grealish, you can argue that is as good as how he was in Aston Villa, if not better. क्योंकि काफी चीजें aspect he has learnt while being at City, and that is what I would say. और Pep को भी देना पड़ेगा credit, because Pep has continued with Grealish and continued with him. उसने faith रखा है, despite I know Foden बीच में injured थे, लेकिन Mahrez बहुत अच्छे form में। Mahrez can play on the left hand side भी, but he decided let's continue with Grealish, and that's how he went. Aryan, okay, Madrid fan in the house, nice to see। हम चेल्सी को भी क्या क्या कोई भी जीते पर रियल को हर, नॉट श्योर इफ आई अंडरस्टैंड सजत दैट कमेंट ब्रो, बट एनीवे केवलिया 4-0, वाओ। केवलिया आप रियल मैड्रिड फैन हो राइट? सिटी के रोकने कुछ नहीं, ओके। केडीबी को कंट्रोल कर दो बस भाई। आप देखो, केडीबी का पासिंग रेंज होता है लाइफ ऑफ फुटबॉल, आई अंडरस्टैंड व्हाट इज सेइंग, लेकिन अगेन मतलब आई थिंक रॉड्री हैज बीन अंडररेटेड यार। रॉड्री फ्रॉम मिडफील्ड कैन हिट शॉट्स एज वेल एज पास, प्लस अकांजी। बहुत सरप्राइज होंगे, मैं बोल रहा हूँ अकांजी। मेरे लिए अकांजी डेफिनेटली, मतलब डेफिनेटली मैं बोलता हूँ दैट जो चीज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सिटी ने कर दिया विद अकांजी। आई थिंक अकांजी वाज अ वेरी गुड प्लेयर इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। वो डॉटमंड से आ रहे थे, लेकिन जो नेक्स्ट लेवल में ले गए पेप ने। और रिमेंबर द मैच अगेंस्ट लाइप्जिग याद आता है, एक बॉल वापस आई थी, ढक से बॉल वापस दिया, सीधा पास हालैंड को। दैट इज अकांजी व्हाट ब्रिंग्स यू, बट अकांजी Aki will be missed because Akanji are left center back खेल रहे हैं compared to Nathan Aki जो generally खेलते हैं। तो that I agree, that कहीं ना कहीं can be a miss, and maybe that's why you're saying De Bruyne is the main guy. But again, Gundogan, मतलब I know वो sometimes he joins in the attack, वो हो जाता है 3-2 हो जाता है, लेकिन गुंडोगन भाई अपना शॉर्ट पासिंग रेंज जो उनका है बहुत अच्छा है, दैट इज अंडररेटेड एज वेल। बर्नार्डो सिल्वा अगेन समवन हु कैन ड्रॉप मिडफील्ड में, अगर आपका काइल वॉकर टेक्स द फ्लैंक, मे बी बर्नार्डो सिल्वा ड्रॉप्स इन मिडफील्ड, वो हो सकता है इट कैन बिकम अ 3-3-3-1। यस, पीपल डोंट बी सरप्राइज्ड इफ इट बिकम्स अ लिटिल बिट टू नैरो, क्योंकि रियल मैड्रिड विंग्स पर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सेंट्रली मैन सिटी आर स्ट्रॉन्गर, रिमेंबर दैट, एटलीस्ट ऑन पेपर। Tactically, Pep will outplay Carlo, but Madrid have players who can manage games single hand. Yeah, fair point. देखो, Madrid have more, you would say, experienced match winners in this particular stage of the season, right? And that's what we definitely, are looking forward to. Hopefully, as a neutral, have some fun with those comebacks that we see. But even otherwise, Arey, Michael in the house. Michael, what's up, bro? How are you? I'm good, bro. How are you doing? Great. Michael, always good to see you. People, again, I've linked Michael's channel. I've linked, I think, Chirag's channel, and I'll be linking Shrey's channel as well. By the way, right timing, Fateh is in the house as well. Fateh, welcome as well. So, firstly, Michael, what is your call? I did not get a chance to watch your preview shows, etc. Bro. As in, but what is your call? As in, again, looking in the lineups, looks like Ancelotti is not kind of going defensive. He's definitely going attacking. But that's how I think Madrid have played recently, haven't they? Yeah, I mean, there's no real surprises in the lineups. I think kind of both teams are expected to do what they do. The only surprise maybe would be maybe Chouameni instead of Cruz, or maybe. See, the problem is like Cruz is the six against Man City. I'm not too sure about it, to be honest, because they're just gonna get overloaded in the midfield. So Cruz is gonna have to do a big job on KDB, because basically he's gonna have to man mark him when they're out of possession. And can Cruz really do that role?
I don't think he has the legs to do anymore. We know he's got quality on the ball and he's excellent at that, but just off the ball, that's when we're a bit worried with Cruz. Look, do you just want me to discuss about the tie or just particularly in today? As in, first let's cover today, but as in the approach, I want to hear from you. Like, what do you think the approach will be from both the sides? Because remember, the second leg is at City compared to last season, right? Yeah, yeah, exactly. So I don't know what really Pep's gonna do. Not in the sense that he's gonna overthink it or anything, but we've seen him away at Bayern Munich, away at Arsenal, where he said, "All right, you guys have the ball." City only had like 35% ball possession, 40% ball possession in those games, and he said, "Okay, we have a striker who can hold up the ball and link up play." We didn't have that before. We actually had to keep possession and go all out attack because we had a false nine who couldn't hold the ball up against two strong center backs. They just gotta. They have a beast, and when you have a beast, Route One, Brexit style. That's what Pep is doing. He's evolving from paella football to Brexit football. Yeah. Fish and chips. It's like this is Pep nowadays, and in all honesty, when you go into this game, you expect, all right, Man City are in form. Nothing can stop them. They're scoring for fun. Defensively, they're good in transition. Kyle Walker versus Vini is going to be a great battle. But at the end of the day, this is Madrid. This is Champions League. They can look god awful, terrible, lackluster in the league where they don't really look up for it. But in the Champions League, when the bright lights hit the Santiago Bernabeu, it's a masterclass from all of these players. They just exude this sort of confidence and they just play to their ability. They don't really. It's not really that Madrid have any sort of tactics. It's just you guys do what you need to do, and Carlo is just there to assess what Man City are doing, and that's what I really appreciate with Real Madrid. So they can't just go gun ho. I think what Real Madrid really got to do in this game is just get as many times Benzema on the ball because he's going to go up against Ruben Diaz. I think that's what Pep is doing here. He's really just trying to focus on Benzema and just try and isolate him out of this game. We could deal with Vini, but it's just about Benzema because he's such a good striker. I'm really fascinated to see what happens. I think we're going to get goals in this game. I don't think this is going to... Tomorrow's game, that could be very tactical. Today, I think this is just pure footballing quality, and let's hope for a great game because the pressure's on Madrid to win. If they don't win this, I don't see them going to Etihad and winning because Man City haven't lost a European home game since 2019. Wow. Yeah. That's something, and that's probably not spoken about enough, I guess. But anyway, coming to Fateh, of course, an OG of Champions League, Fateh. भाई मतलब क्या लग रहा है? What do you think? As in again, tactically speaking, I think Michael explained it very well, but same time there is a point. Like I was saying something yesterday, Fateh. I don't know if you agree. See, when you're talking about two leg ties, then obviously, as in Real Madrid can be beaten for sure, despite it being UCL. And I know Man City are in the form of their life. And arguably on paper, you would say that maybe they are the favorites in terms of the form. But when you're talking about, like, if you go into the second leg and you know that it's a draw, like at that point, I think the second leg all of a sudden becomes a one off and all of a sudden Real Madrid becomes absolute favorites. I don't know if you agree with this comment, Fateh. I mean, I think the players are so well trained these days that does it even matter that you are away from home or at home? I Yeah, mean, very good point. and somebody like Real Madrid, I was reading the stats. This is their 32nd semi-final. In the Champions League, I think 10 semi-final in the last 12 years. yeah, so I mean, Cheat they know code. how to play this, so it doesn't matter what the second leg becomes. And I think also psychologically, the fact that they beat City last season, I think that's also going to play to I think Real's advantage. I mean, as much as we talk about City, they're running away with the EPL. They showed great mentality in beating Arsenal. They could be up for a treble, but I just. I want to write Real Madrid off, but you just can't. You just can't. I mean, everything seems to be falling for City, including whosoever they'll play in the final. But even then, you just can't sort of write Real Madrid off. And I think it doesn't matter where the second leg is. There are no away goals. And I think mentality monsters when it comes to it. I think there's nobody like Real Madrid. Absolutely. Um, Michael, a lot of people are saying in terms of tactics, right? Again, I know that Pep has developed this style, and again, as in that's only him, right? He develops the systems and develops his players, like you said. And again, like if you remember, even the Bayern Munich year, people, I think one of us was asking about the era of Ancelotti at Bayern versus the era of Pep. I think it's kind of unfair that we don't give Pep enough credit because what he did, say for example, a Kimmich, and here already you're seeing with the John Stones almost getting as in that level.
But one of the aspects is Nathan Ake. Now, Nathan Ake, I think, I know it might be an unpopular choice. In my personal opinion, he has been one of the best defenders this Premier League season, and he's Oh yeah, been that 100%. good this time, right? So for me, as in he's been so consistent at the left centre back role, and for me that gives, as in a weird way, it gives width as well as the solidity that Nathan Ake gives. Walker is great, but Walker has not played in many big games. I know he played against Arsenal, but again, I know it's a great form that I think Martinelli has shown, but nowhere close to Vinicius, right? As in, do you think that that aspect might make them overthink? And Akanji playing left centre back, would you have preferred a Laporte if you were a City fan? No, Laporte is No. not that guy anymore. I mean, Akanji did well against Saka. Because remember, Ake didn't play that game against Yeah, Arsenal, and yeah, Kanji yeah. did really well. Obviously, look, Ake, I think, has been the best left back in the Premier League this season. I know people will say Yeah, Zinchenko on this, but I think Ake has been the best because defensively, he's a rock. What yeah. City do is they just say, okay, you three center backs, Diaz, Akanji, Walker, you just stay back. You don't get involved in the build-up play. That's what they do. They just say, Grealish, get into one-on-one situations, cook the right back. Bernardo Silva, you do the same thing. And then Stones and Rodri, they just sit there and they just basically stop any sort of transition, which this is Pep has really just said, okay, I'm gonna build to beat Real Madrid. I think this is what he's done. He's such a madman that he's probably just overthought it and said, I just want to focus on beating Real Madrid. That is it. And maybe he's just conjured up this formation and this tactics to do that because one thing is for sure is Madrid are just going to focus on getting the ball to Vini as much as possible. Because if you saw him over the weekend against Osasuna, he was on fire. He was so good. Awesome. It doesn't As it in, doesn't matter if it was double yeah. teamed, triple teamed, quadruple teamed. That you could have put all 11 players on Vini, he would have gone past them. But now it's up against Kyle Walker. Now Walker is not the greatest on the ball, but defensively, he's a rock. He's a rock. Look what he's done to Mbappe. Look what he did to Vini last year in the Champions League. See, but If that's there's the one- thing, right? Go As ahead. in, sorry to cut you, Michael, but that's the thing. As in last year, the same thing we spoke about Reece James as well. I remember we almost beat them, and Reece James actually had for a good part, was very good. If not for the Christensen error, we remember that, right? Yeah. But this season is different because again, Reece James has been very injury prone. Same thing you can say about Walker this season, right? And that's the point. And Vinicius, meanwhile, I don't know if you agree. And again, Fateh, you can come in. But for me, again, we'll come to Haaland. Messi is good, but for me, like if you're not talking Haaland or Messi, for me he's the best player in the world. If not Haaland and Messi right now, and that's how I think of Vinicius Junior. I don't know if you agree with that. Anyone Oh in no, the panel too? 100% agree. I think Vinny has just been on fire this season. I mean, obviously, there's antics on the field, and he's just getting racially abused, which is horrible in La Liga. But I think he's sort of a player who kind of thrives on those sort of chaos moments, and he wants to show it to the crowd, and he wants to be a showmaker. And I really appreciate that with Vinny because he kind of brings joy to football. And when he's able to just take on players, it's not even just scoring; it's just the amount of assists he's getting as well. His passing has really developed more and more, and I just can't wait to see the battle between him and Walker. That's really going to be one to watch. And if Vinny can get the better of Walker, then what do City do then? Because they don't really have any other options. Do they just say, okay, Stones, you're just going to have to play as a natural center back, and Rodri, you be the lone CDM? Because that's one thing Pep is going to have to think about. Especially, I just don't know how Pep is going to approach this. I don't know if he just wants to say, Madrid, you have the ball, have it. We'll just sit back. We'll find out. We'll find out very soon. Because Absolutely, I think that's what Real Madrid did against City and Chelsea last year, isn't it? Like you have the ball and we'll counter attack. Oh yes, Exactly. they literally waited till 89 minutes, Fateh. For 89 Yeah. minutes, they were just waiting, and Also, like then they were like, also okay, fine, are let's we go. looking at Walker and Stones both doubling up on Vinicius? Is that the plan? Yeah, that's a great Yeah, question 100%. because you think so? Because Michael, I think Stones actually has been playing like a midfielder. Like I don't think he kind of drops back when When they're in when possession, in yes. defense you get But- four at the back, right? Yes, but so out of possession, they play a back four. Stones moves They into do, the but- second center back. Yeah. But again, I think the pace that Madrid play at, I think when you're counter attacking, I think that's the thing that will you miss that midfielder and Stones when you're kind of trying to outpace Madrid, which is almost very difficult, right? The fact is maybe Gundogan or as in maybe even De Bruyne needs to step back. You think that's a fair point because I don't think that connect is there when Stones is kind of dropping back and especially with the pace of Madrid. So do you think they're missing there someone? No, Silva no, maybe a 3-3-3-1. You never Maybe, know. yeah, I know like it's a the Pep Silva can kind of tuck thing in that- as the midfielder to help stop the transition. That's the problem as well, because when you got a player like Valverde who just
The guy can run 3 marathons in one day. I mean, the guy can run 100 kilometers. I don't know what it's called, the crazy marathon that people do, but he does that. He just runs 100 kilometers a day. And then you have Modric, who on the ball can find a pass, just spray it out wide to Vini. That's what they got to do. And I don't think a lot of people are talking about Rodrigo because really, last couple of weeks, he's been stepping up his performances. He just goes unnoticed because all the credit goes to Vini and all the credit goes to Benzema. But Rodrigo, in and around the box, he's such a nifty player. So I wouldn't be worried if I was City in that situation. But I think Madrid really got to worry about Man City's attack. Like Carvajal, he is a big game player. But Grealish, when he has space and he's able to take on players, he's a problem, and he's really been good in 2023. So I think both teams really got to worry about each other. Even though like the midfield, yes, that's going to be a battle transition wise. This game is going to be won and lost in transition. Who can counterattack quickly, and who can deal and stop with the counterattacks. That's where it's going to be won and lost. It's not going to be about possession, who keeps more possession, this sort of stuff, but who can stop the transitions for both teams. Because with no Militao, I mean, Ankit, you know Rudiger. I like Rudiger, but also in a he's back just, four, he's not the same player that I see he's in not the the same. back He's four, not the same especially when player. he's playing rightish. Like I know Roma, people would like to argue that Roma was actually very good, but come on, as in he wasn't at that level that we really desire. If you're a Madrid fan, right? If you're being really honest, but can he replace Militao for one night? Absolutely, he can. It's just Yeah, of about course. whether he'll make those mistakes, and we know that. I think Fateh, we remember doing a few watch-alongs where I remember every game, Rudiger has that one run that he goes on, crazy Yeah, run, right? crazy And run. that's where probably Yeah. Madrid have to be careful because I think he kind of gets carried away. Militao is actually he does that as well, by the way. Like Militao is, I would say, much more assured these days compared to maybe what you would get from Rudiger. But Fateh, that's the thing, right? The back four of Real Madrid, if you see everyone in the chat, even you help me out. Now Kamavinga, now again, he's been reborn. I know that he's left-footed. It kind of helps. He played for France. Real Madrid also has been playing well. Germany is a point that maybe Michael already made about. But the fact is, they could have gone one way of playing Nacho at left back, someone who's kind of just controlling, so that they're not getting any attacks out of that side, and making sure when Vinicius makes his run, you get a proper defense line behind him, right? That they could have gone with it that way. But now Kamavinga being there, a lot of times we see that what Kamavinga does is he steps into midfield, and Cruz is the guy who kind of drops back, because of his lack of pace and because of his ability to just pass the ball. So with that, it almost it becomes like a city formation. Actually, they're kind of matching it, while with the ball. So do you think if Real Madrid are to open Man City now, the fact is Vinicius versus the Stones versus Walker might be a little bit tougher compared to what they faced against Chelsea. So do you think Kamavinga is probably the most important guy, or any? What do you think? As in, who else will be the most important person if in case the City are successful in stopping Vinicius tonight? I think City will probably be able to stop Vinicius. I mean, if both Stones and Walker with their physicality are going after Vinicius, I mean, yes, he has the pace. Yes, I know that the panel thinks that he's the best player in the world right now. But I feel like I'm taking Haaland over any of those defenders that Real have. I mean, Alaba, Rudiger, Kamavinga, Carvajal. I mean, I'm taking Haaland any day of the week over any of those guys, and I think that Vinicius against Walker and Stones is still, some. I will still give Walker and Stones the credit, but Haaland against any of those four, I don't see any of those guys being a match for him. So I think that's where City wins this game, and that's what City didn't have last season. That one guy, and I think a lot of English clubs have sort of learned from the way Real Madrid won the Champions League last season, having Benzema, having a pure, striker, out and out Number 9. striker. Yeah, so I think that's And the then, and only. then we tried as well a couple of seasons back with someone that is related to your club, Fateh. You know what I'm talking about. But But he was let's not he go was to never given a Lukaku now. We'll chance. come to it tomorrow. Yeah, he was never given a chance. Yeah, okay, fair point as well. But coming to that, Michael and the chat, as in simple point, how do you stop Haaland? Because I think you mentioned about counter attack, right, Michael? I think City have actually done that a lot. You remember the game as Leipzig? There's one ball and Akanji just played one shot and boom, as in it was in Haaland's shoes and it was bang in the net. So Yeah. as in they could do that, like. So do you man mark him? What do you do against Haaland? Because he becomes a passer as well. That he became to Silva the other day. So how do you stop him? Here's the simple answer. You don't stop him. You don't. The guy's inevitable. He's going to score goals. It's just a matter of limiting him to one goal. That's it. As long as he doesn't score a hat trick, you can win the game. But if he's getting a hat trick,
Yeah, good night. The guy, he will not stop scoring. Did the same thing at Molde, did the same thing at RB Salzburg, did the same thing at Dortmund, and of course he's doing the same thing at Man City. He's just better around better playmakers. And what do the playmakers do? They feed the beast. When you feed the beast keeps on eating and eating, and he's only going to get better because he's under the best manager in the world in Pep, who's going to really just nurture him and make him into a better footballer. Look, everybody can criticize his first touch. He doesn't do step overs, he doesn't do a Zidane turn or any of this, but what Haaland does is he is the best player in the world off the ball. His movement in the box is ridiculous. You can't stop this guy. So, look, you can try and man mark him. All right, he'll do one spin move. He'll isolate the defender. He'll make a move near post. He'll make a move back post. You can't. So, I mean, look, you can try and stop the supply then. Yeah, try. But then what did he do? Hold up play against Arsenal. Link up play to KDB. Then he's sprinting in behind to get the ball back. The guy, he has pace, power, physicality, everything you want. It's just limit him to one goal. That's okay. That's fine. We just got to stop the other people. That's the main thing here for Real Madrid. No, that's a fantastic point, because I think if Fateh, you remember, like a lot of people I know, as in people just say, and media, half of it I just kind of ignore it, man. As in, Haaland is that because of City, etc. I agree that it's helped for sure, but still, even in Dortmund, I think was sensational, scoring 20 Champions League goals, 10 Champions League goals. No, I remember the crazy number of Champions League goals that he scored in Dortmund over a couple of seasons. But see, that's the thing, right? As in, if you remember back in the day, we had the Shevchenkos of the world, the Inzagis of the world, and some of them were poachers, some of them, had work rate. But this guy literally has everything. As in, Everything. that's where Michael is right. I think one aspect that maybe is improved even further with Pep is the press. The press that probably he did at times, yes, but not as much, in my personal opinion, how much I saw in Bundesliga. So with that taken into account, again, what Devesh is saying about stopping the supply, like De Bruyne has to be the guy, right? As in, De Bruyne has No, to be the guy. but then we're looking at stopping Grealish, Silva, De Bruyne, all of them, and I mean, it's stacked. It's stacked, and I don't think you can stop the supply either. I mean, does that mean that Cruz? Do you think that Cruz will be able to do a better job than say Chumeni or the I point think that we Valverde, like if you remember Valverde, the kind of performance he had Chelsea ke saath, I think that is something that maybe like he'll have a job. He'll have a job in his hands proper, because firstly, because he's going to be the legs in midfield. Plus the fact that you have on the opposition, attackers and people like De Bruyne, Haaland. Again, I won't be surprised, like a Benzema, Haaland also drops back. So I think it'll be very important, in my personal opinion, to see a Valverde do that, because again, Valverde could have played right wing, but the fact is playing central. Or remember, City, the way that they play, it becomes like a 3-2-4-1. But at times, like I just tried explaining, I think at times I've also seen them in game, they kind of become a 3-3-3-1. So that says that they are very narrow in midfield. So midfield, they'll have maybe one man more at every level of the field, right? So that's where basically they need legs and physicality, and that's the only way that I see. But Darren has a point, and for people wondering who's that snake, no guesses there. Obviously, for Chelsea fans, it's Thibaut Courtois. So there is like that's the last line of defense, and that's the only way to stop Erling Haaland. Probably, yeah, that's also a point. Messi's goat here taking saying Carvajal, Alaba, Camavinga, nobody has the physicality to stop Haaland. Only Rudiger maybe. See, but that's the thing, right? As in, should Rudiger go on a physical battle with him, Michael? As in, do you Maybe think not a that's physical battle, but maybe a mental battle. We've seen that before. Rudiger likes those mental battles, but I mean, Haaland is an alien. what does Haaland? So Yeah, does exactly. Haaland, Haaland right? is an alien. You can't get into this guy's head. He'll just say, "Okay, cool. I'll take my ponytail off and then score against Arsenal." He don't care. He is actually from a lab in Norway, from the mountains of Norway. I don't know I don't know what sort of lab. I'm gonna have to go check it out myself because it's only a couple hours away and see what the heck they just constructed here in this striker, because he's immune to everything. So hey, we just got to see how it works out for Rudiger, because I really don't know how you can just if you want to go on the ball with him and pressure him man to man like that, you can try and do it. Haaland will just say, KDB, put the ball over the top, I'll run onto it and score the goal. Or do you say, okay, I'll give you space, Haaland, and then you just try and play and make for yourself? It's difficult, but if there's one manager, Ankit, that knows what he's doing, it's Carlo.
The guy's been here before, many, many times, under pressure moments. So he knows exactly. He has seen all the strikers in the world, all the best strikers. He's seen R9. He has seen Drogba. He has seen all these guys. So, yes, Haaland is a great striker, but I think Carlo is conjuring up something. Maybe something to just try and nullify this beast of a man from Norway. Yeah, fair enough. And I know people are asking which club they support. So, firstly, let me tell you, Fateh, Michael, and me, that's Ankit, all three of us first, like all of us are like just football lovers. Yeah, we kind of follow a lot of international football, club football, end to end. But club wise, definitely Michael is a Liverpool supporter. I am a Chelsea supporter with a soft corner for Milan as well. I must say, with Inter being here on the screen that you can see, Fateh is making sure everyone knows about it. Like, of course, we'll come to that as well for sure. We'll speak a little bit for sure. Carval isn't good against pace, so Grealish will get better off him. Again, Grealish, Fateh, I remember last season also, we remember doing few watch-alongs and Grealish was getting a lot of hate. As in, Lot of it. again, credit to And Pep. he's come back very strong. I think he's Yeah. come back very strong. That mentality. A lot of ever since the move, I think he's had a lot of hate. But this season, I haven't heard. At least the last 6 odd months, I've heard very little anti-Grealish talk anywhere, whether it's on Twitter or any social media. So that just Mhm. shows you. I think once you start trusting Pep's system, I think he can make anybody look good, isn't it? So yeah, I do think that that's why when we talked about cutting off the supply for Haaland, I don't think you can stop Grealish, De Bruyne, and you know Bernardo Silva. So are we just saying that it's just a Name question the of player. output? Imagine a Mahrez is on the bench of Man City, man. As in again, Yeah, as in he would exactly. walk into. As in other day, I was doing a stream, Michael, and we were wondering who are the best, who are the available right wingers in the world who are like that level. And here we are falling short of people in names. And here City are having a person on the bench in Riyad Mahrez. Yeah, and then they have That's another how. quality striker in Alvarez. So I mean, what do you want to Oh do? yeah. Oh yeah. But, so are we saying that it's just a case of Real Madrid should just go for it and try and outscore City in both Yes, legs and not really yes. care about? Interesting. Oh, that's an interesting take. They, Again, you cannot stop City. Don't try and stop them. You're not going to limit them to 2 goals through these 2 games. Just outscore them. What did okay. what did Real Madrid what Let did Real me ask Madrid you do this last way. year? They had to outscore them to advance. So they're going to have to do the exact same thing. Look. You can move the league away and look at Champions League performances. In the league, Real Madrid concede 4 to MLS legend Castellanos. Okay, that's a makeshift defense, but there has to be something that Real Madrid have to do in a sense that they just got to outscore them. You're not going to keep them quiet. So that's what I would do at least. Wow, that's interesting because Michael, again, well, the proof was against Liverpool, right? As in Liverpool, the first 25 minutes that you had with the Real Madrid, again, that was probably the only time. And then Real Madrid was like, okay, let's just score, score, score. That's all they were interested in. And I think you're right. Well, yeah, but that was more Joe Gomez and his. Yeah, it was, but again, the intent was clear, right? As Yeah, in of course, the once that intent was there. yeah, the intent was clear. So for me, as in maybe it was a learning. And again, like I don't know, Michael and Fateh, if you guys realize, even in the chat, I think I speak about it yesterday as well. So this time, out of the 4 teams that has qualified for the semis, three of the teams beat or rather knocked out two teams from the same country. So basically, it was I think City did to Germany, Real Madrid did to England, and of course Fateh's Inter did it to Portugal, right? Portugal, Yeah, so yeah, yeah, yeah. so Ah, yeah. that's also one more aspect. So I don't know whether there's a history behind just the way that English teams play, or maybe Real Madrid knowing, plus the fact that they played City last time. But for the again last year, the match last year versus now, I know the teams are totally different, but considering what happened last year and Real Madrid left it so late, right, and almost City had the final in the bag as well. But considering that, do you think City this time, we were talking about Real Madrid trying to score, maybe City might do that as well? Because City's approach, if they kind of wait, you know that Real Madrid, they just need like a few minutes and wow, bang. You never know. Rodrigo, Benzema, the form that they are in, they might get a couple of goals and that's it, right? So maybe the fact is, Man City, despite being away first, maybe they will go all attack and they will just play the game what they did to Bayern Munich, right? No, I think Bayern Munich were a club in turmoil. We just didn't see it at that stage, with the coach and the way that they played. I don't think Real Madrid have just won a trophy. They are the defending champions,
And what Real Yeah. Madrid have, I think what Bayern probably didn't have was this sort of experience and this sort of mentality. Because last season, I think it was Real Madrid's cojones that just came on. Every game that they played, it was just a case of mentality. I don't think they were the better team in say against Chelsea or say against City or say even against Liverpool. But they just had that extra mentality. They're not going to give up. So I don't think City are going to be thinking like, let's go here and let's win and let's outscore them and then the game's over. I So do think you agree with Kaisuke, the comment? yeah, I think so. But even Madrid Wow. don't enjoy the possession. I think both teams will give Exactly. each other a lot of respect. So whether that means not probably being as attacking as what's expected. I think both of them will give each other a lot of respect, because you don't want to be especially if you're City. What's in it for you to sort of say that, okay, we're going to go at the Bernabeu and win? Even last season, I think they played well, but they sort of I mean, it wasn't as if they were dominating the game through and through. Like, it wasn't as if like, do Yeah, you remember like them? I Yeah, remember the XG, for example, right? So that is yeah. one way of maybe saying. I know possession is, well, sometimes it kind of gives you wrong stats, especially when you're playing as No, the I Real Madrid. think I understand what you're saying. the way I see it, I do think both teams will score, but I think that they'll give each other a lot of respect. I don't think you're going to see a 3-1 or a 4-1 tonight. I sort of feel like a 1-1 or maybe even a 2-2, something like that, Okay. or a close 2-1 or something like that. But I No, no, think even both of I've them. gone it. I've gone for such a prediction before the game, but now that I've seen the lineups again, as Hmm. in then it's to me saying that basically they're just going with the strength, right? So for me, what Yeah, is their strength? As in Real Madrid kind of hit on the counter, and of course, they can score at will, as in they can change gear at will, but at the same time, as in vulnerable in defense, and that is where Man City, take the as in bull by the scruff of the neck. That's what I would say. But Michael, interesting point by Fateh, as in again, do you think that the fact is because it's Ancelotti, because it's Real Madrid, again, there might be a case of watch what the other does and then react, because Yeah. again, because of last year, that surely it will come into mind, right, for the City players, that it just No, happened yeah. as 100%. I think Real Madrid and Ancelotti, they'll just assess what Man City are going to do for the first 10 minutes and say, okay, we'll adapt to you, and then you guys try and adapt to us. This is going to be going back and forth on adapting throughout the game, and that's what makes it really fascinating, because I think generally City are just going to be like, all right, cool, you have possession, we'll hit you on the counter attack. That's all we're going to do. And Carlo, this guy, once the eyebrow is raised, it's game over. That's it. It's game over then. So it's gonna. I'm really fascinated to see what happens. but will it Ankit, happen till the second leg? That's the big yeah, that's the question, thing. right? Will it happen in the second leg? We'll find out. Ankit, I gotta head out, buddy. Thanks for having me on. Good to see you, Fateh. Always, always. People in the chat, again, check out Michael Talks Football. Brilliant stuff by him. Always. See you soon, brother. See you soon. Again, we'll talk more on that. But Fateh, as in again, talk about Carlo Ancelotti. By everyone in the chat. आप लोग को शायद 2-3 बार मैंने दिखा दिया, और हाँ, थोड़ा सा हिंदी में बात कर लेते हैं अपन यार. जी लेकिन जी वी आर एक्सपेक्टिंग श्रेयस वेल टू जॉइन हाफ टाइम. लेकिन भाई सब लोग, मैं देख रहा हूँ लाइक बहुत कम हुए, तो भाई इतने देर से बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा है. आप लोग इंटरेस्टिंग लग रहा है इसलिए यहाँ पर हो, ठीक है. सब लोग लाइक बटन ठोक दीजिए. लेट्स डू अ चैंपियंस लीग लेवल लाइक्स टुनाइट टू द स्ट्रीम, एंड दैट इज व्हाट a Real Madrid Man City do. And I know, and I must say, especially my team has not been doing well this season. Let's not do that, and let's do this for now. That's the benchmark. Further, again, talk about Carlo Ancelotti. मतलब, do you think it's written in the stars? Carlo Ancelotti versus AC Milan final. I wanted to ask you from half an hour, यार, ये at question, लेकिन क्या लगता है? at at Istanbul, where they lost to Liverpool. So you should have asked me that Exactly. when the Liverpool fan was there. Written in the stars. But see, I think you'd love that. I would love to beat Carlo Ancelotti again at Istanbul, to make AC Milan fans suffer even more. But sorry, Inter fans, I don't want you to win because of Lukaku. No, I think Lukaku will stay. So I think your problem will be solved. So you guys can be happy that he'll stay at least I another don't year. think it's clear yet. It's not clear as day yet. It's not clear, but I mean that's what the player wants, and he's really like working hard for. But okay, look, see Carlo Ancelotti. What a career. I mean, if you remember, Ankit, somebody mentioned Carlo Ancelotti's time at Bayern being worse than Niko Kovac's time. He had Yeah, a sort buddy. of a failed stint at Napoli. I think people forget that, a failed stint at Bayern Munich, and then I don't think he was all that good at Everton. I mean, if, you thought people say, hey, people PSG, had written him PSG. off. No, but that was a long time ago, right? After PSG, Yeah. he went to Real Madrid, won the Champions League, and then the Bayern and Napoli stints happened, and then Everton, and everybody had written him off.
And what a story that is, like last season, I could not fathom him going from Everton back to Real Madrid and becoming the king of Europe. So I think he's got so much experience, so much respect for Pep. I think both the managers, they have a lot of respect for each other. And I know that we've been talking about goals and this and that, but I just feel like, in remember those old school Champions League games, the Jose Mourinho versus Benitez Liverpool, the nil-nils, the 1-1s. I sort of feel we're going to see that, because both the teams will have a lot of respect for each other. I just don't see, like how do you sort of go at a in a Champions League semi-final and just go bangers and say that नहीं Haaland. नहीं पॉइंट तो है, लेकिन वही है ना, मैन सिटी देखो, मतलब फॉर मी दैट इज द होल क्वेश्चन मार्क आप डालोगे अबाउट पेप. बाय द वे ये फोटो मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि हमने बात की थी कार्लो एंचेलोटी को, एंड इफ यू नोटिस इज अ वेरी supposedly very young Carlo Ancelotti. Again, remember he was also a legend as a player, to be honest, but the guy got and मतलब I know मैं आपके क्वेश्चन पर ही आ रहा हूँ फतेह. देखो, Man City, if they change the approach what they've been doing recently, again the question mark will come. आपको doubts होंगे खुद पर, क्योंकि अगर if it's nearing say 90 minutes tonight, or if it's heading towards the draw, and I understand generally scenario में क्या होता है, you will take a draw back to your home Yeah. pitch, right? You will take that. लेकिन क्योंकि away goals don't count, रियल मैड्रिड को फिक्र नहीं पड़ता होम और अवे, द वे दे आर प्लेइंग. ठीक है, I know that there are a lot of question marks in Real Madrid. They didn't have the ideal season जो generally करते हैं, ये भी agree है. They are vulnerable in defense, right? They are reliant a lot on the left side of attack, especially Vinicius Junior. वो तो clear है, ठीक है. लेकिन again, Modric भाई he is Benjamin Button, वो हर साल में कम हो रहा है एज में. तो for me at some What an point, analogy. yeah, so नहीं, for at some point you would have to say कि यार the closer it gets to a draw, मैं वही उस पॉइंट पर आता हूँ. अगर खाली 90 minutes बाकी in this tie, at that point Real Madrid would say okay man, we have 90 minutes, we know who's winning this match, right? मतलब the fear will start again. The एक होता है ना, क्योंकि you are Man City again. I actually associate a lot of people trolling Man City. I wouldn't do that. I say that Man City over the last say 7-8 years are exactly in terms of Europe what they've been doing, what my club Chelsea did between 2003 and 2010. ठीक है, ऑलमोस्ट वही मैं बोलूंगा, वो 7-8 साल, क्योंकि we were almost there in every quarter finals, semi-finals, Yeah. final, but somehow we are not getting over the line. People call us chokers and whatnot, bottlers and मुझे याद है, मतलब मुझे चिढ़ाया जाता था, वो फैक्ट है. ठीक है, तो वो चीज मैन सिटी फैंस को भी यार जो है उन्हें झेलना पड़ रहा है. बट आई स्टिल फील कि एवरी सीजन दे आर गेनिंग समथिंग और अदर, बट एट द सेम टाइम आपको मन में रहता है, जो मैं माइकल से भी पूछा था, दैट once you have lost to the same team exactly last year at the same point, you kind of get that sense again, of okay, mine not again, when it's getting closer. So the closer it gets to full time in the tie and it's draw, I think the more fear will creep into Man City than Real Madrid. Do you agree with that? But then Real Madrid's comebacks last season came at home against Chelsea and against City. So if you're saying कि आज वो हारते हैं and then the tie again, but Real Madrid will believe 90 minutes ठीक है हमारे लिए game है, but that's going to be away. So again, but I initially said कि does it even matter? But कुछ ना कुछ तो matter करता है. Like last season their comebacks were at home, their comebacks were not away from home. So are we saying they want to be in that situation Good if they point. play all out attack today and they are willing to lose this game and then say we'll go away and make a comeback? So do you think the Anfield recent वाला जो हुआ था Anfield में 2-5, that happened because of Liverpool being more bad? Would that be fair to say? The which game? The round of 16 में they beat Liverpool na 2-5. Yeah, Real yeah. Madrid. Yeah, तो Liverpool, I think, were very flat. And I think Real Madrid just have their number. Like Real Madrid definitely have Liverpool's number over the last 3 odd years. But somehow, I don't think that's the case with City. I mean, last season we saw the way the game was going. I think City seemed at one stage very comfortable, Ankit. Like it did seem, with that late, that 80th minute of goal or whatever. Like it seemed okay, ho gaya, done. So I think it was probably just a. अरे मुझे याद है यार, जब 89 मिनट थे ना, आई थिंक हम साथ में देख रहे थे शायद, ज्यादा मुझे शायद, याद है. तो बेसिकली वहां पर जो होता है ना, वो परसेंटेज जो देता है, मतलब आपका जो ब्रॉडकास्टर परसेंटेज चांसेस, तो वो 89% 89 मिनट्स में दे रहा था तू, सॉरी 98% दे रहा था तो मैन सिटी. And that is when Real Madrid changed it, and not once.
Again, they Yeah. did it against PSG, Chelsea, and Man City. And Man Plus, City. this time they did against Liverpool. ठीक है, तो Liverpool was at easy least though. I think that was easy, just. but 30 मिनट्स के लिए लग रहा था कि भाई मतलब 2 गोल खा गए ना, तो you would say that okay maybe यार it's a surprise coming. But again, अभिषेक बोल रहे हैं Rudiger drops his OG level performance, City are going to struggle this season. Real did come back away from home, bro. Camp Nou and Anfield, for example, very good point. Very good Yes, point. Copa Yeah. del Rey, of course, one cannot forget Copa del Oh Rey, of yes, course, yes, Anfield yes, also, yes, yes, like I yes, and said. that's just happened recently, right? The Copa del Rey. हाँ, but you yourself said ना, Copa del Rey they won what the trophy 3 days back, ठीक है? Yeah. Hmm. मतलब श्योरली यार, अगर आप 3 days back जीते, और करेक्ट मी इफ रॉन्ग पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टार्टर्स आर द सेम. आई थिंक दे माइट बी एग्जैक्टली द सेम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ रॉन्ग, आई विल जस्ट चेक इट अप. सीडीआर फाइनल और ये सेम था, तो अगर वो है तो द प्लेयर्स विल हैव दैट आल्सो. इट कुड बी अ नेगेटिव थिंग आल्सो, क्योंकि आप 3 दिन पहले एक ट्रॉफी जीत कर आए हो, और ऐसी ट्रॉफी, as much as is Copa del Rey and all due respect to them, the fact is Real Madrid haven't done well in Copa del Rey, or I think it was an achievement. कहीं ना कहीं Real Madrid will say okay, weight of the shoulders वाला चीज कि भाई हम Copa del Rey जीत गए और पहला ट्रॉफी सीजन का जीत गए. तो कहीं ना कहीं I think somewhere down there, अगर if you are a Kamavinga who's obviously very young at this point, people forget how young he is. Even a Chouameni on the bench, right? Yeah. Even a Vinicius Junior, मतलब Rodrigo, these are all young people at the end of All the these day, right? guys, yeah, yeah. They're So there. do you think it'll affect them कि यार they just won a trophy 3 days back, or you're saying नहीं, it's Real No, Madrid I you're think they're talking all about? internationals, Ankit. And come on, when you play for Real Madrid, you don't take the Copa del Rey seriously over the Champions League semi-final. I think this is their bread and butter. नहीं, So मतलब I think people correct me, they have won after like a yeah, long time. 2014 में शायद जीता था last. yeah, Ancelotti ने जीता था. yeah, the Bale and all those times. I don't know, but no, I don't think. I just think that there'll be a lot of respect. I don't see a 3-1 win or something like that. I expect either a 0-0 or a 1-1 or something like that. Like I think there'll be a lot of respect between the two teams. And today, at least, they'll try and cancel Yeah. each other out. What happens in the next game, you know? Yeah, I think. नहीं, it's a great point. Again, मतलब for me the battle that I'm looking forward to, Fateh, again आप भी बोलो, Vinicius Junior and Walker is a no-brainer. But वो तो I सब feel like लोग देख रहे हैं. Stones and Walker both will go after Vinicius Junior. Like I हाँ, think that quite will be a possible, double. quite possible. That's going to be लेकिन very मुझे वही interesting. लग रहा है ना, उससे क्या हो जाएगा, बर्नार्डो सिल्वा will be forced to kind of drop back, Drop or back. it becomes a 3-3-3-1. उससे क्या हो जाएगा? I think it's all about wings of Real Madrid versus the core of Man City. Who Man does City. better? Who beats the other one? Simple as that. Yeah, So yeah. if you think the wings of Real Madrid do better than wings of Man City, which is expected ज़्यादा compared to the core of Man City, then I think Real Madrid is winning. मुझे यही लग रहा है. Fateh and Ankit, are you rooting for Real Madrid or City, considering you'll get either one of them, and who do you want to get through? हाँ, मतलब अगेन इंटर मिलान, एसी मिलान के बारे में उस एंगल से देखे तो अगेन हम डिटेल में तो कल बात करेंगे फतेह, लेकिन मतलब I think I know whom I'm picking if I'm AC No, Milan. I don't want to get ahead of myself. I think whosoever is there is there. You know, I mean, they are probably Oh, going to be Fateh favorites. playing a No, manager. but genuinely, Ankit, if you're saying, you know, that this City or this Real versus Inter Milan, like when I think about it, obviously you have to give them all the respect in the world. Like they are very good teams. They are going to be the favorites. And I just sort of, you know, I feel like इतना हो गया, इतनी बात कर ली है, पेप हार गया सेमीफाइनल, ओवरथिंक कर लिया. I think he's been losing semi-final since the Bayern days. Nah, it's a good point. मतलब वही 2021 was a chance जो टूकल ने ले लिया उससे. But apart Oh, from the that, final, you're right. yes. He reached the final. Yeah, he reached the final. Yeah. But you know, like नहीं, but इतना लेकिन जब काफी आप, सेमीफाइनल्स है. You have a yeah, point. so I feel like इतना जब आप आ जाते हो, and if he beats this Real Madrid team, which is, you know, like we said, like 10 semifinals in 14 years or whatever, then I feel like he will be, you know, he'll be licking his lips. He'll be like, okay, one hand on the trophy. So whoever is there from Inter, AC Milan, I think, you know, हमारे लिए it's not as if कि you prefer anybody. Like it's not a preference at all. You wish that both the teams disappear and they give a bye or something like that. Because नहीं, yeah, लेकिन इट्स हाई टाइम यार. मतलब देखो, एक सेकंड में ये भी बोलता हूँ कि यार मैन सिटी जीतनी नहीं चाहिए. अगेन रेस्पेक्ट टू मैन सिटी फैंस यार, बट दैट्स हाउ आई रियली फील. व्हाई? बिकॉज दैट इज वन थिंग दैट इज बेसिकली एक अपर हैंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अदर इंग्लिश क्लब्स. ठीक है, कि हम yeah, बोल सकते हैं भाई यूरोप में आप कहाँ हो घंटा. हाँ, ठीक है, yeah. वो चीज आर्सेनल मैन सिटी का I है. remember those Nottingham Forest fans mocking City fans हाँ, that, you know, विला, नॉटिंघम फॉरेस्ट, एग्जैक्टली दैट हैपेंस. ठीक है, लेकिन साथ में रियल मैड्रिड 14, भाई ये क्या मतलब फार्मर्स लीग बना रहे हो क्या? वो भी चीज है. तो यहाँ पर वही दोनों साइड खाई है ना. तो इसलिए मैं बोलता गो विद द रोमांटिसिज्म. तो रोमांटिसिज्म मुझे बोलता है, मतलब डेरिन के क्वेश्चन को आंसर करते हुए,
I think the Ancelotti story is something that I would like to take with Ancelotti with अगर AC Milan final में provided that उस condition पर. But हाँ, Uh, honestly चारों में form में बोलो तो I think City on paper, on yeah. form you would say yes, are definitely the favorite on paper. But Real Madrid you can never discount them because it's UCL and It's a good because it's a tournament. Yeah. knockout, right? Or Champions League. I think let's be honest, Fateh. I think the weakest on the four, based on form, has to be AC Milan. Agreed, right? But AC Milan, the tactically defend with 11 men behind the ball, and then Hmm. Rafael Leao and Inshallah Rafael as the लियो last. इंशाल्लाह. Yeah. So वो that is देखते हैं something शुरू that, करेगा क्या कल देखते हैं. let's see. But even if so, I think that tactic really works. And Italians, when it comes to tactics, or at least neutralizing the other team, I think we inner dog. Wow. I mean, Simone Inzaghi, we call him Limone. So if he has a मैं dog वही in बोल him, रहा था ना यार. इंटर फैंस एक्चुअली फॉर कप कॉम्पिटिशंस यू वुड से दैट इंजागी इज एक्चुअली डन वेरी वेल. मतलब आई yeah, मस्ट से दैट done. Yeah, अगेन हम कल बात ही करेंगे डिटेल में, लेकिन आई रियली फील दे दैट विल व्हाट विल बी कहीं ना कहीं इट्स अबाउट दैट टैक्टिक्स. एंड अगेन वो इंटरेस्टिंग रहेगा. आई थिंक टुमारो आई थिंक द गाइज आर राइट इन द पैनल दैट टुमारो विल बी मोर ऑफ अ केजी मैच, मे बी yeah, even a fierce in terms of a battle compared to today. Tonight it will be more like a footballing battle. yeah. मुझे ये लगता है अगेन बहुत रेस्पेक्ट है बिटवीन एंचेलोटी एंड पेप. वी फॉरगेट दैट. That's another thing to take into consideration. Somebody said that Deepak Pep is has reached 10 semifinals. crazy, right? Yeah, Absolutely these crazy. numbers are crazy. I genuinely feel though, Ankit, that they are due a Champions League. Like you said, कि English supporter के point of view से you say कि banter के लिए अच्छा है, memes के लिए अच्छा है. But somehow कब तक आप रोकोगे उनको? Like, what do you बिल्कुल. think? Like, कब तक रोक सकते हो Man City को with the kind of team that they have, the coach that they have? एग्जैक्टली मतलब अगेन मेसी की बहुत स्टोरीज चल रही है. बाय द वे इट्स बीन क्लियर Hmm. यार बाय हिज डैड दैट ऑल अफवाह है और कुछ हुआ नहीं डिसीजन एंड ऑल दैट. Okay. अभी भी मुझे लगता है बारसा ही जाएगा, लेकिन अगेन आई माइट बी रॉन्ग. लेकिन आज सुबह तक I आ रहा feel, था अल हिलाल जाने Ankit, वाले I हैं. feel, I feel Barca need to move on. Honestly, like I दे know, नीड टू. but आई एग्री विद दिस. लेकिन एक मेसी के साइड से देखो और अगर द वे दैट ही लेफ्ट बारसा के साइड से देखो तो आई थिंक देयर इज समथिंग व्हिच इज अगेन मे बी ही विल गेट मोर लव देन व्हाट इज श्योरली no, गेटिंग फ्रॉम no, पीएसजी. love. See, he'll get all the love, but financially, it's very important that Barcelona not play with fire. They have to sell Your players over long there. term view as a club, you want your club to be healthy long term, and as Inter Milan are in such a bad state financially, like that's what Yeah, you we. never know. AC मिलान इंटर मिलान का जो हुआ, you never know. At some point, even like हम Yeah, बात कर रहे थे English clubs, certain English clubs in the past, मतलब yeah, were very successful. But again, I hope it's not one of them with Chelsea, with not one us of those. also Yeah, yeah, playing with exactly. FFP. But again, Yeah, वो बात करेंगे कल. मतलब मेरा point यही था कि यार कहीं ना कहीं मतलब the big clubs, kind of stand up when need be. और yeah, again, yeah, मतलब वो yeah. Champions League, I think let's be real. As much as Man City is a form team, I think it's Madrid is got to be beaten यार proper if Man City is going to beat them. So that's how it is. लेकिन prediction time यार मतलब सब लोग I think फतेह ने बोल दिया it's going to be a draw, but what is the score I line think फतेह you're going for? मेरा ना दिमाग में एक मैच आ रहा है अंकित. इट इज द 2001 चैंपियंस लीग सेमीफाइनल, बायर्न वर्सेस रियल. सेमीफाइनल रियल वर द चैंपियंस, एंड एक स्ट्राइकर था एल्बर, जियोवानी एल्बर, Of course एंड हाँ. उसने बहुत दूर से शॉट मारा जो कसियास, ही वाज द नंबर 1 रियल मैड्रिड का, एंड उसके इट वाज अ मिस्टेक and वो goal हो गया, and that's how Bayern won that game. So I somehow feel like, what if we have one of those moments? Like it is going to be KG. In my opinion, we're not going to have goals. So So it's either basically you're 1-1. saying it could be possible mistake also which decides that Yeah, night. exactly. Like a Haaland shot and a mistake by Courtois. Imagine, and you'll be happy, and Wow. your channel will be happy. So either it ends 1-1 or 1-0 to Man City. That's how I'm thinking. Interesting. भाई सब लोग सोनी सोनी 2 में आ रहे हैं ना, सोनी स्पोर्ट्स 2 में आएगा ना. I'm not in that room, तो अभी मुझे पता नहीं. अच्छा भाई एवरीवन इन द चैट कैन यू हेल्प मी आउट. यहाँ पर मैं सोनी लिव पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ. आई थिंक सोनी स्पोर्ट्स 2 में आ रहा है. तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सोनी लिव में, लेकिन सोनी लिव रीडायरेक्ट्स मी टू सोनी स्पोर्ट्स 2. दैट्स हाउ आई एम वाचिंग. लेकिन ग्रेट टू हैव फतेह यार. एवरीवन फतेह ओपी इन द चैट. हाफ टाइम पे श्रेय भी जुड़ेंगे. अगेन डू चेक आउट फतेह, श्रेय एंड माइकल चैनल एज वेल. चिराग भी ज्वाइन करने वाले थे बट होपफुली ज्वाइन हाफ टाइम एज वेल. लेकिन सब लोग Bro, मैं देख रहा हूँ this is आपके my कमेंट्स. channel with you. Like I don't have a channel. I subscribe बिल्कुल to बिल्कुल.
Yeah, almighty. बिल्कुल But okay, guys, atmosphere best is of luck. brilliant. And कल करते हैं फिर इसके आगे बात, अंकित. कल तो भाई we will Also, definitely yeah. Done, कल done, also done. will be See you definitely. चलो tomorrow, see man. you. Okay, Yeah, man. good Enjoy. night यार. Good night. Bye. तो भाई फतेह is now gone but we are here. So people बने रहना भाई सब लोग. Let's hit that like button. मैं अभी watch along करूंगा and obviously we'll be reacting end to end. So hopefully we'll have a lot more people here to support us as well as भाई interesting to know आपका क्या views होगा as things go on. चलो भाई मैं लगा दिया हूँ. एटमोसफियर ब्रिलियंट है आई नो दैट बट सच में बोलूं तो मेरा भाई सोनी लिव ऐसे ही आता है मेरा. सोनी लिव के द्वारा बेसिकली एयरटेल एक्सट्रीम है मेरा तो दैट रीडायरेक्ट्स मी टू सोनी 10 2 बट सोनी लिव है सब्सक्रिप्शन. दैट्स हाउ इट डज डिरेन मेरा. तो मैं होपफुली यू गाइस मैच माय क्लॉक. मैं चलाने वाला हूँ टाइम स्टैम्प. जस्ट गिव मी अ कपल मिनट्स व्हेन इट स्टार्ट्स. लेकिन मेरा प्रिडिक्शन एवरीवन तो आई एम गोइंग विद 1-1. आई एम गोइंग विद 1-1 बट आई थिंक कुछ तो ड्रामा मिलेगा हमें. Possibly with Rudiger being there, I think I can see some drama happening for sure. It could be a potential penalty, it could be a potential red card. तो आप watch out for that. I am calling that. मुझे लगता है with Haaland, Rudiger थोड़ा shit housery definitely देखने को मिलेगा. भाई सब लोग again do not forget to hit that like button. शेयर करिए. कैसे शेयर करेंगे आप लोग? Hit that retweet button on my Twitter account. आप लोग retweet कर सकते हो. Before retweeting, I would say quote tweet करिए with copying this link and so that others are able to click on the link and come. So that helps me more. Again, people मैं देखता हूँ काफी लोग मुझे हेल्प करने की कोशिश करते हैं. बिग अप टू देम. एब्सोल्युटली शाउट आउट है आप लोग को. एब्सोल्युटली. लेकिन अगर आप लोग रीट्वीट करते हो ना, आप रीट्वीट मत करो, कोट ट्वीट करो. कोट ट्वीट बाय कॉपिंग दिस लिंक. You can just copy this link that you are on YouTube. You can quote tweet by putting that link and so that people click करें और यहाँ पर हमें जुड़े. That's what helps the channel more than anything. But again, it's a set of friends watching together. Champions League night. It's a special night. Let's be honest. Real Madrid, Man City, nervous night काफी है. I would like to say certainly nervous for those set of fans for sure. लेकिन हम तो न्यूट्रल से है तो भाई we will like it for sure. 3-2 Real Madrid, 1-1 draw. Same okay. बिल्कुल हाँ. कम्युनिटी पोस्ट भी लाइक करिए यार. एब्सोल्युटली थैंक्स पुदिन फॉर रिमाइंडिंग मी. एब्सोल्युटली हेल्प्स दैट. No idea about Darren. Not an expert there. 3-1 to City. बिल्कुल Darren. Thanks a lot. Big up. Absolutely. What an atmosphere. भाई atmosphere बोलना चाहूंगा. बहुत अच्छा atmosphere है. लेकिन ये भी मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कल रात का atmosphere और भी अच्छा होने वाला है. ये भी हमें पता है. मतलब सैन सीरो में तो अलग ही लेवल होगा. Ash, by the way, big up यार. How are you? Nice to see you as well. Thanks for commenting that. Indie footy guy बोल रहे हैं to all. Interesting. इंटरेस्टिंग. भाई काफी लोग ड्रॉ के लिए जा रहे हैं भाई. एडी इन द हाउस. एडी इज आल्सो गोइंग 1-1 ड्रॉ. Everyone is going for a draw except for Darren. I see in the comments. अच्छा, Messi's goal is going 3-1 to City. Okay, interesting that. अगर आज वर्सेस सिटी का मैच बोरिंग हुआ तो नहीं देखूंगा सिटी गेम कभी. नहीं यार पुदिन भाई ये नहीं देखूंगा कभी भी. वो क्या हुआ था बस समझ में नहीं आया मुझे कभी कभी. भाई मोहम्मद साना वाज इन द हाउस. रूडी के भी नहीं इंजर नहीं करना यार. इंजरी हम चाहते नहीं है. मतलब इट्स अ चैंपियंस लीग सेमीफाइनल. आई नो डी ब्रुयना एक बार रो चुका है ऑलरेडी इन द चैंपियंस लीग फाइनल. आई डोंट लाइक टू सी दैट टू बी वेरी ऑनेस्ट. सैन सीरो आई एम रियली एक्साइटेड. या एब्सोल्युटली. हाला मैड्रिड बोले देवेश. ओके रियल मैड्रिड विन 2-1. चलो मोहम्मद साना वाज आल्सो ड्रॉ के लिए नहीं जा रहे. वेरी फ्यू पीपल आर गोइंग फॉर अ विक्ट्री और फॉर वन साइड एंड दीपक एज वेल गोइंग टू मैड्रिड. हाई स्कोरिंग यस. आई थिंक गोल्स टू आई कैन नॉट सी क्लीन शीट्स. मुझे बहुत ही सरप्राइज होगा अगर दे मिसिंग अ मिलिटाओ. दे आर प्लेइंग विद अ कामाविंगा. दे विल कीप अ क्लीन शीट एज रियल मैड्रिड. और अगेन मैन सिटी रिमेंबर नेथन आकी मिसिंग है. तो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन हमें पता ही है दैट बोथ काउंटर अटैक्स आर ऑसम. भाई क्या रेस्पेक्ट है एंचेलोटी और पेप के बीच में यार. सीरियसली मैन. हालैंड स्माइलिंग. विनी जूनियर का ड्रामा वर्सेस हालैंड विल बी फनी. आई होप रोडी वर्सेस नहीं. हजार्ड तो भाई शायद ही आएगा पिच पर टू बी ऑनेस्ट. दैट्स द ऑनेस्ट ओपिनियन. बट अगेन भाई सब लोग अगेन डू नॉट फॉरगेट इट्स ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. इफ यू बिलीव इन दैट लेट्स हिट दैट लाइक बटन. अगर आपने अभी तक एक भी जन ने नहीं हिट किया लाइक बटन ऑन द स्ट्रीम एज वेल एज द कम्युनिटी पोस्ट. और यहाँ शुरू होने वाला है तो मैं मेरे टाइम स्टैम्प से होपफुली आप लोग भी मैच करें अपने वीडियो को सेट कर दे. और मैं यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ. भाई मेरा तो अभी तक एक्सचेंज ऑफ फ्लैग्स ही चल रहे हैं. काफी लेट हो गया. मतलब एम आई टू स्लो और एम आई टू स्लो. ये मेरा क्वेश्चन है.
चलो कोई नहीं, हम करेंगे इस पर ही, क्योंकि भाई मैंने परचेज करके लिया है भाई ये तो मैं इस पर ही करूंगा वॉच अलोंग। होपफुली वी आर नॉट टू स्लो, जस्ट टू स्लो। अच्छा, डेरे मस्त लाइट बंद करके देख रहे हैं। चलो भाई, पूरा मूवी एटमोस्फेयर करके देख रहे हैं। हाँ भाई, यूसीएल थीम सॉन्ग इज एब्सोल्युटली गोटेड। अगर अलाउ होता यूट्यूब से तो आई वुड आल्सो प्लेड। आई इट्स नॉट अलाउड दो। मारियानो डियाज इज वन एवरीथिंग विद मैड्रिड, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट लॉर्ड मारियानो द गोट। यस, लोग हजार्ड के बारे में बोल रहे हैं, मारियानो आल्सो हैज। चलो, तो हम साथ में ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगेन मुझे लगता है दैट इट विल बी मोर और लेस सिटी कंट्रोलिंग पोजीशन, और रियल मैड्रिड ट्राइंग टू ब्रेक द अटैक विद द लेग्स ऑफ वैल्वर्डे और मे बी कामाविंगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो वो होगा, और फिर काउंटर होगा रियल मैड्रिड का। मुझे वही लगता है होने वाला है। अगेन आई माइट बी रॉन्ग। याद रखिए, चेल्सी के साथ भी फर्स्ट फ्यू मिनट्स रियल मैड्रिड वेटेड एंड वॉच्ड कि क्या हो रहा है चेल्सी का, फिर वो रिएक्ट करते। दैट इज रियल मैड्रिड फॉर यू, बट अगेन हु नोस, पेप माइट डू दैट। You never know with Pep, right? Sometimes. चलो शुरू हो गया क्या? नहीं, अभी शुरू नहीं हो रहा है। चलो भाई शुरू। इट इज चैंपियंस लीग सेमीफाइनल टाइम एवरीवन। लेट मी नो, जो भी लोग कमेंट में प्रेडिक्शंस नहीं डाले भाई, सब लोग प्रेडिक्शन दे दीजिए। आपका आज रात का प्रेडिक्शन क्या है? मेरा 1-1 है, इवन आफ्टर लुकिंग द लाइनअप, क्योंकि मोर और लेस इट वाज एज एक्सपेक्टेड, जो मैंने प्रीव्यू में बोला था। ऑलरेडी एक मिस्टेक आते हुए रियल मैड्रिड द्वारा यार। चलो कोई नहीं, विनिंग बॉल कैप्टन प्ले इंटरेस्टिंग, बट मॉडरिच गेटिंग द बॉल, काउंटर भाई, पॉसिबल काउंटर। ओहो, डेफिनेट फाउल, डेफिनेट फाउल ऑन रोड्रिगो। लकी येलो कार्ड होता अगर भाई इट वाज नॉट इन द फर्स्ट मिनट, ट्रस्ट मी। डेफिनेटली रोड्रिगो वुड हैव काउंटर्ड इफ नॉट ब्रॉट डाउन बाय ग्रिलिश। भाई वो येलो कार्ड है, 100% येलो कार्ड होता अगर वो फर्स्ट मिनट नहीं होता। 100% येलो कार्ड। इट्स अ प्रॉपर, मतलब जानबूझ के गिराया बंदे को, लेकिन बिकॉज इट्स जस्ट 40 सेकंड्स ना, विद इन दैट बच गया है ग्रिलिश। यार ऑलरेडी प्रेसिंग शुरू हो रही है यार, प्रेसिंग शुरू हो रही है, दिख रहा है मुझे। ओके, इंटरेस्टिंग। मेरा मेरा तो टाइम स्टैम्प आप लोगों को दिख रहा होगा। दिस इज माय टाइम स्टैम्प, एग्जैक्टली दिस इज माय टाइम स्टैम्प। हाँ, यूट्यूब थोड़ा सा 4-5 सेकंड लेट आएगा आप लोगों को, तो मे बी यू माइट फील इट्स 4-5 सेकंड स्लो, बट दैट्स अबाउट इट। भाई कोर्टुआ प्लेइंग इट लॉन्ग, इंटरेस्टिंग, गिविंग इट बैक टू सिटी दो। Interesting. Akanji on the run, left hand side. Mein, remember, he's not played much on the left hand side. Giving it to Grealish. Gundogan is captaining the side, taking the ball. Again, remember, it could be possibly Gundogan's last set of Champions League games here with City. You never know. ओके, लुक्स लाइक रियल मैड्रिड प्रेस नहीं कर रही कंपेयर टू सिटी जो कर रही थी जब रियल मैड्रिड के पास बॉल था। तो आई थिंक हाँ, चलो अभी शुरू हो गया। मॉडरिच ने थोड़ा सा प्रेस शुरू किया है, लेकिन नहीं, बहुत ही सिलेक्टिव प्रेसिंग है रियल मैड्रिड का, वी नो दैट। अब देखो रूडिगर, रूडिगर वहीं पर मिस्टेक करता है। देखो, ही क्रिएट्स अ स्पेस इन बिहाइंड बट गिव्स अवे द फ्री किक। Rudiger, bro, I miss him, man. I must say, I miss him, man. What a character, bro. What a character. हंसा देता है भाई रूडिगर हमेशा। भाई कुछ तो देता है भाई रूडिगर पिच पर, डेफिनेटली। अगेन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ रियल मैड्रिड फैंस कि आप लोग ने रूडिगर को वो अदा नहीं दिया अभी तक, पता नहीं क्यों। आई नो परफॉर्मेंस में नहीं दिखाया, लेकिन आई थिंक ही इज मच बेटर देन व्हाट इज गेटिंग इन माय ओपिनियन, बट एनीवे। ओके, कामाविंगा नॉट क्लियरिंग इट वेल। ओहो, ब्रिलियंट बाय सिल्वा, बट व्हाट प्रेस एंड बॉल विनिंग फ्रॉम रियल मैड्रिड। भाई साहब, विनीसियस जूनियर क्या है भाई? ये तो फीफा खेलता है यार, ये कर क्या रहा है बंदा? ओ माय गॉड। ओ भाई ऑसम, ओ भाई ऑसम मैन, ऑलमोस्ट बेंजेमा गॉट इट। और ये क्या गोल होता काउंटर पे भाई, विनीसियस जूनियर बेंजेमा द्वारा। वाओ, wow man, awesome stuff man, gives you goosebumps even as a neutral. What Vinicius Junior does man, awesome stuff भाई, that was literally FIFA stuff यार, I'm telling you। लेकिन अब वो चीज सिटी कर रही है।
लेकिन वेल डिफेंडेड यहाँ पर कामाविंगा द्वारा, गिव्स अवे अ कॉर्नर. Why isn't City wearing blue? I don't know. It's their choice, यार. It's away game है तो दे away jersey पहनना उन्होंने सोचा. Simple as that. At home they'll probably wear blue. I think sky blue है ना, तो sky blue white थोड़ा light shade है ना दोनों, तो थोड़ा बॉल दिखने में आसानी होती है. If you're what maroon and black, I think, right? बिल्कुल यार, मैंने खुद बोला है विनीशियस जूनियर इज द बेस्ट विंगर इन द वर्ल्ड पीरियड. बस. ओहो, फ्री हेडर था सिटी का, बैडली डिफेंडेड बाय रियल मैड्रिड. यहाँ पर ग्रिलिश वेल डिफेंडेड इस बार बाय रियल मैड्रिड. भाई बंदे का स्ट्रेंथ बहुत इंप्रूव किया है, ये मस्त है कामाविंगा. ग्रिलिश भाई, रोड्रिगो डूइंग डिफेंसिव होगा अभी तक. गुंडो को शॉट, लेकिन अब काउंटर आएगा भाई. नहीं, सिटी विन इट बैक. सिटी विन इट बैक इन हाउ? आई थिंक अकांजी है क्या? अकांजी हैज वन इट इन मिडफील्ड ब्रो, दैट्स इंटरेस्टिंग. लेकिन ग्रिलिश नाउ 1-on-1 वर्सेस कार्वाहाल. नहीं भाई, लियाओ कंसिस्टेंट नहीं है, वही तो इश्यू है उसका. विनीशियस नहीं था वो, अब हो गया है. ही इज हार्डली हैविंग अ बैड गेम, विनीशियस जूनियर. सिटी ना सेकंड गियर में खेलना चाह रही है थोड़ा. दैट्स व्हाई आई फील दे वांट रियल मैड्रिड टू कम आउट, लेकिन रियल मैड्रिड बहुत ही शानी है यार, बाहर आएंगे नहीं. बिल्कुल, आई थिंक इट्स टैक्टिकली ब्रिलियंट मैच. स्टोन्स का पोजीशन देखो, गौर करिए, जब बर्नार्डो सिल्वा ड्रॉप कर रहा है, स्टोन्स जा रहे हैं उसके पोजीशन पर. कामाविंगा ब्रो, ब्रिलियंट स्टफ, लेकिन गिव्स अवे द बॉल. I think they already are. If they're not, they're making a mistake. Because for me, वो second striker बन जाता है. ओहो, बर्नार्डो सिल्वा. रिमेंबर बर्नार्डो सिल्वा का क्या गेम्स थे अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख ब्रो, दोनों लेग्स में. हालैंड गेटिंग द बॉल भाई, लेकिन वेरी वेल डन बाय टोनी क्रूज ब्रो. हमने बोला ही था ही काइंड ऑफ कैन बिकम द ऑक्सिलरी लेफ्ट बैक एट टाइम्स. ओहो, टोनी क्रूज टशन दिखाते हुए, लेकिन कामाविंगा हक दिया है ऑलमोस्ट. कोई नहीं, कारवाल ने बचा लिया. मैन, दिस इज रियली एन इंट्रीगिंग मैच यार अभी तक. लेकिन अगेन थोड़ा सा चेस मैच टाइप लगा है अभी तक. आलबा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है फ्रॉम द लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है ब्रिलियंटली. बहुत इंटरेस्टिंग लगा है मुझे कि अभी तक मैं देखा नहीं हूं बेंजेमा हैज ड्रॉप्ड मच, डिस्पाइट यू कैन आर्ग्यू दैट सिटी हैज हैड मोर ऑफ द बॉल, लेकिन फिर भी आई थिंक बेंजेमा हैजंट ड्रॉप्ड एज मच एज आई एक्सपेक्टेड ऑनेस्टली. तो दे आर कीपिंग बेंजेमा लिटिल बिट अहेड. क्यों? क्योंकि काउंटर आएगा. भाई पानी वाली चाय नहीं यार, निवाय पानी है बस. टोनी क्रूज, यस. वो पुदीन मसाला टी पी रहे, चलो नाइस. एडिसन भाई पास तो कर, क्या कर रहे हैं? या बेंजेमा लुक्स लाइक इट फॉर दैट देवेश. मतलब अगेन मैं अभी भी सोच रहा हूँ भाई, वो क्या काउंटर था सेकंड मिनट में भाई विनीशियस जूनियर. वाओ, ऑलमोस्ट अ गोल. ब्रिलियंट पास है, बेंजेमा टच नहीं ले पाया बस. अच्छा फर्स्ट भाई, राइट फ्लैंग में थोड़ा सा स्पेस दे रहे बर्नार्डो सिल्वा को. शॉट आया भाई, ओ माय गॉड, सेव मैन. शॉट ऑन टारगेट बट प्रीटी श्योर फॉलो अप ऑफसाइड था. चलो कोई नहीं भाई. डिब्रोना शॉट कोटवा के अगेंस्ट, एंड यू नो देयर इज अ स्टोरी देयर इज वेल. हमने बात नहीं की ज्यादा. क्रूज कंट्रोल, यप. भाई अभी के लिए तो मेरे ख्याल से द पर्सन हु स्टैंडिंग आउट, आई थिंक हैज टू बी सेड दैट बर्नार्डो सिल्वा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फॉर सिटी, क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा इज रोमिंग अराउंड एंड दैट मेक्स स्टोन्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कॉर्नर जीता यार रियल मैड्रिड, सॉरी मैन सिटी ने. De Bruyne टू कोटवा दे दिया. कोई नहीं भाई.
कॉर्नर, हाँ सेट पीस में हमने बात नहीं किया। दोनों टीम में से कौन सा टीम के सेट पीसेस बेटर है इस सीजन में? रियल मैड्रिड और मैन सिटी, विच टीम सेट पीसेस आर बेटर? आई कैन आर्ग्यू मैन सिटी मैन देयर आल्सो, क्योंकि हालैंड इज इन द बॉक्स and नेथन आकी लेकिन मिसिंग है, दैट्स अ फेयर पॉइंट। ओके, Bernardo Silva stuck on the left hand side, देखते हैं if he moves his position। सिटी का ही बेटर है, आई एग्री। कामाविंगा एंड अल्बा नीड्स टू कवर द स्पेस। अलाबा इन मिड, ओके। नहीं, आई थिंक ठीक कर रहा है यार, आई डोंट थिंक इट्स एन इश्यू। बर्नार्डो सिल्वा को जानबूझ के स्पेस दे रहे वो लोग, क्यों? क्योंकि बेसिकली दे वांट टू स्टॉप हालैंड मोर। हाँ, यू कैन स्टॉप द सप्लाई, वो भी एक चीज है। आप देखो, अभी भी गौर से देखिए, बर्नार्डो सिल्वा देखिए, ही इज इन सो मच स्पेस। और इज इट केविन डी ब्रुयने? जो भी है, आई डिडंट सी एनीवन स्कोरिंग फ्रॉम रियल मैड्रिड बाय सेट पीस। नहीं भाई, रूडिगर किया था, चैंपियंस लीग में किया था। हाँ, मिलिटाओ है नहीं है, दैट्स अ फेयर पॉइंट। ओहो, 1-2 खेलने की कोशिश की है, लेकिन कोर्टवा किकिंग द बॉल हाई। बेंजेमा को डायरेक्टली, वाओ व्हाट अ पास बाय कोर्टवा यार, वाज इट लक और व्हाट? नहीं यार, व्हाट अ ब्रिलियंट डिस्ट्रीब्यूशन बाय कोर्टवा भाई साहब। काउंटर, ओ माय गॉड, ऑलमोस्ट अ बॉल कार्वाहल टू बेंजेमा द फार पोस्ट, वाओ। रियल मैड्रिड आर सुपर ब्रो। ओ मैन, आपको दिख रहा है, मतलब आर यू गाइस एबल टू सी दैट? जो चीज चल रहा है रियल मैड्रिड में भाई, 3-4 पासेस और बूम, दे आर देयर ऑलमोस्ट, वाओ। उनके लॉन्ग बॉल्स यार, चेल्सी के साथ तो पूरा, आई थिंक 4 गोल में 3 तो ऐसे ही हुए, और रेड कार्ड भी होता वैसे ही हुआ था ऑलमोस्ट, ओवर द टॉप वाले बॉल। एग्जैक्टली, इनफैक्ट लास्ट सीजन भी मैन सिटी के साथ वैसे ही हुआ था, याद है तो? पोजीशन उससे काउंटर अटैक, और काउंटर अटैक भी हाउ मैन, मतलब ब्रिलियंट पिन पॉइंट ओवर द टॉप, वाओ। हाँ, डेरेन, यस एब्सोल्युटली, आई रिमेंबर। याया टोरे वाला कर्स लिफ्ट हो गया बोल के पेप का वो थिंक करवाना चाहते हैं। ओके, आई डोंट थिंक सो वो होने वाला है। वो सब अपने अपने लोग बात करते हैं टाइम पास करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। कुछ कर्स वर्स है नहीं, ये हवन ववन नहीं मानते यार, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट। चलो, कामाविंगा गेटिंग द बॉल बैक, लुक एट दैट विनीसियस जूनियर, लेकिन काइल वॉकर इज देयर, अलर्ट। वेल प्लेड बाय सिटी यार, फ्रॉम द बैक, वेल प्लेड, वेल प्लेड भाई। दिस सिटी जो अभी किया ना एडरसन ने, एग्जैक्टली वही अब 2021 में कर रहे थे अंडर टूकल, दोस डेज मैन। कैसे थे भाई वो दिन, वो दिन। पीछे जॉर्जिनो ड्रॉप हुआ करता था, एंड देन ही यूज्ड टू प्ले दैट वन टच फुटबॉल। बिल्कुल यार, ब्रिलियंट फर्स्ट टच। वॉकर इज कमिंग इंटीरियर, सो डियर स्टोन्स आर नॉट दैट फास्ट टू कवर द स्पेस। विनीसियस जूनियर आई थिंक हैज नॉट बीन प्लेड इनफ। दो दो मूव्स हुए उसके, काफी अच्छा किया उसने, लेकिन आई थिंक मैन सिटी नीड टू डू समथिंग देयर। याद रखिए, इट इज जस्ट नॉट दैट, मैन सिटी आर आल्सो हैविंग अ वाइड मैन इन बर्नार्डो सिल्वा, बहुत ही वाइड, एकदम टच लाइन पर वो बैठा हुआ है, बस खड़ा हुआ है बस। Grealish with the ball. Grealish giving it to Rodri. Rodri shot, ब्रिलियंट शॉट यार, रॉड्री, यू नो दैट उसके पास है। आपको याद है क्या बढ़िया गोल मारा था रिसेंटली विद दैट लेफ्ट फुट कलर, भाई रॉड्री ने मारा शॉट और कोटवा ने सेव किया। आई थिंक शॉट ऑन टारगेट, यस वेरी मच सो। थोड़ा सा डिफ्लेक्शन भी हुआ था, वाओ इंटरेस्टिंग, वेल सेव्ड बाय कोटवा, वेल सेव्ड, गुड सेव इन माय ओपिनियन। भाई रॉड्री क्या देखने लगा यार, मतलब आजकल बॉल को, भाई अलग ही लेवल है। अरे कुशल, क्या हाल है भाई, नाइस टू सी यू।
अगेन भाई जो भी जुड़ रहे हैं साथ साथ में लाइक बटन दबाते रहना अगर आपने एक बार भी नहीं दबाया। सपोर्ट तो कोई नहीं कर रहा यार, सपोर्ट तो मतलब वही है, दोनों साइड खाई है यार। मैं मैन सिटी नहीं चाहता हूँ फ्रैंकली, बिकॉज वो फाइनली जीत जाएगी। यहाँ पर गोल होने वाला नहीं, लेकिन हालैंड हैज बीन ब्रॉट डाउन। नो आई डोंट थिंक सो, लॉन्ग बॉल ओवर द टॉप, लेकिन नहीं। कॉर्नर अच्छा, कॉर्नर रूटीन था यार। नहीं, आई डोंट थिंक इट्स अ फाउल। रूडिगर, ना ना, रूडिगर एंड कारवाल वर्सेस हालैंड एंड डियाज। ना, इट्स नॉट, इट्स अ वेरी फीबल टच, आई वुड नॉट गिव अ पेनल्टी फॉर दैट। लेकिन हाँ, सपोर्ट कोई नहीं यार, मतलब आप देखो मैन सिटी का एक ही तो बैंटर है कि भाई यूरोप में कुछ नहीं किया उन्होंने, वो भी बंद हो जाएगा तो फार्मर्स लीग। शॉट ऑन गोल, टीबो कोटवा इजी कैच हालैंड से। बट रियल मैड्रिड भी यार फार्मर्स लीग नहीं चाहते हम कुशल, टू बी ऑनेस्ट। मैं चाहता हूँ मैन एसी मिलान गोस टुमारो दो, जरूर जरूर से वो है। डाइव तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ट्राई टू डेफिनेटली फॉल डाउन इजिली। Yeah, he's really good. Yeah, he's really good. We know that. He's in the top four goalkeepers in the world for me. On form, maybe in top three. Who knows? भाई एक तो कॉमेंटेटर्स ना इतने बेवकूफ होते हैं ना, मतलब ऑल डू रिस्पेक्ट, आई नो दैट दे नो मोर देन मी। बोल रहे होम टीम डज नॉट हैव एनी पोजीशन व्हाटसोएवर, दे नॉट हैव द बॉल। दैट इज नॉट रियल मैड्रिड गेम। गोल हो गया। अरे भाई नहीं, कोटवा ने सेव किया, हेडर, फार पोस्ट हेडर, ग्रिलिश, वेल डन या। बट टू बी ऑनेस्ट, रियल मैड्रिड नॉट हैविंग पोजीशन इज लाइक ओके फाइन, इट्स ओके, हम देखते ही है। हाँ वो इजी सेव था देवेश, अगेन वेल डन द ग्रिलिश, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हेडर था भाई हालैंड। अब देखो काउंटर, एक बॉल जीता है। अब देखना, विनिशियस टू बेंजेमा, ओ रोड्रिगो लेफ्ट साइड पहुंच गया, ओके। रोड्रिगो क्रॉस, लेकिन वेल डन बाय अकांजी। दे ओ दे गिव अ फ्री किक अवे, कारवाल। अगर मैं सिटी फैन होता, विल आई टेक अ गोललेस ड्रॉ? आई विल नॉट। आई विल हैव टू टेक, बट मैं खुश नहीं होता, क्योंकि मुझे लग रहा है ऑन फॉर्म सिटी नीड्स टू विन दिस गेम, इवन कंसिडरिंग कि जितना समय कम है, और अगर ड्रॉ चल रहा है उस समय मैं रियल मैड्रिड को बैक करूंगा। लेकिन अगर लंबा गेम है, अभी सिटी को बैक कर रहा हूं। यप यप। वाओ पीपल, कम ऑन गाइस, लेट्स लाइक द स्ट्रीम फॉर पीपल ड्रॉपिंग ऑफ। भाई मैच पूरा नहीं देख रहे क्या? क्या बात है? बने रहना भाई, सब लोग साथ में देख रहे हैं भाई अपन मैच, और कुछ नहीं है। बट ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी। हो सके तो शेयर करिए। अगेन अ रिक्वेस्ट, इफ यू कैन रीट्वीट बाय कोटिंग दिस ट्वीट, रादर कोटिंग दिस लिंक। मेरा बाय डिफॉल्ट एक ट्वीट जाता है ऑन ट्विटर। लेट मी ट्राई एंड लाइक दैट सो दैट यू आर अवेयर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और हाँ बाय द वे, सब लोग कम्युनिटी पोस्ट में भी आप लाइक करो तो भाई ब्रिलियंट रहेगा, एवरी ईच वन ऑफ यू। जस्ट टेक्स अ सेकंड, मैंने शेयर किया था फॉर श्योर, यस। चलो भाई, आई थिंक सिटी गोल कमिंग है, वो रूडिगर क्लियरिंग, बट कोई नहीं। हाँ मतलब वही है, दोनों साइड खाई है यार मुझे बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई गोल, ओ नहीं यार, रियल मैड्रिड ऑलमोस्ट गॉट इट टू बेंजेमा। एडरसन रेड इट वेल दो। कामाविंगा सच में, दैट्स वन एस्पेक्ट दैट इज रियली डेवलप्ड। डू यू नोटिस रोड्रिगो हर जगह है भाई रोड्रिगो इज लाइक मोर लाइक अ फ्लोटिंग फॉरवर्ड। ऐसा नहीं कि सपोज टू बी राइट विंगर। बहुत इंटरेस्टिंग है, कहीं ना कहीं दे आर लेटिंग रिलिश हैव द बॉल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड रोड्रिगो जो शुरू में कर रहा था वो नहीं कर रहा अभी, देखो ही इज मोर लाइक रेडी टू काउंटर। अरे ये तो इजी था, बनारस से लो बैड क्रॉस यार, बट कोई नहीं। मॉडरिच गिविंग द बॉल अवे, डजंट हैपन मच डज इट?
भाई वी हैव बीन बिल्डिंग दिस गेम टू द लेवल ऑफ द बेस्ट गेम द टू गेम इन द सीजन में भी डेफिनेटली पेनल्टी है. हाँ, एक सेकेंड, एज एज ऑफ द पेनल्टी बॉक्स था. कामाविंगा विद चैलेंज, रेफरी ने बोला नहीं. इंटरेस्टिंग. यहाँ छक्का मार दिया गुंडोगन. डेफिनेटली फ्री किक था यार. इफ नॉट अ पेनल्टी डेफिनेटली, अगर बाहर था तो फ्री किक था. कम ऑन, कम ऑन ना. जॉन स्टोन्स डेफिनेटली डिजर्व फ्री किक वहां पर. कामाविंगा हैड नथिंग. बट बाय द वे, स्टोन्स ऑन कामाविंगा बैड चैलेंज बोलना पड़ेगा. सॉरी, सिल्वा, बर्नार्डो सिल्वा ऑन कामाविंगा, डेफिनेटली नॉटी. बट वही है ना, पुदिन वर दे प्लेइंग एट दैट लेवल, व्हाट मोटिवेशन आज खेल रहा है. आई नो प्रीमियर लीग भी इज वेरी क्लोज, बट या सिल्वा था ना. मतलब अगेन आई डोंट थिंक इज अ रेड कार्ड, बट डेफिनेटली नॉटी. नो फ्री की, गुड डिसीजन. I thought he didn't get the ball. Maybe he didn't touch him. Corner. Kamavinga concedes the corner. Walker finally going front यार. इंटरेस्टिंग. अभी तक सिल्वा और स्टोन्स जा रहे आगे, इस बार वॉकर आगे गया. कॉर्नर फॉर सिटी. डिब्रोइना इधर डिलीवरी, देखते क्या करते हैं. आयो कुकुम्बर इज वाचिंग द मैच. What's next for Pep after City though? Spain, Germany, England conquered, PSG or Juve? Damn, imagine. I think as much as I hate to say it, I think he's staying in City for a long time, यार मुझे. Long time. I think वो रहेगा. I think he's yeah, it's actually an era we were talking about. I don't यार पुजन, I don't. नहीं पे करेगी ज्यादा. हम कितना एल लेंगे यार, हम कितना एल लेंगे. लुकाकू के लिए भी ले, कुकुरिया के लिए भी ले, ओबामियांग के लिए भी ले. पूरा लॉस ही लेते लेंगे क्या? आई डोंट थिंक सो. कुकुरिया माइट जस्ट स्टे. वेल आई डोंट थिंक येट, आई डोंट थिंक येट. अभी भी आई विल नॉट से केजी है, बट काफी मतलब केयरफुल रह रहे हैं दोनों साइड्स. भाई लेकिन इतना भी कम पोजीशन में एंटिसिपेट नहीं किया था यार रियल मैड्रिड के लिए. प्रेस करना पड़ेगा रियल मैड्रिड को. दे कैन नॉट कंटिन्यू दिस वे. भाई कितना देर तक रहेंगे ऐसा? मैन सिटी भाई पूरे रात पास ही करती रहेगी, बोर करवा देगी अपने को. लेकिन भाई नाइस पास यहाँ पर टू स्टोन्स. स्टोन्स ने हगा पास, बट रॉड्री हैज इट. मैनचेस्टर सिटी फैन क्यों कर रहे हो भाई? हम फुटबॉल के फैन है भाई. बीइंग अ फैन ऑफ अ सर्टेन क्लब डजंट मीन आई एम नॉट अलाउड टू वॉच अदर मैचेस ब्रो. अगेन आप चेक कर सकते हैं हमारे नो योर क्रिएटर सीरीज, उसमें मेरा स्टोरी है. आई विल गेट टू नो. आई स्टार्टेड वॉचिंग क्लब फुटबॉल एंड स्टार्ट वॉचिंग चेल्सी 5-6 साल बाद में, आफ्टर आई स्टार्ट वॉचिंग इंटरनेशनल फुटबॉल एंड क्लब फुटबॉल में ब्रो. तो वो है थोड़ा सा, आप स्टोरी आप जानिए. अगेन फॉर समवन हु प्लेड फुटबॉल, आई जनरली लाइक फुटबॉल as well as I know अब अपनी फैमिली में, that is almighty family में, there's a lot of people who are City fans, Real Madrid fans, as well as neutrals. By Champions League, I just love the Champions League. Cautious approach है, fair enough. मतलब it's more like a, they want to have a safety valve अभी. Rodrigo on the run. हम्म. बिल्कुल डेरेन, thanks a lot bro for confirming that. I know Manchester City fan, but it's good that you asked the question.
So the people who are new to the channel know that at times, right? एडिसन पास कर मेरे भाई जल्दी भाई 24 मिनट्स सिटी आर लाइक हम तो यार चाहे दुनिया इधर की उधर जाए हम टस से मस्त नहीं हो रहे हम लोग तो वैसे ही खेलेंगे भाई फेयर इनफ व्हाई नॉट दैट इज व्हाट हैज वर्कड फॉर देम लेकिन अगेन रियल मैड्रिड जब बॉल जीत रही है ना ऑल्दो बहुत कम जीत रही है आज फिर भी मुझे लग रहा है कि यार अब देखो भाई बॉल लॉस्ट बाय रॉड्री गोल और व्हाट एन इंटरसेप्शन दिस वाज ऑलमोस्ट अ गोल स्कोरिंग सेव मैन ऑलमोस्ट उस लेवल का भाई विनिशियस जूनियर विद अ क्रॉस यहां पर आई थिंक रॉड्री ने गलती की लिटरली गिविंग इट अवे टू विनिशियस जूनियर भाई जॉन स्टोन्स गॉट बीटन बट रूबन डियास ओपी मैन व्हाट एन इंटरसेप्शन बाय रूबन डियास वर्ल्ड क्लास यार ये दैट वाज ऑलमोस्ट लाइक द रूडिगर मोमेंट ऑफ 2021 क्रूज के लॉन्ग लॉफ्टेड बॉल्स और डिब्रोने के थ्रू बॉल्स आई लाइक डिब्रोने का थ्रू बॉल्स आई थिंक लॉन्ग लॉफ्टेड बॉल्स आई लव फैब्रिकास इवन मोर टू बी ऑनेस्ट यार जब पेप आया था ना सिटी में कौन बोलने वाला था कि भाई सिटी खेलने वाली है इन अ फॉर्मेशन विद 3-2 एट द बैक वाओ मैन as much as I don't like him making everything farmers league बंदा सच में डिजर्व करता है यार evolution gaming lacks in now city need to score because real when they create chances for even less time they can score बिल्कुल बिल्कुल और evolution gaming lacks पता नहीं आपने देखा है हमारा प्रीव्यू शोज एंड प्री मैच as well मैं वही बोलते आ रहा हूं द क्लोजर इट गेट्स टू फुल टाइम और एट दैट पॉइंट अगर ड्रॉ चल रहा है द मोर फेवरेट सिटी सॉरी रियल मैड्रिड बिकम इन माय ओपिनियन क्योंकि रियल मैड्रिड को चाहिए 2 मिनट नॉट दैट सिटी डजंट नीड वेरी लेस टाइम एज वेल लेकिन आई थिंक रियल मैड्रिड को बैक करेंगे उस सेकंड में लेकिन अभी के लिए अभी भी बोलता हूँ सिटी इज हैड द बेट वो हो बैड चैलेंज बाय कार्वाहाल बट इट्स अनफॉर्चुनेटली अगर येलो कार्ड मिले तो थोड़ा अनफेयर रहेगा यार हाँ येलो कार्ड नहीं है क्योंकि आप देखो तो ग्रिलिश का जो पहला मिनट में हुआ था फाउल ऑन किस पर हुआ था ग्रिलिश ने फाउल किया था भाई सबसे पहले मिनट में किस पर फाउल किया था ग्रिलिश ने विनिशियस जूनियर रोड्रिगो हाँ तो दैट वन वाज डेफिनेटली येलो कार्ड बट दिया नहीं था रेफरी ने तो कहीं ना कहीं इस बार ग्रिलिश के अगेंस्ट नहीं दिया नहीं आई थिंक इट वाज डिजर्व्ड लेकिन बिकॉज it was against Grealish and Grealish did not get a yellow card. I feel that is why referee not decide to do that. Carval is lucky. Put it that way. आगे मिलेगा. Yep. बिल्कुल यार भाई those times are something that we live with यार मतलब कुशल. मैं आज भी इस मैच में ना जो 1-2 पासिंग चल रही थी सिटी की एट द बैक फ्रॉम द बैक जो प्ले हो रहा था एडिसन द्वारा रॉड्री स्टोन्स डियास वो जो चल रहा था ना याद दिला दिया यार वो भी मोमेंट चेल्सी का 2021 मेंडी यूज्ड टू डू दैट रिमेंबर एंड इन गोल नहीं यार डियास द बेस्ट सेंटर बैक इन द वर्ल्ड आर्गुएबली यस ओहो एक सेकंड फ्री किक है फ्री किक गुंडोगन के अगेंस्ट क्या हुआ यार कार्ड है क्या मैं मिस कर दिया मैं कमेंट देख रहा था ठीक है यार ठीक है बस रूडिगर लिटरली उसको रोका है व्हेन गुंडोगन वांटेड टू पास हिम बाय इतना नाटक भी मत कर चलो हाथ से थोड़ा लगा है बट ऐसे नहीं कि रूडिगर ने मारा है आई थिंक इट्स लिटिल बिट ओवर रिएक्शन इट्स जस्ट अ फ्री किक बाय वेल डन टू द रेफरी मैन वेल डन टू द रेफरी रेफरी डिड नॉट कम अंडर प्रेशर ऑफ पेप लेकिन धीरे धीरे डाल रहे प्रेशर पेप और सिटी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द रेफरी फ्री किक था क्योंकि बंदे ने रोका है
बट डेफिनेटली ऐसा नहीं कि वो पुल बैक किया है या बेसिकली उसको कोनी से मारा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इट्स अ डेफिनेट फ्री किक एंड दैट्स इट। हाँ बस, ही न्यू व्हाट इज डूइंग रूडिगर, आई नॉट बी लाइंग, रूडिगर न्यू व्हाट इज डूइंग, लेकिन कोई मलेशियस चैलेंज नहीं है इसमें, ओवर रिएक्शन 100%। ही स्मार्ट, एग्जैक्टली, वेल पुट। प्राइम कार्वाहाल और प्राइम एस्पिलिक्वेटा भाई, अगेन डिफरेंट प्लेयर्स ऑल टुगेदर। एस्पिलिक्वेटा इज मोर सॉलिड इजंट ही, प्राइम। प्लस ही कुड हैव दैट एक पास टू मोराटा इफ यू नो। टैक्टिकल फाउल और लीडरशिप भी है एस्पिलिक्वेटा में कंपेयर टू कार्वाहाल, बट कार्वाहाल इज अ वेरी अंडररेटेड प्लेयर, बोलना पड़ेगा। पीपल इन टर्म्स ऑफ चांसेस, मतलब अगेन रॉड्री का शॉट था दैट आई रिमेंबर, जो कोटवा ने सेव किया, बट इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट द क्रॉस बाय विनिशियस जूनियर, और जिसको रूबन डियास ने क्लियर किया, इंटरसेप्ट किया, आई थिंक दैट वाज अ बेटर चांस। इवन बेंजिमा का जो रन था विद क्या बोलते हैं आपका, कौन पास किया था अरे अपना रोड्रिगो, or Edison came and took the ball. I think that was also a good one, good chance. You can almost argue that Real Madrid has had the better chances. लेकिन क्लियर आउटराइट चांस कोई नहीं हुआ, मतलब एकदम क्लियर चांस। टैक्टिकल फॉल, एग्जैक्टली, सिटी हैड मोर क्लियर चांसेस। डू यू थिंक सो? हाउ? कौन से चांसेस, मुझे याद नहीं आ रहा यार। रॉड्री टुक अ फार ऑफ शॉट। देवेश, इफ यू कैन रिमाइंड मी, व्हाट वर द अदर चांसेस दैट दे हैड? मतलब अगेन द चैलेंज दैट डियाज डिड, आई थिंक दैट वाज अ वर्ल्ड क्लास चैलेंज यार, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। कोटवा अच्छा सेव था बट वर्ल्ड क्लास नहीं था। Yep. But I'll take Ivanovic over the two of them. Yeah, prime Ivanovic any day. Beast. Ivanovic was a beast. Ivanovic in right back. Madrid fans will remember Essien. He could also play there. Actually, even Lasana Diarra. Just saying. वो हालन वाला था एक, फिर एक ग्रिलिश का भी था आई थिंक। ओके, ओ माय गॉड, रोड्रिगो क्रॉस, विनिशियस जूनियर लीप किया लेकिन टू हाई। हाँ लेकिन अभी भी बैक फोर में आई डोंट थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट। ही इज वेरी गुड बट नॉट वन ऑफ द बेस्ट इन बैक फोर आई वुड से। बट हाँ, बैक फाइव में तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट। आई स्टिल रिमेंबर दैट प्री सीजन गेम जहाँ पर रूडीगर लेफ्ट बैक खेला था। अराओ के अगेंस्ट। भाई टॉकिंग अबाउट हु द बेस्ट सेंटर बैक ना, आप लोग पूछ रहे थे। अराओ इज अ शाउट इन यार, मैं बोलना चाहूंगा। अराओ डेफिनेटली, बार्सिलोना बहुत कम गोल्स कंसीड किया है नो ला लीगा है, बट स्टिल मैन यू हैव टू गिव इट टू बार्सिलोना, देयर डिफेंस हैज बीन वेरी गुड। मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट रियल मैड्रिड में मिलिटाओ इज द बेस्ट ऑन फॉर्म सेंटर बैक। देन मैन सिटी में I would like to say Nathan Ake on form is better than Diaz. Very arguable, I know, but left center back, I know, but still. Yep, yep. More than scoring, I think वो एक presence था ना वो दोनों boxes में. One thing that we definitely miss. भाई यहाँ counter आ सकता है, Kamavinga on the left wing. Benzema has gone left, interestingly. Kamavinga continued his run. कॉर्नर जीता है भाई कामाविंगा ने, नाइस। काइल वॉकर गुस्सा कर रहे भाई, नहीं डेफिनेटली गोल किक है। कामाविंगा लाइक नो डेफिनेटली इट्स अ कॉर्नर एंड इट इज अ कॉर्नर। कोई नहीं भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल बिग शाउट आउट टू द 14 people watching us right now यार। आई होप दिस काइंड ऑफ becomes more, but definitely great to see you guys always man। अगेन रिमेंबर हाफ टाइम में हमें और जुड़ने वाले, होपफुली विल हैव हाफ टाइम में चिराग एज वेल एज श्रेय जॉइनिंग अस।
It's actually been a chess game, yeah, proper chess game रहा है. Crowd is getting involved now. हाँ मतलब थोड़ा बहुत Man City are trying to win fouls, win yellow cards. Valverde with a 1-2. And then a cross, brilliant one. Benzema, first touch. भाई लेकिन नहीं लेट हो गया. Oh my god. हैंडबॉल है बेंजेमा का. या हैंडबॉल हो गया. हाँ डेफिनेटली हैंडबॉल है. अगेन मतलब आई वुड लाइक टू से भाई रियल मैड्रिड के चांसेस जो आ रहे हैं ना, यूजुअली में एक गोल कर देते हैं लोग. ये जो बेंजेमा के 2 चांसेस आए, यू कैन हाफ चांसेस ये बट है ना. अगेन वाल्वर्डे, रोड्रिगो, विनीशियस जूनियर मेकिंग रन्स. विनीशियस जूनियर सबसे सेकंड मिनट में आपको याद है क्या रन था. हाँ भाई कल भी करेंगे, प्लान तो है. देरिन प्री मैच तो डेफिनेटली है, वॉचलॉन्ग भी कर लेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. ओहो कामाविंगा, नाइस 1-2 यार. नाइस 1-2. ब्रिलियंट रन बाय कामाविंगा यार. विनीशियस जूनियर, अरे गोल, अरे बाप रे, व्हाट अ ब्रिलियंट गोल मैन. Oh man, Kamavinga bhai, all the credit goes to him. But Vinicius Junior, what an awesome finish. Edison left stranded. It is 1-0 to Real Madrid, and that is why Real Madrid are what they are. Simple as that. By absolutely crazy scenes. Absolutely crazy scenes by Real Madrid, bro. It is absolutely crazy. By Real Madrid do this to you. Again, Kamavinga क्या with Modric क्या बढ़िया 1-2 था. But again, will you argue Bernardo Silva, Stones, Walker, by Gundogan did not do the jobs. आपको फाउल करना चाहिए था. I think Gundogan made a mistake in not fouling Vinicius Junior or even Kamavinga. He should have been fouled by Bernardo Silva. I think counter is the game and that is where they missed it. बाप रे. चलो लेट्स अपडेट द स्कोर. भाई साहब व्हाट अ गोल मैन. क्या बोल रहे हो आप लोग. goal, what a goal. Vinicius best. By when I say that Vinicius Junior is the best winger in the world, he is in the top 3 players in the world. I literally mean it. मैं रियल मैड्रिड फैन नहीं हूं, फिर भी मैं बोल रहा हूं. फॉर मी विनीसियस जूनियर इज द बिग रियल डील. बिल्कुल. Have to say, but Kamavinga, the run that he had also deserves a lot of shout. Brilliant goal. हिंदी फुटी गई. यू वर राइट एब्सोल्युटली. दीपक कंग्रेचुलेशंस, आप मैड्रिड को सपोर्ट कर रहे हो आज. आई नो दैट. ब्रिलियंट आशीष मैन, एब्सोल्युटली भाई. नाइस टू सी यू आशीष एज ऑलवेज. वापस से फाउल है डेफिनेटली. भाई वॉकर वर्सेस का विनीशियस बोला था. एक तो इंपॉर्टेंट बैटल हार गया ऑलरेडी. सौरदीप कंग्रेचुलेशंस ब्रो. Again, it's just one goal, I know. Lekin they just need, actually not just one shot, Ashish. I must say, on a good day, Real Madrid would have already scored at least 2 goals. At least 2 goal aa jate on a good day. I think they're missing the point. मैन सिटी जो खुद बोल रही है हमें येलो कार्ड चाहिए रियल मैड्रिड के लिए, अब देखो वापस से मिस कर दिए. दे आर लूजिंग अ लॉट ऑफ बॉल्स ऑल ऑफ सडन. लुक एट बर्नबो यार. Yep. Crazy, man. Absolutely crazy. Man City fans, what are you thinking, man? Not a good moment if you are one, I'm telling you. इतना पोजीशन लेकर क्या फायदा. That is Real Madrid. भाई literally PlayStation stuff, bro. By Real Madrid. Telling you. Literally.
Kunal, congratulations यार, Real Madrid fan house. Again, it's just 38 minutes अभी, तो you never know. Long time अभी भी है. But I'm telling you, Man City should have been in the lead. If Man City are not getting a draw minimum आज, we all know who's winning it. लेकिन again, football is a funny game as you say, right? Second leg एतिहाद में, लेकिन doesn't matter Real Madrid as much. प्ले स्टेशन हमेशा ट्राई करते रहते हैं भाई passes. I think City, if they score before half time, then I think City will come back. Now interesting रहेगा, Ancelotti will wait and watch. That's an interesting part. Remember, as it is वो ज्यादा प्रेस नहीं कर रहे थे, बहुत ही सिलेक्टिव प्रेसिंग चल रही थी रियल मैड्रिड से. एंचेलोटी डेफिनेटली अभी बोलेगा हाफ टाइम पे ले लो, 6 मिनट बाकी है, क्या ही तो आप अपने ज्यादा करना है, जस्ट कीप योर शेप, मेक श्योर वो 1-2s नहीं कर पाए, ट्राइंगल्स नहीं फॉर्म कर पाए, यू हैव वन स्टेप बिहाइंड, इट्स ओके, बट लेकिन कवर, हैव अ स्ट्रक्चर. Yeah, again, Carlo is there, but again, बोलना पड़ेगा to the players, man. As in, the kind of ability these guys have, वो PlayStation वाला चीज रियल में कर देते यार. कामाविंगा, विनिशियस जूनियर, मैन भाई बेस्ट विंगर था, अब तो बेस्ट शॉट टेकर भी हो गया ऑलमोस्ट. व्हाट अ ब्रिलियंट गोल. कामाविंगा गिविंग अ फ्री किक अवे दो. देवेश, या इट इज चीट कोड मैड्रिड. कुशल बोल रहे, मैं सच में बोल रहा हूँ यार, जोक नहीं कर रहा. सेकेंड मिनट में हुआ था जो मोमेंट दिखाया था, सेकेंड मोमेंट में विनिशियस जूनियर ने, आई थिंक दैट शोड व्हाट रियल मैड्रिड आर अप फॉर इन दिस गेम. फार पोस्ट में ऑलमोस्ट हालैंड गेटिंग इट, बट नो, थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग हो गया. बर्नार्डो सिल्वा कीपिंग द बॉल, गिविंग इट बैक. सेम ओल्ड सिटी. ओके, बर्नार्डो सिल्वा वन द बॉल बैक. वेल डन, वेल डन. यहाँ पे गुंडोगन ऑन द राइट हैंड साइड. साला कोई है ही नहीं भाई. वाई आर सिटी डूइंग अ चेल्सी ब्रो. वो है ही नहीं बॉक्स में. ये क्या था भाई, सीरियसली मैन, इट्स जस्ट द प्रेस ऑफ 3 buttons एंड दैट्स इट. यू नो, बैंग गोल. आप देखो यार, एक क्या हुआ, यू जस्ट हैड कामाविंगा, लूका मॉड्रिच एंड विनिशियस जूनियर, 3 जन ने टच किया बॉल और बस गोल. क्रेजी ना. फ्री किक है रियल मैड्रिड को. अरे भाई, भाई पीपल, इज इट AC Milan वर्सेस रियल मैड्रिड? बहुत अर्ली आई नो, बट इज इट कार्लो एंचेलोटी playing at Istanbul versus his team where he's a legend? And you guys, I hope you all know, right? मतलब यहाँ पर डिबेट भी नहीं कर सकता. आई थिंक कार्लो एंचेलोटी इज अ बिगर लेजेंड इन मिलान देन ही इज एट रियल मैड्रिड. बाय द वे, बोलना चाहूंगा, इसलिए मैं इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ उस पर बार बार. इन ऑल द प्रीवियस शोज आई हैव डन. इट्स काउंटर अटैक वर्सेस पोजीशन, बिल्कुल, बट काउंटर अटैक वेरी सेलेक्टिव वन एट दैट. Well, he did move late. He did move late, Darren. You have a point. But again, what a brilliant shot, man. But people, where is Erling Haaland here today? Are we not asking? I think ये memes निकल आ जाएंगे आज. Where is Erling Haaland? Where is Kevin De Bruyne? नजर नहीं आ रहे मुझे. किसी को नजर आए तो बोलिएगा यार प्लीज. एज मच एज इतना पासिंग हुआ है, मुझे तो अभी तक नजर नहीं आए. Shubhradeep, of course we can, but the way Real Madrid are playing, scoreline has gone into Real Madrid's hands. क्योंकि now it's for Real to lose this game. आज का टाई,
नॉट द एंटायर टाई दो. अगेन भाई जो भी लोग आ रहे हैं भाई साथ साथ में लाइक बटन दबाते जाइए. जो भी लोग जुड़ रहे हैं, रिमेंबर इट्स ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. there's a टारगेट हमने किया है फर्स्ट हाफ में 150 लाइक्स. कितने लाइक्स हो गए भाई सब लोग? कैन एनीवन हेल्प मी आउट हियर? Can we say Haaland neutralized? I told earlier. Yeah, very good point. Oh ho! Shoulder push by Carvajal to Grealish. Grealish उठ जा भाई, नौटंकी उठ जा. आई थिंक लड़ाई की जरूरत नहीं थी है. ग्रिलिश ने रिटालिएट किया और कारवाल और भी बचपना करते हुए पूरा ही गिर गए. देखते क्या हुआ भाई. ग्रिलिश डेफिनेटली रिटालिएट किया है, डेफिनेटली. कारवाहाल ने कोशिश किया ग्रिलिश को उठाने की कि भाई नाटक मत कर, उड़ जा, इतना गंदा नहीं है, शोल्डर पुश था बस. शोल्डर पुश था प्रॉपर तगड़ा वाला. ठीक है, फिर कैमरामैन दिखाइए यार क्या हुआ. बैक पुश था एक्चुअली, बैक पुश था, शोल्डर पुश नहीं था. ऑन सेकेंड थॉट्स आई थिंक डेफिनेटली इट्स ओ कारवाहाल ओवर रिएक्ट किए हैं, लेकिन ग्रिलिश डेफिनेटली रिटालिएट किए हैं. वेरी सरप्राइज, नो कार्ड्स, नो कार्ड्स. और कमेंटेटर इतना बायस्ड यार टू इंग्लिश कमेंटेटर्स मैन, सीरियसली. फॉर मी ग्रिलिश शुड गेट अ येलो कार्ड मैन. ग्रिलिश को येलो कार्ड मिलना चाहिए था पहले मिनट में, एज वेल एज अभी, एज वेल एज कारवाल को भी मिल सकता था. दोनों को मिल सकता था. ग्रिलिश कारवाल डेफिनेटली इज अ बैटल गोइंग ऑन. Yes, everyone should know that Bhaiya he has won both as a player and manager in AC Milan. बिल्कुल. डेरेन मैन, कम ऑन. मैं आज को कमाज का एडिट बस पोस्ट करने वाला था जिसमें हालैंड में मेन कैरेक्टर विनीशियस स्कोर्ड दैट सेकंड. ओके बिल्कुल भाई, सब लोग थैंक्स देवेश यार फॉर द अपडेट. लेट्स गेट टू 150 लाइक्स मैन. लेट्स लाइक द स्ट्रीम एवरीवन, सर्टेनली हेल्प्स. बिग अप टू एवरीवन. यहाँ पर कौन कौन है भाई? सब लोग भाई. स्पेशल शाउट आउट है, बने रहना लास्ट तक. इंडी फुटी गाय, आशीष, पुदिन, देवेश, खुशल, शुभ्रदीप, whom I missed, कुणाल, एवोल्यूशन गेमिंग लक्स, गौरव. अरे गौरव आपका कमेंट मिस कर दिया, सॉरी. दीपक इन द हाउस इज वेल ऑफ कोर्स. So I think I've given a shout out to everyone as of now. बिल्कुल यार, मतलब बंदा बोल रहा है कि कारवाल should have been in the book. Well, fair enough, maybe yes, but it was a proper retaliation which generally gets a yellow card, bro. coming together था यार, ये नहीं यार. भाई क्रूस और गुंडोगन भिड़ गए हैं. लेट्स सी, मतलब येलो कार्ड निकल रहा है क्रूस के लिए. Do I agree? Let's see the replay, but I don't think so. It's a yellow card. It's coming together. Honestly, maybe I'm wrong. अच्छा नहीं, येलो कार्ड था, ठीक है. पोर टैकल, सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक. इसलिए रिप्लेस आर देयर, यू नो. हाँ बिल्कुल. बाय उससे याद है, लास्ट सीजन रिमेंबर वी आर नॉट स्पोकन अबाउट इन द प्री मैच. ग्रिलिश का लास्ट मोमेंट्स में आई थिंक देयर वाज अ गोल लाइन क्लियरेंस बाय मेंडी, वाज इट? कारवाल ने एक्टिंग करी बिल्कुल. कोटवा कंसीड्स थ्रो इन, लेकिन नहीं, टाइम अप. भाई साहब, भाई व्हाट अ हाफ ऑफ फुटबॉल यार. रियल मैड्रिड बोल रहे नहीं, हमें तो प्ले स्टेशन खेलने का मन है यार, हम वी विल डू जस्ट प्रेस ऑफ अ बटन पे गोल. और मैन सिटी बोल रहे हैं हम लोग को खेलना है पोजीशन बेस्ड, हम लोग को ट्रेनिंग पिच पर खेलना है. तो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है गेम अभी तक, टैक्टिकल चेस मैच रहा है टू बी ऑनेस्ट. बट यस, एज थिंग्स स्टैंड इट इज 1-0 टू रियल मैड्रिड. हाफ टाइम हो गया पीपल, और मुझे याद दिलाना ना 10 मिनट में वापस से शुरू करना है. लेकिन श्रेय आ गए. श्रेय क्या हाल है भाई? थैंक्स फॉर कमिंग ऑन बाय द वे. श्रेय ऑन शॉर्ट नोटिस भाई. श्रेय ओपी इन द चैट एवरीवन. श्रेय क्या लग रहा है यार, मतलब रियल मैड्रिड डूइंग रियल मैड्रिड थिंग्स, मतलब इज इट अ सरप्राइज फॉर यू? I think overall, Ankit bhai, like not surprised. I think Manchester City तो इसको ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेड करे, like literally the way they are playing, like ऐसा लग रहा है वो सीरियस ही नहीं है. आई थिंक उनको लग रहा है कि हम सेकंड हाफ में आराम से कमबैक करके जीत जाएंगे. लाइक
there's a lack of respect, I don't know, like, और थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है ना कि बल्कि हम पूरे सीजन हार ही नहीं रहे, द ब्यूटी, आई थिंक वही फीलिंग आ रही है मुझे अभी भी। यही लगता है कि मैनचेस्टर सिटी विल कम बैक इन द सेकंड हाफ, क्योंकि इतनी डीप रियाल जो बैठी है ना, गोल तो मारा है विनीशियस ने, अगेन विनीशियस, वाओ मैन, बट स्टिल आई थिंक सिटी हैव टू मच करेक्ट। पहले एक बीच में चांसेस थी सिटी की, रॉड्री ने अच्छा शॉट मारा था, डिफ्लेक्ट हुआ था, उसके बीच में ग्रिलिश को स्पेसेस मिल रही है, बट ओवर पासिंग हो रही है अंकित भाई। लाइक सिचुएशंस में कई बार आप डायरेक्ट हो सकते हो ना, सिटी थोड़ा ओवर कॉन्टेम्पलेट कर रही है थिंग्स, और वो थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है अंकित भाई। हाँ मतलब फेयर पॉइंट। अगेन देवेश बोल रहे व्हाट अ हाफ, व्हाट अ गेम हाला मैड्रिड। दीपक बोल रहे गुड मैच। अगेन मैड्रिड फैंस आर लाइकिंग इट और अदर पीपल हु आर हैविंग अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मैड्रिड आल्सो लाइकिंग इट। अरे कुशल थैंक्स मैन फॉर सपोर्टिंग अस ऑलवेज मैन। सिटी नाउ अंडर प्रेशर, बट वही है ना, इट इज द मैच इज प्लेइंग टू रियल मैड्रिड्स हैंड्स। आपको याद है सेकंड मिनट में ही जो विनीशियस जूनियर ने रन मारा था और जो पास किया था, बेंजेमा आर्ग्यूबली ऑन अ गुड डे वुड हैव टेकन इट डाउन एंड स्कोर्ड, बूम, ठीक है, सेकंड मिनट में बात हो रही है। अच्छा बाय द वे यहाँ पर आई एम शॉक्ड कि जैक ग्रिलिश और कारवाल दोनों येलो कार्ड में नहीं है अभी तक, क्योंकि फर्स्ट मिनट में कारवाल का सॉरी ग्रिलिश का बहुत ही गंदा चैलेंज था ऑन आई थिंक रोड्रिगो, लेकिन जो सेकंड मिनट में दिखाया तो विनीशियस जूनियर ने, वो एक चांस था। फिर बाद में आई थिंक रॉड्री ने एक चांस किया था, वेरी शॉर्ट, Thibaut Courtois saved. Haaland का you can argue that he had a shot, but again feeble shot था. I would not say it's a real wow वाला shot. Then Real Madrid के लिए again जो इंटरसेप्शन की थी रूबिन डियास ने, मुझे तो रूडिगर के याद दिला दी यार, जो क्रॉस आई थी विनीशियस जूनियर द्वारा एंड इंटरसेप्शन की थी रूबिन डियास ने, ब्रिलियंट। तो आर्ग्यूबली अभी देख रहे हो, अभी तक हमने जो काउंट किया, दो प्रॉपर चांसेस है रियल मैड्रिड के पास। फिर वापस से एक था जहां पर रोड्रिगो प्लेड इन बेंजेमा और एडिसन आकर बॉल ले लेते। फिर वैल्वर्डे प्लेड 1-2 ऑन द राइट हैंड साइड, वो भी एक बढ़िया चांस था, हाफ चांस था यू कैन से। तो रियल मैड्रिड एज मच एज मैन सिटी ज्यादा पोजीशन रखी है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज, डू यू थिंक कि रियल मैड्रिड विल स्टिल बी डिसअपॉइंटेड कंसीडरिंग कि यार 4-5 प्रॉपर चांसेस थे ऑन अ गुड डे रियल मैड्रिड वुड हैव स्कोर्ड 2 गोल्स एक्चुअली? आई थिंक दे विल बी थोड़ा सा अंकित डिसअपॉइंट होगी, क्योंकि आई थिंक दे हैड सम अपॉर्चुनिटीज, लाइक विनीशियस जूनियर वहां जहाँ पे क्या ब्लॉक था रूबन डियास का अंकित भाई, दैट वाज अ मैग्निफिसेंट ब्लॉक अंकित भाई। बट अंकित भाई वही है, रियाल ने क्लासिक काउंटर अटैक फुटबॉल खेली है, मैनचेस्टर ने क्लासिक पोजेशन फुटबॉल खेली है, इससे क्लासिक जोसे वर्सेस क्लासिक पेप जो हम देख रही है, और एक्साइटिंग है। थोड़ा इंटर बारसा की याद आ रही है जो हमने 2010 में देखा था, बट क्या पेप इस बार फाइनल लाइन क्रॉस कर पाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। बट ऑन द अदर हैंड आई थिंक वो हैप्पी भी होगा अंकित भाई थोड़ी लीड लेके, क्योंकि जिस तरह मैच स्टार्ट हुआ था ना, लाइक पहले 20 मिनट थे, वहां पे मुझे भी ये फीलिंग आ रही थी ये बहुत लॉन्ग डे होने वाला है रियाल के लिए, बहुत लॉन्ग डे होने वाला है। बट उसके बाद आई थिंक विनीशियस के चांस वही है अंकित भाई, रियाल के खिलाफ अगर आप पहले 25 मिनट यूटिलाइज कर लो, सिटी ने जैसे पिछले साल करा था, आई थिंक आप गोल्स मार लोगे। अगर आप वो चीज नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। एंड आई थिंक थोड़ा सा सिटी में वही दिखा है, मुझे ये नहीं दिखता सिटी में कोई फेयर है रियल मैड्रिड का, वो आई थिंक वो थोड़ी कॉन्फिडेंस से आ रहे हैं कि जो ट्रेवल फीलिंग थोड़ा उस ओवर कॉन्फिडेंस एटीट्यूड में आई है। रियाल ने रिस्पेक्ट दिखाई है एंड स्मार्ट काउंटर। अच्छा नहीं, इट्स अ फेयर पॉइंट, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं कि सिटी यू नो आर रियली रियली गोइंग फॉर इट। ऐसे मतलब वो हो सकता है दे वर वेटिंग फॉर रियल मैड्रिड कि भाई आप कभी तो टेम्प्ट हो यार, आप तो कभी प्रेस करो, क्योंकि शुरू में आई थिंक 5 मिनट में जब रियल के पास बॉल था, सिटी वर देयर विद द प्रेस, ठीक है, लेकिन जब सिटी के पास बॉल है इतना, रियल बहुत ही सिलेक्टिव प्रेसिंग करी, विच इज व्हाट रियल गेम इज एनीवे, हम जानते ही है। तो मे बी सिटी चाह रही थी कि वो बाहर आए, क्योंकि दैट विल क्रिएट द स्पेस इन बिहाइंड, और वहीं पर आप यू नो इफ यूर डी ब्रुयना और रॉड्री, आप वो खेल सकते हो पासेस। मतलब अगेन पीपल डू लेट मी नो भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वेयर इज केविन डी ब्रुयना? मतलब प्लीज लेट मी नो यार, मैं तो मतलब मुझे तो दिखा नहीं, मतलब अगेन मे बी मैं गलत हूँ, मैं मतलब मुझे दिखा नहीं। हालैंड यस यू कैन आर्ग्यू, बट द फैक्ट इज द सप्लाई। देवेश ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला था, हम प्री मैच कर रहे थे कि वी हैव टू कट, अगर आप बेसिकली अगर रियल मैड्रिड हो तो यू हैव टू कट द सप्लाई टू हालैंड एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और हो भी सकता है एक अदर एस्पेक्ट बोलूं, बर्नार्डो सिल्वा राइट हैंड साइड में आप देखो तो उनको दिया जा रहा है स्पेस, मतलब कामाविंगा इज ऑलमोस्ट लाइक आपके लाइन में खड़े पेनल्टी बॉक्स के, और ही इज लाइक ओके आजा भाई, फिर कॉर्नर हम कंसीड कर देंगे, वो इज रेडी फॉर इट। ऐसा नहीं कि वी आर मैन टू मैन ऑन बर्नार्डो सिल्वा, मे बी बिकॉज आप बर्नार्डो सिल्वा पर मार्क करो तो यहाँ से मिडफील्ड से स्टोन्स रन मार रहे थे शुरू में, तो वो दे डोंट वांट टू हैव दैट हैपन। काइल वॉकर कैन मेक दैट रन। तो आई थिंक टैक्टिकली आई वुड गिव इट टू एंचेलोटी यार, मतलब इट हैज गॉन टू रियल मैड्रिड्स हैंड्स। लेकिन श्रेय वही है से अभी तो 0-0 खैर 45 मिनट्स 1-0 सॉरी विद 45 मिनट्स लेफ्ट, इफ एट ऑल मैन सिटी से they don't score a goal next 45 minutes में, or even if they score a goal,
प्रिटी श्योर यार यहाँ पर रियल मैड्रिड आउटराइट फेवरेट्स टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप इवन दो एतिहाद है, मतलब विल यू से कि एतिहाद में मैन सिटी हैव एकदम वे मोर एडवांटेज? आई थिंक दे हैव अंकित भाई, लाइक आई थिंक हम एनफील्ड से की बात करते हैं, लेकिन एटिहाद में जो उनका रिकॉर्ड है चैंपियंस लीग में एंड द वे दे प्ले, लाइक एटिहाद में तो अंकित जैसे वो होता है ना पैक ऑफ वुल्व्स, वो पैक ऑफ वुल्व्स की तरह है। लाइक आज अंकित आपने बिल्कुल सही बात कही है, सिटी में वो दिखा नहीं, लाइक इंटेंसिटी नहीं दिखी। आई थिंक सिटी जब एटिहाद में आएगी ना, वो इंटेंसिटी भी दिखेगी बहुत। आज एनर्जी नहीं दिखी मुझे, वो सेम जो एनर्जी होती है ना सिटी की, जैसे मैं मानता हूँ वो अलग मैच था, लेकिन आर्सेनल का मैच जैसे था जो एतिहाद में, वहां स्टार्टिंग में सिटी के प्लेयर्स लाइक दे वर गिविंग ईच एंड एवरी इंच ऑफ देयर बॉडी। मुझे आज वो नहीं दिखा, लाइक फाइटिंग फॉर द एवरी बॉल। डिफेंस में दिखा है अटैकिंगली केविन डी ब्रूने, बर्नार्डो सिल्वा, ग्रिलिश फिर भी कई हद तक ठीक खेले बट उतना अच्छा नहीं। हालैंड अगेन डेस्परेट रहे है, कुछ मिला नहीं उनको इस मैच में, लेकिन आर्सेनल के मैच में वो थोड़ा सा ड्रॉप भी कर रहे थे डीप आके टारगेट मैन की तरह। आज वो सिर्फ एक ही जगह पे रही है कि मुझे सर्विस मिलेगी तो ठीक है, वरना मैं अपनी पोजीशन पे खड़ा हूं। तो आई थिंक थोड़ा सा सिटी के लिए है ये देखने वाला। बट अंकित भाई वही है, चैंपियंस लीग फुटबॉल ऐसी है कि सेकंड हाफ में सिटी ने अच्छा स्टार्ट कर लिया और सीधा एक गोल मार दिया, फिर रियाल सोच रही है कि कैन वी गो टू एटिहाद विद 1-1, और फिर कई गोल मारने के चक्कर में रियाल 2-1 पे डाउन हो जाए। तो आई थिंक सेकंड हाफ बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक अगर अंकित भाई ये 1-0 ले रहा तो सिटी विल नॉट माइंड इट, अगर ये 2-3 हो गया फिर इज गोना बी डिफिकल्ट। नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं चैट में देख ही रहा हूँ, बाय द वे इस पर आएंगे। पर रेफरिंग पर क्या क्या दिखता है, मतलब जो मोमेंट था बिटवीन ग्रिलिश एंड जो कॉमेडी सीन हो गया भाई, हम तो एज न्यूट्रल्स लाइक लेट्स हैव सम ड्रामा, लेट्स हैव सम मजा। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहे हो, मतलब ग्रिलिश और कारवाल में इफ यू वर द रेफरी व्हाट वुड यू हैव डन? आई थिंक ओवरऑल आई ऑन उस डिसीजन में मैं पूरा एग्री नहीं करता, पर पता नहीं कभी एक फीलिंग होती है ना कि इतने बड़े मैच में कोई ऐसा डिसीजन ना हो जाए जो थोड़ा सा एक मैच किसी के एब्सोल्यूट फेवर में कर दे। मुझे पर रेफरी ने उससे पहले से गुस्सा आ रहा है, जैसे वहां पे एक इतनी अच्छी फ्री किक अपॉर्चुनिटी थी मैनचेस्टर सिटी के लिए, आप कैसे सोच सकते हो कि वो एडवांटेज है? हाउ इन द वर्ल्ड 15 यार्ड से फ्री किक है, रेफरी हैज टू गिव इट, लाइक आप कैसे उसको एडवांटेज प्ले करने दे रहे हो वहां से? और उसके बाद कई अंकित भाई ऐसे फाउल से जो मैं एग्री करता हूँ तो सिटी के फेवर में जाने चाहिए थे जो नहीं गए। तो थोड़ा सा बाइस नहीं कहूंगा, रेफरीज में ना आजकल वो वाली चीज दिखती है अंकित भाई, लेटिंग द गेम फ्लो, लेटिंग द गेम फ्लो। पर वहीं पे जैसे सिटी की वो फ्री किक थी 15 यार्ड में, केविन डी ब्रूने की रेंज में थी दैट फ्री किक वन, आपने वो कैसे एडवांटेज प्ले करने दी? लाइक कई डिसीजन, वो वाले डिसीजन मुझे ज्यादा वो लगा। कार्वायाल और ग्रिलिश वाला मुझे ये लगा कि एक तरीके से डू आई वांट बिग डिसीजन जो पूरे लेग में हम करते रहे कि यार आई डोंट रिस्पेक्ट दिस टीम गोइंग इनटू द फाइनल। मैं राइडर देखना चाहूंगा दोनों टीमें फुल मैच में खेले और बेस्ट कौन निकले, क्योंकि जो ही जीतेगा मेरे ख्याल से अंकित भाई दैट माइट बी द विनर, दैट माइट नॉट ओवरऑल बट माइट। Pudin, no problem यार, absolutely welcome back, absolutely Pudin part of the family as well. By the way, big up to everyone भाई, सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्या बात है भाई, मैं देख रहा हूँ लाइक्स काफी कम हुए, तो भाई लाइक्स let us do a Champions League level of likes, so let's everyone go there. 150 likes was for the first half, let's have 200 likes tonight absolutely on the stream. साथ साथ में मैंने अभी भी टैग किया श्रेय के चैनल को, तो कैन वी टेक अ मोमेंट एंड गो टू द डिस्क्रिप्शन भाई, डिस्क्रिप्शन के पहले लाइन में माय पैनल्स चैनल्स आर ऑल लिंक्ड, तो आप लोगों को सिर्फ क्विकली सब्सक्राइब बटन दबाना है वहां पर, हो सके तो बेल नोटिफिकेशन बटन भी दबाइए उनके चैनल पे एज वेल एज अस, सो दैट यू कैन गिव अस फीडबैक एंड वॉच अ लॉट ऑफ कंटेंट व्हिच वी ट्राई एंड ब्रिंग इट टू यू ऑलवेज। भाई अगेन आई नो रेफरी वाला चीज, बारसा फैंस आई नो दैट मौके पे चौका मार रहे भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं न्यूट्रल हूं तो मैं किसी का साइड नहीं ले रहा, लेकिन मैं फुटबॉल का साइड ले रहा हूँ। मैं मेरा ओपिनियन मैं क्विकली दूं तो आई थिंक मैं दोनों को येलो कार्ड देता। जनरली मैं बोलता हूँ कि रेफरी बहुत ही सेफ ऑप्शन जाते हैं इन टर्म्स ऑफ या तो दोनों को नहीं देते या तो दोनों को देते, वो गलत होता है काफी बार, यू नीड टू मेक अ डिसीजन। बट इसमें क्लियर था कि कारवाल ओवर एक्टिंग किया था जब ग्रीलिश ने रिटेलिएट किया, लेकिन ग्रीलिश ने रिटेलिएट किया है, रिटेलिएशन हैज अ येलो कार्ड वाला चीज और हाथ उठाया था, वेदर इट हिट हिम और डजंट मैटर। तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि येलो कार्ड नहीं है, बट लाइक श्रेय ने बोला आजकल रेफरीज स्पेशली इन बिग मैचेस लाइक यूएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स यू गॉट टू गिव द बेनिफिट डाउट टू द प्लेयर्स और एक कंटिन्यू करते हैं अनलेस वो एकदम क्लियर एंड ऑब्वियस हो। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट मिनट में भी ग्रिलिश को क्लियर येलो कार्ड मिलनी थी, उसको नहीं मिली क्योंकि वो 40 सेकंड्स के अंडर फाउल किया था, इट वाज अ क्लियर ब्लेटेंट फाउल बाय ग्रिलिश ऑन रोड्रिगो इफ आई रिमेंबर राइट, प्लस कारवाल ने भी की थी इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स लेटर। तो फॉर मी दो बार उन्होंने दोनों किया, तो आई एम वेरी सरप्राइज कि दोनों ही नहीं येलो कार्ड में। Yes, absolutely. Let's get to 150 likes. क्या चेंजेस करेंगे यार, मतलब do you see any changes coming for City?
आई थिंक आई विल लव टू सी महाराज इंस्टेड ऑफ बर्नार्डो। लाइक मुझे लग रहा है कि भाई अगर महाराज आ गए ना पिच पे तो आई डोंट थिंक इतनी स्पेस देने वाले कामाविंगा, क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा फॉर्म पे नहीं है बहुत टाइम से। लाइक तो वो एक चेंज में देखना चाहूंगा पेप को टू ब्रिंग इट ऑन, क्योंकि पेप भी हमेशा के अंदर बहुत लेट कर देते हैं। बिकॉज अंकित में मैं यही कहूंगा, मैनचेस्टर सिटी हैव टू यूटिलाइज सैंटियागो बर्नाब्यू। अगर आपने यहाँ पे अच्छा रिजल्ट निकाल लिया देन आपका एक पैर फाइनल में है। हमने भी 3-4 साल पहले बर्नाब्यू नहीं था, लेकिन अकेडमी ग्राउंड पे हमने रिजल्ट निकाला and I knew we are going through. तो I think Manchester City have to do that and महाराज को लाना ही पड़ेगा। And अगर मान लीजिए 65 मिनट तक हालैंड नहीं चल रहे, why not pull a surprise? Why not bring Alvarez then to game change? उनका प्लान ही तोड़ दो। अगर 65-70 तक गोल ना आया कि वो हालैंड तक सर्विस ही नहीं जाने दे रहे, आप एल्वारेज को ले आइए, आप चेंज कीजिए थोड़ा, बर्नार्डो सिल्वा की जगह एल्वारेज लाके देखिए। लाइक समथिंग हैज टू गिव। But what is it that Real Madrid? By the way, Harjas, thanks for super chat यार, मुझे पता है Harjas is a Manchester United fan. तो obviously he's loving what he's seeing. लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ यार, just 1-0. अभी भी मैं बोलता हूँ advantage Real Madrid for sure. There's no two ways about it. And yes, everyone, let's like the stream. Just Devesh Yadadare. Dheeraj again, yes, looks like it, but it's too early days. Ajinkya, how are you? What a match, Carval. Lucky in the Premier League, he'd been sent off twice. He'd be, I would not say sent off twice, यार. मतलब again, remember. भाई हम भूल रहे, there was a very naughty challenge by Bernardo Silva on, was it Carval itself? Pretty sure there was a naughty challenge by Bernardo Silva. मतलब you can argue that also प्रीमियर लीग में यार कहीं भी आप अगर देखते तो भाई येलो कार्ड मिलता आपको, you would have been under the radar of VAR as well. लेकिन I don't think anyone deserved a red card आज, क्या सच में बोले तो। हाँ, दो बार दोनों you can argue that they your Carvajal as well as your what do you say ग्रिलिश, दोनों ही मेरे ख्याल से दोनों ही डिजर्व्ड 2 बार येलो कार्ड। लेकिन वही है, सॉफ्ट येलोज होते दोनों, तो रेफरी ने डिसाइड किया लेट मी नॉट गो गिव येलो एट ऑल। तो आई विल नॉट टोटली डिसएग्री, बट या एज इन कमिंग डाउन टू द बेंच, मतलब दीज आर सम ऑप्शंस दैट आई एम शोइंग आप लोग को। तो बट अगेन आई डोंट थिंक एक मौका है वेयर रियल मैड्रिड वुड लाइक टू टेक टू मेक अ सब्स्टिट्यूशन। बट अल्वारेज इज गुड पॉइंट जो श्रेय ने बोला, आप लोग पता नहीं क्या बोल रहे हो, आप लोग क्या बोल रहे हो? इफ डू यू थिंक अल्वारेज को अभी आना चाहिए? लाइक देयर इज अ रीजन व्हाई रियल मैड्रिड वो काउंटर कर पा रही है, वो रोकना पहले इंपॉर्टेंट है। यस, मैन सिटी को स्कोर करना है एब्सोल्युटली, लेकिन वो जो 4-5 बार मैंने जो काउंट किया ना, लिटरली 4-5 टाइम्स काउंटर हुआ। एक बार वैल्वर्डे का 1-2 था आपका, 2 बार विनिशियस जूनियर का था, देन कामाविंगा का एक गोल आया ही है, ठीक है। तो आई थिंक ये तो हम काउंट ही कर रहे हैं, और प्लस बेसिकली हाँ मैन सिटी का एक शॉट था विद रॉड्री। तो आई थिंक इफ यू रियली टॉक अबाउट प्रॉपर चांसेस जहां पर गोलकीपर को करना पड़ा और ऑपोजिशन स्ट्राइकर वाज इन अ पोजीशन जहां पर कर सकते गोल, आई थिंक रियल मैड्रिड हैड प्रॉब्ली जस्ट अ कपल मोर चांसेस कंपेयर टू मैन सिटी फॉर श्योर। बट कहां से आ रहा है? मतलब मेरे लिए वो लेफ्ट हैंड चैनल नहीं किया। आप अगर बर्नार्डो सिल्वा को हटा दोगे ना, अगर मारेज को लाते हो, does Mahrez have even half the defensive capability of Bernardo Silva? That's my question. This I agree. तो पर वही है, फिर आपको बैलेंस, अगर वही है बैलेंस देखना पड़ेगा आपको ना फिर अटैकिंगली, क्योंकि अगर आप 1-0 रखोगे, आई थिंक या तो आई थिंक नेथन एके की इंजरी से ना यही प्रॉब्लम होगी। उस साइड पे नेथन एके शायद मेरे ख्याल से होते और वहां पे सेफ्टी attacks भी फर्स्ट आते होती। हैं। नहीं, दोनों आते हैं ना, सेफ्टी भी, वो स्ट्रेंथ भी लाते हैं, और अकांजी ने डिसेंट जॉब किया है, बट यू आर नॉट डीलिंग विद दैट सो मच दैट साइड। तो अगर एकी हो तो मेरे ख्याल से उस साइड से अटैक आते हैं, बॉल्स आते या अबव द टॉप वाले पासेस आते, नेथन एकी करते हैं दो डायगोनल पासेस व्हिच इज अंडररेटेड, व्हिच आई थिंक अकांजी इज नॉट डन इनफ ऑफ, क्योंकि राइट साइड में अकांजी डज इट टू बी ऑनेस्ट, लेफ्ट साइड में इज नॉट नेचुरली लेफ्ट फुटेड। तो वो एक चीज हो जाता है, आई थिंक वहां पर मिस करिए। उससे क्या होता है, बहुत ही स्लो बिल्डअप हो रहा है कंपेयर टू जो रियल मैड्रिड कर रहा है, बूम एक पास हो गया बस खत्म। बर्नार्डो सिल्वा वाला कामाविंगा पे था, okay, Kamavinga. But anyway, so basically Bernardo Silva was also lucky is what I'm trying to say, to not get a yellow card, not sent off, but yellow card all over. Silva's challenge of Kamavinga. Okay, there are moments where City look nervy. Bhai, second half शुरू हो रहा है, Real Madrid even with less position doesn't seem to be letting City score. Fair enough. लेकिन भाई सब लोग क्या बोल रहे हो आप लोग? I want to bring Alvarez and Gundogan off. Wow, interesting. मेरे ख्याल से चेंजेस तो नहीं हुए ना श्रेय? Can you see some changes? I don't think. आई थिंक गुंडोगन को रखना चाहिए, गुंडोगन हैज टू बी केप्ट। अगेन गुंडोगन भी जो गिरा था यार, वो भी मेरे ख्याल से ओवर एक्टिंग थी, सच में बोलूं तो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक एक अंगे तो में बहुत फुटबॉलर्स लॉट ऑफ देम विल गेट ऑस्कर्स, जो एक्टिंग करते हैं ना सारे, इनको एक दिन जरूर ऑस्कर मिलेगा। हाँ, जो काम जो कारवाहल ने किया और जो गुंडोगन ने किया, इट वाज एम्बैरेसिंग ब्रो, दोनों ही, सच में इट वाज एम्बैरेसिंग। बट एनीवे,
मैं बोलता हूँ वहीं पर सिटी हैज काइंड ऑफ मिस द ट्रिक. सिटी शुड बी जस्ट डूइंग व्हाट दे आर डूइंग बेस्ट, बट अगेन हो सकता है दे कम बैक. बट अगेन यार, श्रेय बिग अप यार, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एज ऑलवेज. Absolute भाई pleasure, श्रेय भाई. हैज कम ऑन शॉर्ट नोटिस. अगेन पीपल, आई रिपीट, श्रेय ओपी इन द चैट. सब लोग टेक्स अ सेकंड, सब लोग कमेंट भी दीजिए प्रेडिक्शन का आप लोग. लेकिन डू लेट मी नो इफ यू आर ऑल सब्सक्राइब टू श्रेय एफसी और नॉट. इट इज लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. होपफुली यू आर. श्रेय, सी यू सून ब्रो. Thank you, भाई. Absolute pleasure. Do hit the like and subscribe, people. थैंक्स अ लॉट Thank यार. you, भाई. चलो भाई, फुल टाइम पे होपफुली विल हैव समवन जॉइनिंग अगेन. तो भाई अभी के लिए लेट्स कंटिन्यू. मैं मेरा 4852 में वापस करना है पीपल, रिमाइंड मी प्लीज. 4850 में मुझे वापस शुरू करना है टाइम स्टैम्प. देवेश बोल रहे हैं आई फील अ सिटी गोल नाउ. सिटी स्टार्ट तो की है कॉन्फिडेंटली. मारे शुड बी ऑन द पिच. हाँ लेकिन वही है, इट बी अ रिस्क, क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा डज अ ग्रेट जॉब. आपको दिखाई था. अरे ग्रेट इंटरसेप्शन पे कारवाहल. गुड इंटरसेप्शन में कारवाहल यार. कॉर्नर है. या एक सेकंड भाई, एक तो मैं टाइम स्टैम्प वापस से शुरू करना है टाइम, उससे उसमें कॉर्नर हो जाता है और फिर सडन से ये ब्रॉडकास्टर वाले हटा देते हैं. चलो आ गया वापस टाइम स्टैम्प. मुझे याद से वापस से शुरू करना है 4850 पे. अरे शॉर्ट कॉर्नर खेला यार. कैचिंग प्रैक्टिस कोटवा को. अरे यार, अगेन आई डोंट माइंड अ सिटी गोल टू बी ऑनेस्ट. मैं देख रहा हूँ भाई मैच इंटरेस्टिंग हो जाए. आई यू नो व्हाट, मैं मुझे यूरोप में बेस्ट मैच इस सीजन लगा था जो इंटर बारसा की मैच थी ना. दैट वाज अमंग द बेस्ट मैचेस फॉर मी. हाँ रियल मैड्रिड लिवरपूल भी थी, लेकिन आई थिंक यूरोप में एंड ऑफ कोर्स चेल्सी डॉर्टमुंड. लेकिन आई थिंक जो एज ए न्यूट्रल आपको अच्छा लगेगा ना मैच, इट इज अ क्रेजी मैच यार, इंटर बारसा. ऑल ऑब्वियसली यूनाइटेड बारसा इन यूरोपा लीग. भाई रियल मैड्रिड कीपिंग पोजीशन ऑल ऑफ सडन. क्या हो रहा है? एक सेकंड आ रहा है, क्वेश्चंस पर आ रहा है. जस्ट वांट टू फोकस ऑन 4850. फिर मैं टाइम शुरू कर दूं सर. पीपल कमिंग ऑन कैन मैच माय क्लॉक. ठीक है भाई. सब लोग अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इन केस आप लोग ने एक जन ने मिस कर दिया यार, टू हिट दैट लाइक बटन. एंड इन केस यू नॉट सब्सक्राइब, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कम ऑन. एंड वी हैव टू चैनल्स, डू चेक इट आउट. द सेकंड चैनल इज ऑलवेज लिंक बिलो एज वेल एज द पैनल्स चैनल्स हियर. फर्स्ट लाइन इन डिस्क्रिप्शन हमेशा. सिटी गेटिंग अ थ्रो इन. रियल मैड्रिड कुड नॉट डू कुछ पोजीशन से. रियल मैड्रिड को अभी यार गेयर 3 में आने की जरूरत नहीं यार. रियल मैड्रिड आराम से खेल सकती है थोड़ा. दे जस्ट नीड टू कीप दैट शेप. और एक मिस्टेक आएगा सिटी का, काउंटर बूम और गोल हो जाएगा. मैं बोल रहा हूँ यार, 1-1 देखना चाह रहा हूँ, 2-2 देखना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे लग रहा है ना रियल मैड्रिड गोल ही आएगा. आई हैव अ फीलिंग सेकेंड हाफ में. अब कब आता है डिपेंड्स. इज नॉट व्हाट आई वांट बट व्हाट आई फील. चलो भाई पीपल, आई हैव जस्ट स्टार्टेड द क्लॉक अगेन. दिस इज माय क्लॉक. मैच कर लीजिए सब लोग. थैंक्स मैन देवेश. बिल्कुल. बिग अप यार. थैंक्स मैन देवेश, पुदिन, डेरेन. बिग अप यार. स्पेशल शॉर्टर्स आप लोग. ऑफ कोर्स श्रेय, फतेह, माइकल वो देयर, अनमोल, आसिफ, चंदन, धीरज, मेसीज गोट, अजिंक्य, जोम्स, धीरज, आसिफ. चलो दीजिए आपको. देवेन, तनुज. दैट्स अ गुड पॉइंट तनुज, मैंने मिस कर दिया आपको कमेंट. गुड पॉइंट. रकीब, हाँ फिनिश्ड है बट एनीवे कोई नहीं, विल कम बैक. हरजस ऑफ कोर्स, कुशल ऑफ कोर्स. चलो भाई. अरे भाई गोल आने वाला है. बच गया यार. वॉज इट अ कॉर्नर? डिफ्लेक्शन फॉर श्योर. भाई ये क्या था? क्या था ये? विनिशियस जूनियर और कार्वाहाल और बेंजिमा तीनों मिलकर क्या कर दिए भाई. जॉन स्टोन्स कुड नॉट डू एनीथिंग देयर. कॉर्नर है. वाओ ब्रिलियंट स्टफ यार. रियल मैड्रिड मैन सीरियसली उनका ये गेयर भी है यार. वी डिडंट नो अगेंस्ट चेल्सी. अरे भाई चेल्सी के साथ ये गेयर यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी उनको. बाप रे. सीरियसली मैन, हम हालैंड के बारे में बोलते हैं रोबोटिक है, चीट कोड है.
Real Madrid literally R1 यार. नहीं, फाउल अगेंस्ट Real Madrid. Oh, Real Madrid are playing with Man City now. Literally, they know it's their game. अगर इस पॉइंट से रियल मैड्रिड जीती ना ये टाई, आई स्वेयर दे विल रिग्रेट द चांसेस देव हैड. दे विल रिग्रेट इट. नॉर्मल सिनेरियो में बेंजेमा का अभी तक एक गोल मिनिमम होता है, इफ नॉट टू. अगेन विनीशियस जूनियर, व्हाट अ स्ट्राइक, व्हाट अ ब्रिलियंट स्ट्राइक. कामाविंगा हमने हाफ टाइम में बात नहीं किया उसका बिकॉज वी हैड रिएक्टेड वेल ऑन दैट अर्लियर इटसेल्फ. लेकिन कामाविंगा 1-2 विद मॉडरिच याद है. और अगेन ब्रिलियंट स्ट्राइक बाय विनीशियस जूनियर फॉर द गोल फर्स्ट हाफ में जो आया था. लेकिन अगेन याद रखिए बेंजेमा हैज हैड 2-3 हाफ चांसेस. बढ़िया 1-2 यहां पर भाई. टीबो कोर्टुआ मैन, वर्ल्ड क्लास सेव, वर्ल्ड क्लास सेव बाय टीबो कोर्टुआ. रूडिगर विद अ क्लियरेंस. ऑफसाइड नहीं था क्या? इट वाजंट ऑफसाइड. भाई डिब्रोइना वर्सेस कोर्टुआ यार. It's actually a very good save. Very good save on replay, even more so. Because उन लोगों को मिल नहीं रहा था चांसेस स्पेन में. रॉड्री का तो आइडिया नहीं है मुझे. यप ग्रेट सेव फॉर श्योर. व्हाट अ सेव. वाओ मैन. इट वाज गिवन ऑफसाइड बट मेरे ख्याल से ऑफसाइड नहीं था. इट वाज गिवन ऑफसाइड दो इवेंचुअली, बाय द वे. तो आई डोंट थिंक दैट सेव काउंट्स इन द व्हाट डू यू से स्टैट्स. रूडिगर कोर्टवा में ऑलमोस्ट से कंफ्यूजन होते हुए, बट कोई नहीं. Pep Guardiola, does he look worried or what? होना भी चाहिए यार, to be honest. I can't believe, man, Real Madrid, what they do in knockout. Rodri, definite foul on Vinicius. Sorry, Rodrigo है क्या? Rodrigo मिलेगा, कार्ड मिलेगा. नहीं कार्ड नहीं, खाली फ्री किक है. चलो या नथिंग अबाउट हेट यार, इट्स अ फैक्ट. मतलब नोवेयर क्लोज टू रिप्लेस यार. मेंडी एक सीजन में ही वन द चैंपियंस लीग, यू कैन से दैट, बट ही डिडंट रिप्लेस कोर्टवा मैन. कोर्टवा वाज गुड, ही वाज प्रीटी गुड, लेट्स बी ऑनेस्ट. लेकिन आई रादर हैव अ टीम मैन, दैट्स आल्सो देयर. बहुत ही सेल्फिश है बंदा. रियल मैड्रिड के लिए नहीं है, लेकिन कम ऑन बीइंग द क्लब व्हिच हैज वन 14 चैंपियंस लीग, उसके लिए आप सेल्फिश हो तो भाई क्या ही तो बोले. नहीं है ना. यस, मुद्दन आल्सो अग्रीज. De Bruyne शॉट, ओ भाई लो था, लेफ्ट फुटर, लेकिन कोर्टवा हैड इट कवर्ड. Been a long time, yaar. I don't know. Maybe I don't remember it all. Good point. Again, he has it, and that's the whole point, no? He's improved. भाई पहले तो he couldn't score 3 orders यार. कुशल याद है बेंजेमा क्या बोलता था? वन टू नाइस बाय सिटी. नाइस हालैंड में स्कोर करने वाला पीपल. ओहो, डेविड अलाबा यार, ब्रिलियंट चैलेंज, ब्रिलियंट टैकल. डेविड अलाबा था this बार. Rudiger actually did badly in that moment. Easily beaten, but कोई नहीं. अलाबा, brilliant challenge, very important challenge. Again, I think arguably Haaland should have taken a first time shot, knowing Haaland. अच्छा, लिवरपूल के साथ आउटसाइड द बॉक्स है. थैंक्स इंडी फुडी का.
Bad by City, bad corner. खाली short corners ले रहे हो. You need to do a plan B. City need to change that approach. Why we have seen two brilliant challenges, one by Ruben Dias, one by David Alaba, and one brilliant goal by Vinicius Junior, of course, thanks to Kamavinga's assist. Benzema, was he fouled? I don't know. City needs to be better in set pieces. Maybe वो रूडीगर है ना आज, इसलिए आज they're just doing that way. Rodri playing it wide to Walker, Walker to De Bruyne, De Bruyne through ball खेल लिया almost. Kamavinga, brilliant by Kamavinga, bro. Awesome touch by Kamavinga, very important touch in fact. Through ball होता नहीं तो मस्त. Madrid looks hungry. City are getting into desperate mode, especially Rodri. Fair enough. In fact, Grealish भी यार अगर हाफ टाइम नहीं आती तो मुझे लगता था Grealish would have been sent off. He was losing it. यार मैड्रिड में है यार, कुछ तो है. कुछ तो है भाई गड़बड़. अब देखो मैड्रिड आराम से जब बॉल है तो सेकंड गियर में खेलेगी. सडन से स्विच ऑन होगा उनका. विनिशियस के बाद पास बॉल आता है तो कुछ होता है. कार्वाहाल, बेंजेमा, विनिशियस राइट हैंड साइड. इंटरेस्टिंग भाई, लेफ्ट फुटेड. ओ हो ऑलमोस्ट ब्रो. विनिशियस जूनियर ट्राइंग टू अप द क्राउड यार. भाई कॉर्नर है भाई, रॉन्ग फिट हो गया था एडरसन यहाँ पर. आई थिंक आई विल बर्नार्डो सिल्वा की जगह. आई वुड नॉट से, आई वुड से दैट मे बी गुंडोगन. या दे जस्ट माइट. एक और कॉर्नर यार, डिफ्लेक्शन. एक और कॉर्नर. ओ माय गॉड. रोड्रिगो इस बार. यू कैन आर्ग्यू दैट रोड्रिगो has actually had a थोड़ा सा ठंडा गेम. भाई ये ना गेम जहां पर यू विल नॉट से दैट रियल मैड्रिड प्लेयर्स हैव रियली स्टूड आउट, फिर भी ऐसा लग रहा है कि सब चांसेस बन रहे हैं रियल मैड्रिड के ही यार. व्हाट इज दिस? दिस इज लाइक लिटरली चीट कोड यार. मतलब आई डोंट मीन इट लिटरली, आई मीन एज अ कॉम्प्लीमेंट. हैंडबॉल था क्या? एक सेकेंड. विनिशियस जूनियर हेवी टच. हैंडबॉल अपील है बट नो, नॉट अ हैंडबॉल फॉर मी. कॉर्नर है, कॉर्नर है. या डेफिनेटली हैंड्स विद द साइड है. इट्स डेफिनेटली अ कॉर्नर जॉन स्टोन्स का. तो रियल मैड्रिड आर रोलिंग दिस मैच, आई एम टेलिंग यू. भाई ये मैन सिटी का काउंटर आ रहा है क्या? क्या बोल रहे हो? वन ऑफ अस इज लाइकिंग इट. What a free kick bro, what a corner. कोई नहीं, विनिशियस जूनियर छक्का मार दिया. Oh my god, I envy the Real Madrid fans bro. I don't often say these things. Man, this is like PlayStation stuff here, literally. भाई अब देखो, the tables have turned. Real Madrid आराम से क्रूज कंट्रोल में. They are trying to keep possession. They don't want to, मतलब इतना आप प्रेशर नहीं झेलना चाह रहे तो आराम से खेल रहे यहां पर अगेंस्ट रॉड्री. फ्री किक क्या? रॉड्री को येलो कार्ड कैसे नहीं मिला तब? ठीक है, आई वुडंट गिव अ येलो कार्ड फॉर दैट. लेकिन हाँ, यू कैन आर्ग्यू दैट रॉड्री और ग्रिलिश एज वेल एज कार्वाहाल तीनों ही लकी है नॉट टू बी ऑन येलो कार्ड, एज वेल एज बर्नार्डो सिल्वा एक्चुअली. मैड्रिड इज ऑन टॉप ना, बिल्कुल.
I think definitely I can see Alvarez or Mahrez coming on, one or the other or both. Phil Foden might be an interesting one as well, by the way. I know ज़्यादा फुटबॉल खेला नहीं है recent months में compared to others, लेकिन I think Phil Foden makes sense in this case क्योंकि वो एक he gets into that spaces, no, which probably he can and Alvarez can compared to a Mahrez. Mahrez kind of obvious है, so you can defend against that better. भाई वो सब गेम्समैनशिप है. एंचेलोटी इज कूल एज अ cucumber, bro. आई एम टेलिंग यू. ब्रिलियंट टच बाय रोड्रिगो. बेंजेमा बेंजेमा क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा. ओहो, क्रॉस किया सेंट्रली. हैंडबॉल. Valverde is claiming a handball of Grealish, but again ball hit to hand. Nah, not a penalty. Not a penalty, people. Not a penalty. Real Madrid not getting it. अरे यार, Gundogan has to be subbed यार. Gundogan losing the ball. Bad loss of possession. बहुत गंदा था ये वाला. ओहो, Kyle Walker important touch. Benzema should have done better. Passing it to Kyle Walker, थोड़ा सा cleanly करना चाहिए था उसको. Time था उसके पास. लेकिन भाई Gundogan losing the ball, I think it's time to sub Gundogan. Why not Bernardo? Because Bernardo does multiple things along with taking free kicks. Interesting, Pudin, interesting. Rooney prediction in the mud. Absolutely, bro. Absolutely in the mud. डेफिनेटली एक बैटरिंग तो नहीं है, वो तो मैं लिख कर दे सकता हूँ. एतिहाद में भी मैं बहुत ही सरप्राइज होऊंगा अगर सिटी बैटरिंग करती है. ओ, फार पोस्ट में सिल्वा था लेकिन बिट टू फार. सिटी लुक्स कंफ्यूज्ड कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है. आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड ना, आई थिंक श्रेय ने बोला था कुछ ज्यादा ही रेस्पेक्ट दे दिया था. आई थिंक दैट इज समथिंग दैट मे बी आई डिडंट एंटिसिपेट फ्रॉम सिटी. At times, I think they could have taken the game much more quicker. Over the top passes, again, Akanji might not be a left footer, लेकिन उसको try करना चाहिए था. They wanted to keep possession. Bernabeu का atmosphere, man. I have to give it a big thumbs up. People, again, big up यार for everyone joining, especially the ones who were there in the other stream on Almighty Sports Plus भी आज. यहाँ पर City playing riskily from the back. चलो, just about safe. Real Madrid winning the ball back. Grealish losing it this time around. कॉर्नर जीता है भाई रोड्रिगो ने. भाई रोड्रिगो विनीशियस जूनियर क्या मिरर इमेजेस है क्या एक दूसरे के. व्हाट इज दिस मैन. इट्स ऑलमोस्ट अनफेयर. ओह माय गॉड. पता नहीं यार. आई थिंक कहीं ना कहीं ड्रॉज भी मैटर करते हैं ना. मीटिंग बायर्न म्यूनिक एंड देन रियल मैड्रिड इज नॉट इजी, राइट. गुंडोगन नाइस टच दिस टाइम. भाई हालैंड का आ सकता है गोल. गंदा गंदा बर्नार्डो सिल्वा भाई. बैड वन. शुड हैव डन बेटर. मतलब मैंने प्रेडिक्ट तो वही किया था मुदित, लेकिन देख लेट्स सी. मुझे लगता है रियल मैड्रिड का आ रहा है गोल एक. कामाविंगा यहाँ पे बेंजेमा देते हुए. बेंजेमा नॉट इंटरेस्टिंग शॉट. देवेश बोल रहे रोड्रिगो इंडियन लगता है. एक्चुअली a lot of Brazilians kind of look like that way. Yes, talk about Bayern. उससे अब पेनल्टी मांग रहे यार. एंचेलोटी, कम ऑन मैन, गेट अ ब्रेक. As much as I respect Ancelotti, bro, you're not asking penalty for those, are you? 25 minutes left. No changes. Interesting.
By second after it's all been Real Madrid only, yaar. बाकी टीम्स को खेलना चाहिए, यूसीएल में एक नया ट्रॉफी होना चाहिए भाई. हु विल कम सेकंड? क्रूज नाउ क्लेमिंग अ फाउल अगेंस्ट डी ब्रुयना. भाई बहुत ही अपील ज्यादा है, ज्यादा नहीं कर देगा रियल मैड्रिड? मैं तो न्यूट्रल हूं फिर भी बोल रहा हूँ. व्हाट अ डाइव बाय क्रूज मैन, सीरियसली मैन, दैट्स अ डाइव. क्रूज इज ऑन अ येलो पीपल. Seriously, man, Cruz should have got a second yellow in my opinion. That's a dive. That's a dive, man. Honestly, मैं neutral हूँ भाई. Real Madrid fans know it. Fact बोल रहा हूँ. That's a dive. Cruz should have got a second yellow and should have got sent off. Man City fans interesting रहेगा. What your take is? Me as a neutral thinks that. क्या बोल रहे हो आप लोग in the chat on that point? कामाविंगा तो भाई लेफ्ट बैक भी खेल रहा है. Imagine. That's the best part. Again देखो कामाविंगा. लेकिन bad pass. Giving it to Rodri. Rodri to Grealish. Grealish will run at people. One to खेला rather. Gundogan. Goal! Oh man! What a strike by De Bruyne, yaar! Kevin De Bruyne scores, man. City are City, man. Bhai, it's not over. It's not over, man. Remember, 4 मिनट पहले 3 मिनट पहले भी मैंने नहीं बोला था क्रूज शुड हैव गॉट अ सेकंड येलो फॉर डाइविंग इन माय ओपिनियन. बट सिटी डोंट केयर, दे गो ऑन विद द फुटबॉल. एंड यहां पर व्हाट अ मोमेंट यार भाई. रॉड्री विनिंग द बॉल, मस्ट गिव इट टू रॉड्री. रॉड्री ने शुरू किया. अगेन यू कैन आर्ग्यू दैट कामाविंगा गेव द बॉल अवे एज मच एज हमने कामाविंगा को प्रेस किया है. कामाविंगा पास दैट एट रॉड्री वन इट, रिमेंबर. तो कामाविंगा गेव द बॉल अवे, रॉड्री वन द बॉल. यहां पर 1 सेकेंड चाहिए उनको, ग्रिलिश को बॉल मिला, सेटिंग अप with a De Bruyne. What a brilliant strike, assisted by last Ilkay Gundogan, I believe. Yes. Oof. भाई अभी तक एंचेलोटी और को आर कंप्लेनिंग. टू बी ऑनेस्ट, रियल मैड्रिड कैन नॉट कंप्लेन. अगेन गोल होते भाई सब लोग ड्रॉप हो गए क्योंकि आप लोग चाह रहे हो टू सी द मैड्रिड फैंस रैंटिंग. आई अंडरस्टैंड दैट. लेकिन थैंक्स टू द close to 10 people who are watching us here. Much love for you guys, because at some point even we know football and we know how to react. And De Bruyne, what a story, man. What a story, scoring against Courtois. Bullet, absolute bullet. Look at De Bruyne's expressions right now. Look at his expressions, man. He's a man on a mission. I don't know why Madrid are complaining. They are lucky that Cruz did not get a second yellow for diving. Personal opinion mera. Again, bhai, you have to say Vinicius Junior, De Bruyne, difference makers in this game. Period. Yes, man, sorry. I have to admit, I asked where was De Bruyne first half. Second half, he just takes a second, and that is De Bruyne for you. बिल्कुल बिल्कुल चंदन, आपने बोला था भाई. अगेन जो भी लोग आ रहे हैं भाई, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन. डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन. अगर आपने नहीं मारा है लाइक बटन अभी तक, ठेंगा जो आपको दिखता है. ठीक है, तो लेट्स हिट दैट. वी आर ट्राइंग टू कीप आवर स्पिरिट्स हाई ऑलवेज, नो मैटर व्हाट. ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टीज. थैंक्स फॉर द पीपल ऑलवेज सपोर्ट अस एंड फील अस फैम. अगेन कामाविंगा, वेरी वेल डन ऑन द नाइट. आई मस्ट एडमिट कि कामाविंगा की गलती थी. कामाविंगा pass that in midfield, you don't do that. आपको, if you're a fullback, you're told that a lot of times. You don't pass it to midfield the way that he did, blind pass. Rodri caught hold of that and then bus boom. एक तो इतने सारे कार्ड्स मांग रहे हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा मुझे. बट एनीवे इट्स ओके. हाउ डज इट मैटर? व्हाट डू आई थिंक? I think it's a very soft foul that Madrid won. Anyway.
क्रॉस आया रियल मैड्रिड का, लेकिन कुछ हुआ नहीं उससे. Again, people, whoever watching, remember you can always quote tweet my tweet. Carvajal caught. भाई आई थिंक रियल मैड्रिड लूजिंग द प्लॉट यार. बहुत ही प्ले एक्टिंग कर रहे हैं, या बेसिकली डिमांड कर रहे हैं कार्ड्स के लिए. गुंडोगन को कार्ड मिल गया है, अब तो डेफिनेटली ही विल बी सब्ड. बाय द वे, क्रेडिट टू पेप यार, उसने चेंज नहीं किया, नहीं गॉट अ गोल. 67 मिनट गोल बाय डी ब्रुयने, 36 मिनट गोल बाय विनीशियस जूनियर, रिमेंबर. लेकिन अभी तक चेंजेस नहीं आए हैं. इट इज 72nd मिनट दैट वी आर इन राइट नाउ पीपल. सिटी एडवांटेज, आई वुड नॉट से सो देवेश, आई वुड नॉट से सो. अभी भी मैं बोलता हूँ रियल मैड्रिड रिग्रेट जरूर से करेगी दैट दे हैड आर्गुबली द बेटर चांसेस और हाफ चांसेस. बट रियल मैड्रिड के लिए एट ड्रॉ एज वेल, अगर ड्रॉ है ना, इफ इट एंड्स ड्रॉ, आई थिंक एडवांटेज रियल मैड्रिड है, डिस्पाइट इट बीइंग एट एतिहाद. मैं बोल रहा हूँ. हाँ, आई नो इट्स अगेंस्ट द फुटबॉलिंग रूल्स, बट दैट्स व्हाट रियल मैड्रिड डू टू यू. अभी ना व्हाट्सअप यार, क्या हाल है? अभी लेकिन 2 और गोल है तो मजा है यार. छक्का मार दिया भाई अलाबा ने. अलाबा एक्चुअली अच्छा फ्री किक टेकर है, मस्त से, बट कोई नहीं, होता है. अलाबा हैज एन अलोंजो मोमेंट, इफ यू नो यू नो. इट इज अ परफेक्ट स्ट्राइक बाय डी ब्रुयने, परफेक्ट. भाई आई रिमेंबर एक गोल सेस फैब्रिगास ने से मारा था इयर्स अगो. आई थिंक इट वाज प्रोबेबली 2006 और समथिंग लाइक दैट, 2006 और 7, बहुत साल पहले था यार, जो फिर सेस फैब्रिगास ने मारा था आर्सेनल के लिए. अ ब्रिलियंट गोल लाइक दैट फ्रॉम मिडफील्ड, और भी दूर था इनफैक्ट. व्हाट अ स्ट्राइक. Thiago, yes, of course. Haaland स्माइल मार रहा है यार बहुत. I must say, Rudiger has handled Haaland well. ओहो, क्रॉस फार पोस्ट में, लेकिन जस्ट अबाउट स्टोन्स मिस टाइम्स द हेडर और गया गोल के लिए. ओ ऑफ कोर्स यार, वो तो हम भूल नहीं सकते. वो भी at what point, what was the occasion bro, Abhishek? It was a very important occasion though, you cannot forget. Alex against Liverpool, Alex against Arsenal, who can forget those days yaar. बट सीरियसली मैन, यहाँ पर आई थिंक देवेश बोल रहे थे एडवांटेज सिटी एज इट स्टैंड्स. मतलब डू यू गाइस अग्री? मैं बोल रहा हूँ अभी भी आई थिंक सिटी नीड वन मोर गोल, तो डेफिनेटली एडवांटेज सिटी है. अभी आई डोंट थिंक यू कैन से एडवांटेज सिटी. इट्स डेफिनेटली मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 50-50. इनफैक्ट मैं बोलूंगा 51 टू रियल मैड्रिड, 49 टू सिटी एज थिंग्स स्टैंड, डिस्पाइट रियल मैड्रिड गोइंग अवे सेकंड लेग में. व्हाई? बिकॉज रियल मैड्रिड काउंटर अटैक ही खेलती है, मतलब वो नेचुरल गेम है, उनको चेंज नहीं करना है. प्लस वो काउंटर अटैक बहुत ही प्रिसिशन के साथ खेलती है, वो द टॉप खेलती है. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट सिटी डू नॉट वांट. Yeah, David Luiz in World Cup 2014. David Luiz against Fulham. That is an underrated free kick. But just because it's Fulham, people don't remember. Yes, against Hull, exactly. In fact, Drogba has had some very good free kicks. People will remember, hopefully. Okay. भाई 76 मिनट हो रहा है, अभी तक नो चेंजेस. आर वी सरप्राइज्ड और नॉट? आर वी सरप्राइज्ड? आई एम सरप्राइज्ड. गुंडोगन इज ऑन येलो कार्ड, क्रूज इज ऑन येलो कार्ड. और क्रूज गुंडोगन यूजुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उनको 90 मिनट्स कंप्लीट करने के लिए. एनीवे, सरप्राइज्ड. लेकिन वो ये नो वन वांट्स टू बज यार. इट्स वर्किंग टिल इट्स वर्किंग. बहुत ही एक आयरॉनिकली एक चीज बोलूं, फर्स्ट हाफ आई नो पोजेशन फुटबॉल इज नॉट द डोमिनेंस, लेकिन
फर्स्ट हाफ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एटलीस्ट सिटी डोमिनेट की, लेकिन रियल मैड्रिड हैड द बेटर चांसेस एंड स्कोर्ड. यहाँ पर देखो वही चीज हुआ है मैड्रिड के अगेंस्ट सेकेंड हाफ में. इवन कुशल बोल रहे हैं. हाँ पुदिन बिल्कुल भाई. लास्ट के 14 मिनट है, अगर कोई भी टीम यहां स्कोर करती है डेफिनेट एडवांटेज. लैम्पार्ड वर्सेस एवर्टन चेल्सी ऑफिशियल कमेंटेड ऑन. Oh, interesting. Very nice. Yeah, but it's a Champions League, and Champions League में basically when you are on yellow card, you don't want to take a chance. तो ये मैं बोल रहा था with Gundogan and Cruz being on yellow card, or they kind of lack the pace, ना. Last seconds में never 1 second you get a red card बस. Plus, to be honest, you can almost argue Mahrez is unlucky and not to be in the starting 11. The form is shown last few months में for such a big game. Yep. Valverde was a Akanji, not a contest, लेकिन गंदा क्रॉस ऊपर देखकर क्रॉस करना था भाई. क्या किया वेलवर्डे. यार नहीं, वो सेकेंड हाफ के लिए बाकी रखेगा भाई इन माय ओपिनियन. कामाविंगा, आई एम नॉट लाइकिंग. ये लोग गिर पड़ रहे हैं इतना सारा, मतलब आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी मैन एट टाइम्स. रियल मैड्रिड ठीक है भाई, ये फ्री किक था. लुक एट द वे कामाविंगा फेल डाउन, रोल्ड ओवर. व्हाट वाज रबिश वाज दैट मैन. सॉरी गाइस, मैं रियल मैड्रिड फैन नहीं हूं, मैन सिटी फैन नहीं हूं भाई, फुटबॉल फैन हूं. मैं बोल रहा हूं व्हाट वाज दैट. होता है नो, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, बट स्पेशली व्हेन यू आर चेजिंग द गेम यू डोंट डू दैट. कामाविंगा. Oh, what a save by Edison! What a save! Benzema header, bro. Diving right arm save by Edison. I think it was free. It was offside. Benzema would have been offside. Just. भाई सब लोग जो भी यहाँ पर है, अगेन रिमेंबर द लाइक टारगेट ऑन द स्क्रीन दैट यू सीइंग. 200 लाइक्स अपने को करने आज. कम ऑन गाइस, कितने लाइक्स हुए भाई? इफ एनीवन कैन हेल्प मी आउट, लेट्स गेट टू 200 लाइक्स. And definitely, if you're not subscribed, consider subscribing to the channel. The target is getting to 10K, remember, by summer. Before summer, rather. Summer तो शुरू हो गया. मतलब when I mean summer, I mean the transfer window starting. Anyway, he lost his balance, his first tackle. Come on, yeah. He lost his balance, but I think कुछ ज़्यादा ही गिर रहा है. देखो, what a challenge, man. Bad challenge. Missed time, लेकिन bad challenge पे कामाविंगा. Again, आप लोगों को लग रहा होगा भाई I'm against a certain team, but no, I'm just feeling what I feel based on the football. Proper neutral हो आज तो. Rodri, bad challenge on him by कामाविंगा. कामाविंगा येलो कार्ड पीपल. क्या बोल रहे हो आप? नो चेंज अभी भी. कामाविंगा क्रूज ऑन येलो कार्ड्स. हाँ अभिषेक, मैं एक्चुअली वही मैं बोल रहा था, क्योंकि मैं भी काफी बाहर रहा हुआ हूँ ना. मेरा भी वही आदत है. यू आर राइट एक्चुअली. फॉर मी ऑल्सो, मतलब मन में रहता है कि समर तो भाई जुलाई से शुरू होता है ना. एग्जैक्टली. बट एनीवे, द टारगेट इज लेट्स गेट टू 10K by June end, or 9K by the time we see the finals, you know. Let's get to 9K before that, in fact. I think a lot of people deserved yellow cards. I won't say anyone deserved a red card though. I don't agree with that comment. कामा का यही चीजें है, go on in tackles like that. Again, बहुत यंग है यार, हम भूल जाते हैं काफी बार. भाई 20 साल का है बंदा, 20 साल का, just turned 20. Wow. Anmol Bode, City should have dominated more in the attack with the team and style they have, like Barca in Euro Super Cup final. I know what they missed. I think fast passing is what they missed. They needed to try that fast passing with Real Madrid, you know, not being able to handle that. जो Barca were able to do, prime Barca. नहीं यार, क्यों करूंगा मैं सिटी को? मैंने भाई
प्रीव्यू में बोला, अपने प्री मैच में बोला यार, कम से कम 3 घंटों के लिए बोला है, मेरे प्रिडिक्शन में भी बोला है दैट कहीं ना कहीं दोनों साइड से खाए यार, मैं दोनों साइड को नहीं चाहता जीतना, टू बी ऑनेस्ट। मिलान को जा रहा हूँ यार मैं। असेंसियो कमिंग ऑन। यस एग्जैक्टली। सेकंड येलो, यू कैन आर्ग्यू दैट ग्रिलिश एंड कार्वाहाल दोनों को ही मिल सकता था, लेकिन आयरनी क्या है, दोनों को शायद एक भी नहीं मिला है। वाओ वाओ। Yeah, exactly, Abhishek. That's Real Madrid for you. Mariano, without playing 20 minutes of football, he's completed football, bro. Absolutely madness करती है Real Madrid. चीट कोड हम बोलते हैं मैन सिटी प्रीमियर लीग में, भाई रियल मैड्रिड इज द रियल चीट कोड एक्चुअली, एटलीस्ट फॉर द लास्ट डेकेड. लास्ट 8 मिनट्स, रिमेंबर अभी जो भी कंसीड करेगा दे आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, तो बहुत ही केयरफुल अब चल रहा है. 1-1 आई थिंक, टू बी ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट दोनों टीम इतने नाखुश नहीं रहेंगे 1-1 से. ओ यस एब्सोल्युटली, 2011 प्राइम बारसा, एब्सोल्युटली क्रेजी. मैं तो आर्ग्यू करूंगा मोरिनियो रियल मैड्रिड वर अंडररेटेड, नॉट सेइंग बेटर बट जस्ट अंडररेटेड. अभिषेक बोल रहे 1-1 रहना चाहिए भाई, 2-1 ला दो अभिषेक, व्हाई नॉट. बाय द वे सम रियल मैड्रिड फैंस सेइंग दैट लूका जोविक को आपने जल्दी रिलीज कर दिया, मतलब दैट इज समथिंग दैट आई एम हियरिंग. पावर प्ले मोड आया भाई, रियल मैड्रिड यू नो दे कैन डू इट, लेकिन वही है, मैन सिटी अब कंट्रोल रख रही है जो सेकंड हाफ की शुरुआत में रख रही थी रियल मैड्रिड, रिमेंबर. सेकंड गियर में खेल रहा है यार मैच दोनों अब. हाँ भाई मैं तो चाहता हूँ 2 गोल हो जाए यार, टू बी ऑनेस्ट एज ए न्यूट्रल. इट्स अ बैड रिजल्ट यस ऑन पेपर, कंसिडरिंग कि बर्नाब्यू में आपने एक ड्रॉ ही लिया है, बट आई वुड स्टिल से बिकॉज रियल मैड्रिड आई वुड से एडवांटेज रियल मैड्रिड. वेरी स्ट्रेंज लगे आप लोगों को, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ 51 मैड्रिड को, 49 सिटी को. बट हाँ बहुत क्लोज है भाई. क्रूज फाइनली बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय चुआमेनी. सेकंड लेग दो दो हफ्ते बाद में है क्या? चेक करते यार, मैं चेक नहीं किया, सॉरी. चेक कर लेते हैं, आप पूछ रहे हो तो चेक कर लेते हैं. मेरा क्या ना बाकी विंडोज ज्यादा ओपन करता हूँ, पता नहीं हैंग होने लग जाता है व्हेन आई यूज द ओबीएस ना. जस्ट ट्राई एंड अवॉइड दैट, बट लेट्स सी एक सेकंड. वाओ इतना स्लो है मेरा सिस्टम. नहीं यार नेक्स्ट वीक ही है, इंटरेस्टिंग, नेक्स्ट वीक ही है, सॉरी माय बैड. ओहो रॉड्री डेफिनेटली escaping a yellow card इस बार. हाँ, Kamavinga win the ball. I don't think it's a. I think referee's got the right. हाँ 18 में, थैंक्स मैन अभिनव. हाँ नेक्स्ट वीक ही है, नेक्स्ट वीक ही है. भाई अगेन यू कैन आर्ग्यू Kamavinga and Cruz for driving, they could have got a card. Okay, Silva getting a yellow card, but please tell me, when Vinicius Junior is showing like this to the referee, by the letter of law, shouldn't he get a yellow card as well? पता नहीं यार, अलग रूल्स हो गए क्या आजकल? कारवाल का एस्केप था, ग्रिलिश का एस्केप था, क्रूज का एस्केप था,
देन रॉड्री इस बार नहीं, लेकिन पहली बार यू कैन से मे बी एस्केप था। कहीं ना कहीं रेफरी हैज लेट इट गो। रेफरी बहुत ही ज्यादा लीनियंट रहा है। The rain is wanting fights. Yes. Well defended by City. कॉर्नर है यार, वाओ। रूडिगर भाई साहब। भाई ऑनेस्टली ना, मुझे तो आई एम लाइक feeling drowsy, man. It's been a tiring couple of days, man. Seriously, I have to say. But again, big up to everyone being here, यार। अगेन भाई लास्ट 4 मिनट में मुझे जगा दो बाई हिटिंग स्कोर 2 goals सब लोग, सिटी एंड मैड्रिड। नाचो कमिंग ऑन, इंटरेस्टिंग फॉर मॉड्रिच। तो इसलिए कामाविंगा मिडफील्ड में जा रहे। नाचो विल बी मूव ऑन टू लेफ्ट बैक। डरेन तो बोल रहे 50-50। मिलिटो अवेलेबल होगा लगभग। यू कैन से दैट रूडिगर डिजर्व्स अ चांस इन द सेकंड लेग द वे ही हैज डेल्ट विद हालैंड। इट इज अभिषेक, इट इज जस्ट, मतलब मैं बोलूंगा तो वही है। इफ आई से आई एम इन ट्रबल ब्रो, अभिषेक, यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू से। But again, the guy scored a wonderful, wonderful goal, yeah, Vinicius Junior. Plus, first half, mein to I think he stood out. He definitely stood out, Vinicius Junior, along with Kamavinga, of course. Lekin Kamavinga, I must say, for the goal of Man City, mistake थी, you can argue. Plus, he's on yellow. भाई अभी तक तो मैन ऑफ द मैच अगर मैं देना चाहूँ ना, इंटरेस्टिंग रहा है। आई नो कोटवा हैज मेड अ कपल ऑफ वेरी गुड सेव्स, बट आई वुड स्टिल गिव इट टू, हाँ यार, कामाविंगा को ही देंगे यार, डिस्पाइट दैट मिस्टेक, अनलेस आप लोग अलग बोल रहे हो। डिब्रोना वंडरफुल गोल एज वेल, लेकिन मैन सिटी में ऐसे कोई मैन ऑफ द मैच जैसा परफॉर्मेंस किसी ने दिया नहीं है। डियाज विद अ ब्रिलियंट इंटरसेप्शन, यस। Yeah, but maybe just Courtois or Kamavinga or Vinicius Junior for me. Pudin बोल रहा है Vinicius Junior. Oh yes, yes, Pudin, I know. Oh, Grealish had Haaland running, लेकिन he missed it. कोई नहीं, कोई नहीं डरे यार, part and parcel है। Why is the top Premier League goal scorer Haaland not playing? Nah, yaar, the thing is, you cannot just score a goal by your own all the time, yaar. You need players to pass. You need your opposition defense to make mistakes at times. But I think he's good enough here. It's just the fact that Rudiger has dealt with him, and at the same time, I think Kamavinga is very well done from the right hand side of City's attack. Left side से Grealish hasn't taken his man much. You can argue that almost. तो अगेन वेल डन टू कारवाल भी। कारवाल अंडररेटेड है, मैं हमेशा बोलता हूँ। अभिषेक तो बोल रहे कामाविंगा, लेकिन वो ये मिस्टेक भी अभिषेक कामाविंगा की थी। उसने बॉल दिया जो रॉड्री took the ball and then passed it to Grealish and then Gundogan and then De Bruyne. Is the Real Madrid goal coming by 90th minute? You know what happens? लेकिन फर्स्ट लेग ही है। एक सेकंड, बेंजेमा जो थोड़ा सा, ओ ऑलमोस्ट, व्हाट अ सेव, व्हाट अ सेव बाय एडिसन, व्हाट अ ब्रिलियंट शॉट बाय चुआमेनी। भाई पीपल जो भी चुआमेनी को हेट दिए थे, मुझे मालूम है कल की स्ट्रीम में रियल मैड्रिड फैंस वर by giving him गाली, भाई he's not even half of Casemiro and whatnot. भाई Casemiro will be proud of this shot by Chouameni, यार, what a brilliant shot, ball swirling around. Kamavinga the cross, नहीं, not enough. Rudiger on the far post couldn't do enough. Vinicius Junior with a shot, लेकिन well defended by City, man. Three minutes of stoppage time, भाई, what a finish. ओ भाई, सिटी हरा रही है काउंटर। De Bruyne with a brilliant goal, लेकिन कैचिंग प्रैक्टिस दिया कोर्टवा को भाई, यार। Yeah, Courtois has had a very good match as well as Edison. क्या हुआ मैच में? क्या हुआ? रुक क्यों गया मैच?
यार, what happened? Referee man, really man. Anyway, Chouamani यार, what an impressive shot. अभी तक वो एडिसन क्या सोच रहा होगा जब वो स्वर्ल कर रही होगी बॉल. वाओ. Vinicius Junior, brilliant run. Bhai, Kamavinga on the left hand side is free. John Stones taking him. Let's see who takes on who. Kamavinga with a shot with the right foot, lekin nahi, well defended by, blocked rather by City. Oh man. Oof. Imagine first leg या तो second leg क्या होगा. आई नो काफी टाइम एक टीम कंट्रोल कर रही थी, वो भी हुआ है मैच में. फर्स्ट हाफ में इट वाज मैन सिटी, सेकंड हाफ में इट वाज रियल मैड्रिड आयरॉनिकली. बट आई मस्ट से एज ए न्यूट्रल आल्सो आई हैव लव्ड दिस मैच. Kamavinga made a mistake now midfield से, losing the ball. Haaland definitely fouled, but Haaland gets up. रन यहाँ पर De Bruyne, नहीं 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 नहीं. What an awesome finish, bro. First leg का. एक्चुअली वैल्वर्डे भी काफी अच्छा किया है, मतलब कहीं ना कहीं वो अंडररेटेड रहता है यार, हमेशा अंडर द रेडार कर देता है भाई इतने सारे किलोमीटर्स. बेंजेमा ड्रॉपिंग डीप. It's the last minute, people. Asensio, obviously the substitute for Rodrigo, came on. क्या विनिशियस कर सकता है कुछ? 30 seconds last. What will he do? He crosses it back to Carvajal on the right hand side. Carvajal almost trips himself. Kamavinga, short leg 100% नहीं. Kamavinga gives it here. Corner है. नहीं. It's a goal kick. हो गया बस. I think Nacho, not a good effort, but कोई नहीं. Yeah, Rudiger also had a brilliant match, must say. He did a job for sure. But again, did he have too much to deal with in terms of ball? Nahi. With player, yes. By first half is done in the entire tie. It is 1-1. Yes, prediction for a change has come true. By yes, 1-1 हुआ है. बहुत लोगों ने बोला था. क्या बोल रहे हैं? How is a guy this big gets up so quick and run? The guy is beast, seriously. किसके बारे में बोल रहे हो भाई? कामाविंगा कि कारवाहल? लेकिन अगेन नाइस गेम अंकित. ऑलरेडी हाइप फॉर सेकंड लेग. बिल्कुल भाई, अच्छा लगा यार सच में. मतलब आई लाइक द गेम. अगेन आप बोल सकते हो द 3-all गेम काइंड ऑफ 2-all वो बेटर थे. बारसा मैन यूनाइटेड, इंटर बारसा इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन टाइज इस सीजन में. 2-5 रियल मैड्रिड लिवरपूल ऑफ कोर्स. लेकिन मेरे ख्याल से टैक्टिकली काफी अच्छा लगा मुझे गेम. द फैक्ट इज रियल मैड्रिड ने जो प्ले स्टेशन मोड ऑन किया है ना at times, that kind of turns you on almost. ठीक है. फिर मैन सिटी, मतलब आउट ऑफ नोवेयर लग रहा था एकदम ब्लीक, फ्यूचर इज ब्लीक लग रहा था. वापस से मैन सिटी डूइंग मैन सिटी थिंग्स इन द चैंपियंस लीग. लेकिन नहीं. व्हाट अ मोमेंट अगेन. कामाविंगा, मतलब आर्ग्यूबली भी नहीं बोल सकते. मतलब अगर आप वो एक मिस्टेक छोड़ दो ना, कामाविंगा वाज द मैन ऑफ द मैच. बट द फैक्ट कि वो एक जो गोल मारा सिटी ने, बहुत इंपॉर्टेंट गोल था. और वो गोल शुरुआत आप बोल सकते हो कामाविंगा की बॉल थी इन मिडफील्ड, विच रॉड्री वन गेव इट टू अ ग्रिलिश गेव इट टू अ गुंडोगन गेव इट टू डेफिनेटली दैट De Bruyne बुलेट स्ट्राइक. लेकिन अगेन, could Courtois had saved? Probably not his answer. Clearly no. In fact, Ederson last के minutes, in fact last के seconds almost, you can say Chouamani getting a wonderful strike. Ederson swirling ball को भाई he somehow managed to keep it off. लेकिन again, Rodri lucky to be not on a yellow card. Carvajal lucky to be not on a yellow card, at least if not more. Grealish भी मैं बोलता हूँ lucky to be not on a yellow card. Generally speaking, Cruz, he could have been sent off. Yes, Real Madrid fans आप disagree करोगे 100%. In terms of the letter of law, Cruz literally dived. He literally dived. He asked for a penalty. Last weekend में I know different competitions altogether. Maybe मैं चेल्सी को घुसेड़ रहा हूँ, but last weekend में मुझे याद है मोड्रिक मुंह उठा के देखा भी नहीं था. वो एक्सपेक्ट नहीं करता पेनल्टी, लेकिन फिर भी रेफरी ने येलो कार्ड दिया डाइव करने के लिए. यहां तो क्रूज लिटरली देख रहा था.
So he was on the yellow already. So you can argue he could have got a second yellow. You can argue Kamavinga could have got a second yellow. बहुत सारे controversial decisions बोले नहीं जाएंगे. I know that. मैं बोलता हूँ भाई, Almighty Blues FC में हम बोलते हैं बिंदास, क्योंकि जो हम feel करते हैं at the end of the day, it's about expressing your views, what you think. Maybe wrong, maybe right, but it's your view. हम बोलते हैं, आप लोग बोलिए. Kamavinga at some point, I think the second time हो सकता था कि the fact is उनसे जो dive मारा, in my personal opinion, it wasn't a free kick. Looking for a free kick, it is a yellow card offense. Vinicius Junior, even he could have got a yellow card asking for a yellow card. लेकिन Rodri lucky. Rodri definitely lucky. Grealish definitely lucky. Carvajal, Kamavinga, Cruz, Vinicius सबको मिल सकता था. तो रेफरी कहीं ना कहीं बहुत ही लीडेंट था आज के दिन में. But again, did this game deserve a loser? Probably not. First half में more possession City, ज़्यादा lethal attacks Real Madrid. Second half में controlling Real Madrid most of the time, at least first half of the second half में. लेकिन मैन सिटी ने किया ही लास्ट में, राइट? लेकिन अगेन लास्ट फ्यू मिनट्स क्या बढ़िया था. मैन ऑफ द मैच सब लोग बोलिए द एंड ऑफ द गेम. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल अग्री इट प्रॉब्ली विल बी Kamavinga, बट आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट. मतलब मैं फिर भी देना चाहूंगा विनिशियस जूनियर को, जो कुछ अटैक्स थे काफी लीथल थे. इट्स अ ग्रेट मैच. यस, नो प्रॉब्लम ब्रो. एवरीवन, बिग अप टू एवरीवन वाचिंग. अगेन डू नॉट फॉरगेट हिट दैट लाइक बटन. बिल्कुल यार, सेकंड हाफ में वी आर वेटिंग. अगेन याद रखिए, आज रात को एक और मैच है, वो भी बहुत ही बढ़िया रहेगा. वो तो उसमें तो लड़ाई भी होगी मेरे ख्याल से. Referee did all for TRP? Don't know, not sure. Yes, absolutely. Let's like and subscribe. Thanks, Pudin, for reminding. Big up, yeah. Special shout out for people who are there on both my streams today as well as 4 streams yesterday. I would say this draw is an advantage for City. Pep, in my opinion, wanted to draw and has something up his sleeves. He didn't even use a single substitution. That's another strange thing. The happier team is City. Fair enough. That's a point of view for sure. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, जब आपको रियल मैड्रिड के साथ खेलना है, आपको पता है 2 मिनट भी बहुत मुश्किल है. तो 2 मिनट आप अगर बराबरी में हो, रियल मैड्रिड के पास एडवांटेज होगा 1 मिनट बाद में. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग बिकॉज इट्स चैंपियंस लीग, बिकॉज इट्स नॉकआउट. बट यू हैव अ पॉइंट, क्योंकि पेप मे बी वाज अ प्लान और द सब्स्टिट्यूशन प्रूव्ड इट. मे बी वही है ना, ही वाज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस. वहीं पर यू कैन आर्ग्यू दैट रियल मैड्रिड प्लेड मोर सेंसिबली. बट अगेन आई मस्ट लाइक टू से दैट रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं अनलकी भी फील करेगी, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग रेफरी और समथिंग, क्योंकि आई थिंक जनरल सिनेरियो में जब 4-5 काउंटर्स होते हैं रियल मैड्रिड के ऐसे, आई थिंक वी कैन सी 2 गोल्स आउट ऑफ दीस 5 काउंटर्स दैट वी सॉ. तो आज हमने एक ही देखा गोल, और वो भी एक ब्रिलियंट शॉट बाय विनिशियस जूनियर. तो आई थिंक जनरली रियल मैड्रिड मे बी मोर डिसअपॉइंटेड, बट आई वुड स्टिल गो विद रियल मैड्रिड पर्सनली स्पीकिंग. अभी हाँ, बिगिनिंग ऑफ द मैच टाइम में मैं जा रहा था सिटी के साथ, लेकिन नाउ दैट इट्स 1-1, आई थिंक Real Madrid have nothing to lose. They have all to win now. Absolutely. Advantage City, but that was the same last season. Benzema was ineffective, not his day. I think he missed his chances. I don't think he was not in the game or something like that. It's just that Benzema जो 2-3 chances, half chances बोलूंगा, हाँ chances नहीं बोलूंगा, एक वो generally convert कर देता because Benzema वो level का है. Vini and KDB special shout out. I think KDB first half was poor, I must say. Second half, yeah, absolutely brilliant goal. Good result for City. Pep should be happy today. Fair enough. KDB take a bow. What a strike. All to play for the Etihad now. Bilkul, bhai. That Alaba tackle to Haaland inside. Oh, yes. Brilliant. Shout out specially to Ruben Diaz or Alaba, bhai. Brilliant interception and tackles, man. In fact, even Rudiger, bhai, big up. Modric also a bit lackluster today in terms of building from the back. Fair point. लेकिन Modric और Kamavinga के work rate से ही आया था पहला गोल. Rodrigo had little off game, we can say. Well, they didn't attack on the right hand side, which they don't. So I don't think वो fair रहेगा. I think it's still 50-50, no advantage to any team, and Real Madrid does not get phased away from. मैं बोल रहा हूँ 51 to Real, 49 to Man City. ये है मेरा अभी के लिए. आप लोग भी बोलिए. What percentage are you giving to Real Madrid, Man City in terms of percentage? Neeraj Jagre 50-50. Neeraj, I think you're a Manchester United fan, right? If I remember right. But anyway, how could Chelsea let go of Rudiger? मैं हंस रहा हूँ गुस्से में, but you know what I exactly feel. Yes, सब लोग भाई जो भी यहाँ पर है, again much love for everyone to come on. Big shout out to everyone यहाँ पर, especially Vana Buzz, Neeraj, Devesh, Pudin, Ajinkya, Mohammad Sanawaz, Deepak, Indie Footy Guy, Jabbar Bhai, Derain, Messi's Goat, Bhai, I believe Deepak, Abhishek, I give you a shout out, yeah, fair enough, Devesh of course. तो भाई बिग अप सब लोग यार जो भी यहाँ पर है.
Again, remember to hit that like button. अगर आप subscribe नहीं किया हो, consider subscribing to the channel. We are a fan channel for OTC. We bring a lot of content, be it end-to-end top 5 leagues का football as much as possible. Be it World Cup football जो हमने किया ही था, be it any other international football majorly जो हम करते ही है, or a lot of quizzes and other shots as well. 51 to City, 49 to Madrid. Yeah, I exactly agree with this. Again, Wayne Rooney का comment, भाई आपके legend का देवेश कहाँ गया? I know it's just a prediction, but very reactive match from Madrid, as in, well, almost you can say that मैं सोचा था Real Madrid का आएगा second goal, but again, well done to City to score the second goal in the match. What a game, brilliant. Tactically बहुत ही अच्छा लगा. 60-40 Real बोल रहे मोहम्मद शाह नवाज का, इंटरेस्टिंग. एक्सपेक्टेड रिजल्ट, हाँ भाई, मैंने तो 1-1 ही प्रेडिक्ट किया था, बीट यस्टरडे एज वेल एज टुडे. बहुत लोगों ने किया था, जस्ट नॉट मी, बट एनीवे, बिग अप टू एवरीवन. तो भाई आज रात को मिलते हैं वापस से. क्या बोलते हैं सब लोग? लेट्स हिट दैट लाइक बटन और hit that bell notification icon, because we will be live tonight as well, and we might come back with a video before that on the other channel as well. But yes, in case आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो our other channel do consider doing that. वहां पर भी हम बहुत सारा न्यूट्रल कंटेंट करते हैं as well as other sports, not just football. तो please consider subscribing to that as well as us here. ला मेसी बोल रहे सिटी खुश होगी, रियल डोमिनेट सिटी विद 0 subs. Yeah, that's a pep thing यार, that's a pep thing. अगेन मारेज बोल रहा है क्या ही तो करना है यार, मुझे चैंपियंस लीग में मुझे चांस नहीं दे रहा है, क्या है यार ये. और अल्वारेज यार, मतलब जस्ट इमेजिन. एनीवे, आफ्टर मैड्रिड्स अवे परफॉर्मेंस अगेंस्ट लिवरपूल एंड चेल्सी गेम, डोंट यू थिंक इट्स स्टिल 50-50? आई थिंक आई वुड स्टिल गिव मैड्रिड द एडवांटेज. आई थिंक सिटी, कंसिडरिंग उनका फॉर्म, would have expected to create more chances. गोइंग बाई जो चांसेस मैड्रिड ने क्रिएट किए, मुझे अभी भी लगता है सेकंड लेग में सिटी मे नॉट हैव एन आंसर, क्योंकि नेक्स्ट वीक है, एज सून एज दैट. बट हम कवर करेंगे आज, नेक्स्ट वीक भी, एंड ऑलवेज. दैट्स अ गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट. लेकिन वही है, जस्ट टेक्स अ गोल एंड कभी ना कभी रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन इफ रियल मैड्रिड. बट अगेन यार, मच लव फॉर एवरीवन. अगेन ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर टू सी. गुड नाइट अभी के लिए. कंग्रेचुलेशंस टू बोथ द टीम्स कहीं ना कहीं, बट मिलान डार्बी क्विक प्रेडिक्शंस इन द चैट हो जाए. और यस, we will be back on both the channels. Hit that bell, hit that like. Target reach kar di yaar. Bye.